नहीं मिलोट, तो हमें मालूम है बिगर पोजीशन को संपत्ति का करेंगे क्या आप? मिलोट पोजीशन इज विद मी, दैट इज व्हाई मिलोट द फिक्स कोर्ट फीस वाज पेड। चलिए एंड काइंडली सी द रिलीफ ऑफ द प्लेंट मिलोट, दैट इज पेज 16 and 17। ठीक है, वो समझ गए, और क्या करना है बताइए अब? मिलोट आई कैन बेस्ट मिलोट दिस इशू मे बी डिसाइडेड बाय द ट्रायल कोर्ट। वो ठीक है, you will pay the court fees, and if it is decided that only fixed court fees was payable, then you will be entitled to refund of the court fees. I'll not hold anything beyond it. That observation. देखिए, श्री हिमांशु मिश्रा, learned counsel for the petitioner, श्री Vijendra Singh Chaudhary for the respondent. After arguing for some time, Shri Himanshu Mishra prays for withdrawal of this miscellaneous petition with liberty to direct the trial court to frame an issue in regard to payment of ad valorem court fees, subject to petitioner paying the court fees before commencement of the trial in compliance of the impugned order dated 19/12/2022. And if it is found that ad valorem court fees was not payable, then trial court will be free to order for refund of the court fees. With the aforesaid observation, this petition is dismissed as withdrawn. Can it be disposed of? Disposed as withdrawn. Much obliged. My lord, this petition can be disposed of. Lord, this petition can be disposed of in light of the order in Section P12, my lord. It's an identical matter, my lord. क्या है P12? My lord, P12, my lord, petitioner was working as community health officer, my lord. Yes. Thereafter, my lord, they were directed to complete the course, certificate course of community health, my lord, within a period of 2 opportunities, my lord. Yes. That was challenged before this honorable court, and this honorable court has quashed the aforesaid order and directed to continue them in the service. And the meanwhile, they may complete their course. In my case, my lord, I have already completed the aforesaid certificate. It is already on record, which is at Annexure P4, my lord. So I'm only praying, my lord, in light of Annexure P2, this petition can be disposed of. एक मिनट पहले मुझे थोड़ा सा ऑर्डर को तो पढ़ लूं मैं. जी, sorry. P12. ठीक है, पैरिटी पर है. See, contesting party are the respondent number 2 to 4, my lords. The क्या order is करें? passed by respondent कहाँ number जाए 2. उनको ढूंढने के लिए? कहाँ जाए? Mr. Satyam Agarwal appears, my lords. क्या करें? आना चाहिए उनको. नहीं, fresh matter है, my lords. हाँ ठीक है, तो भी इन्हें क्या हुआ? एडवांस कॉपी दी है नहीं दी आइडिया नहीं है मुझे. मिशन डायरेक्टर को दिया आपने एडवांस कॉपी? नहीं दी. सर वेकेशन में लगाया था, नंबर नहीं आया था, तब तक कॉपी दी थी सर. दी थी ना? हाँ सर, बस कॉपी था. दी. इसका statement record करते हैं, sir. Learned counsel for the petitioner submits that petitioner's case is similar to the orders of the coordinate bench dated 16 फरवरी 2023 passed in WP 2608/23, and the said order shall be applicable mutatis mutandis to the facts of the present case. Nobody is appearing for the respondent. बस नाम अपीयर नहीं, नाम रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, डिफॉल्ट्स हैं क्योंकि हाँ, और नाम भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा किसी. for the mission director national health mission those Shri Paritosh Gupta submits that he had supplied advance copy of the petition to Shri Satyam Agarwal Yes, lord. during the winter vacation. In view of such facts, it was incumbent upon Shri Satyam Agarwal to have filed his wakalatnama, so to get his name reflected in the cause list, as nobody is appearing and case is covered with order annexure P12 dated जो भी ऊपर डेट आई है इतना passed by a coordinate bench. This petition is disposed of by mutatis mutandis. चलिए. Obliged. Your Lordship, I am praying that it may be listed along with MP number 6612 of क्या हो 2023. गया उसमें? इन्हीं पार्टीज के बीच की है क्या वो? Yes, Your Lordship. हैं? Yes, Your Lordship. अभय तिवारी. क्या मैटर क्या? 2021 का ऑर्डर है, आप 2023 में चुनौती दे रहे हैं, पहले समझ तो लें. 2022 का ऑर्डर है. जी.
Your Lordship, ग्राउंड पे उन्होंने डिसमिस किया है आपकी एप्लीकेशन विड्रॉ द रेंट एनेक्चर P7 पढ़ें तो जरा Your Lordship, they have dismissed the application on the ground that the civil suit is pending, Your Lordship. civil suit is pending about what? It's permanent injunction, Your Lordship. सिविल सूट में इंजंक्शन ग्रांट हो गया क्या? No, Your तो Lordship. फिर कैसे रिजेक्ट हो जाएगी ये? Your Lordship, Issue they have. notice to the respondents on payment of PF per registered AD post within 7 days, returnable 4 weeks. Oblige. Abhay Tiwari. Oblige, Your Lordship. List along with केस का नंबर बता के जाइए. MP 6612 of 2023, Your Lordship. चलिए. My lord, lordship, I am caveator. That's why I supply copy to. लिखिए. I will Shri return next week. Rajendra Kumar Mishra for the petitioner. Shri Durgesh. Durgesh Pandey for the caveator. Let copy of the writ petition be supplied to Shri Durgesh Pandey during the course of the day. He may file reply within a period of 3 weeks. List thereafter. Lordship, I prefer next week, my lord, because इस उसमें सर एजुकेशन का लिए वहाँ पे 7 लगा. days में कर दीजिए. Reply within 7 days. List thereafter. चलिए. My lord, my lord. Follows the petitioner has filed and challenging annexure P10, जी. whereby the civil judge has allowed the application under section 150 of CPC of respondent and close the right of the petitioner to file WS, my lords. The क्या facts of the case are, my lords. पढ़ते हैं जरा आदेश को. My lords, आदेश में क्या लिखा है पढ़ें तो जरा इसको. uh, that is on page number 71. वकील साहब कंप्यूटर से बहस करिए. इसका पेज नंबर बताइए. Page number 71, annexure P10. मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया कि कंप्यूटर से बहस करिए. आपके सामने सिस्टम लगा हुआ है ना? लगा है नहीं लगा सिस्टम? So they supply the copy of the petition, Lordship. हैं? नहीं सप्लाई नहीं हुई अब. No, Lordship. This is लिखिए. a fresh matter, my lords. अच्छा. श्री All of the matters listed Abhinav on Tiwari. 5 for the evidence. learned counsel for the petitioner. Shri Akshat Tamrakar for the respondent. Let advance copy of the petition be supplied to the respondent number 1, who may seek instructions and file reply. List next week. My lords, may keep this matter for 5th, my lords, because it is कब listed for fix है? 5 on 5th January. It is listed for evidence of the petitioner, my lords. अच्छा लिस्ट और ऐसा करिए. एडवांस कॉपी भी लिस्ट ऑन 5th. चलिए देखेंगे 5th. Oblige. 5th जनवरी. Serial number 20. This second round of litigation, my lord. The first round, my lord, these are the cases, my lord, where the government has taken a decision, my lord, to abolish the post of lab assistant जी and to convert it in the post of, my lord, assistant teacher. जी That earlier writ petition was allowed, my lord, जी. and it was directed that the respondent should grant us benefit from the date, my lord, that is 1/10/1985. जी. Where is that order? My lord. But that order is P3, my lord. P3, my lord, page number 20. जी क्या लिखा है पढ़िएगा. Page number 20, my lord, says the letter issued, my lord, the last 5th line, my lord. एक सेकंड. Lord.
87 की डेट है ये तो, 85 से कैसे मिल जाएगा? इसमें खुद ही लिख रहे हैं कोऑर्डिनेट बेंच लेटर इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट कन्वर्टिंग द पोस्ट ऑफ लैब असिस्टेंट इनटू द असिस्टेंट टीचर फॉर द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन डेटेड 1/10/1987 annexure P9. My lord, we finally come to P4, my lord. We filed in modification, my lord. The date was modified from 1987, my lord, to 1/10/1985. अच्छा ठीक है, आप कब अपॉइंट हुए थे? आप कब अपॉइंट हुए थे? नौकरी में कब आए आप? वकील साहब, आप लोग नौकरी में कब आए? Not before 1985, that अरे issue, कहाँ है भाई, थोड़ा सा बताइएगा तो। that is At the not, time of appointment, petitioners were granted pay scale of इतना इतना, the state government इतना, ये कहाँ है, थोड़ा बताइएगा तो। आपकी नियुक्ति दिनांक तो बताइएगा। my lord, may keep it in the password, or I'll make नहीं, it. पासवर्ड होता नहीं है In वकील साहब the फाइनल। petition, my lord, the dispute is not with regard to my appointment, my lord. अरे We तो- only say, my lord, that earlier this court had directed him to grant, my lord, us benefit from 1987. Subsequently, which it was amended and they were directed to grant us benefit from 1985. They have granted us benefit from 1996, my lord. We filed contempt petition. Contempt petition was disposed of, my lord, granting us liberty to assail this order, my lord, in the necessity. Appointment is, हाँ, which order has been assailed? my lord, this impugned is, my lord, this is P1, my lord. हाँ, पढ़िएगा P1, P1, page number 14. P1 प्लीज पढ़िएगा। It says माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रस्तुत याचिका क्रमांक WP नंबर 9 में पारित आदेश दिनांक 11/11/19 के पालन में सुश्री लीना शर्मा प्रयोगशाला सहायक जिला जबलपुर के पदनाम को परिवर्तित करते हुए उन्हें सहायक शिक्षक विज्ञान के पद पर मान्य किया जाता है। श्रीमती लीना शर्मा को प्रयोगशाला सहायक के पद पर अनुदान हेतु मान्य कर्मचारी के रूप में नियुक्ति दिनांक अथवा 14/6/1996 जो भी पश्चात Petitioner is aggrieved of the order dated 19/7/22 passed by the School Education Department by the Deputy Secretary of the School Education Department granting benefit of conversion of post of lab attendant to the assistant teacher with effect from 1/6/1996 or from the date of her appointment in a aided school as an aided employee, whichever is later. Full stop. Petitioner has not filed any document to show as to when she was appointed and when they were appointed and from which date they were accepted to be the employees of an aided employees of the aided school. Let necessary documents be filed by the petitioner to support this contention. श्री आदित्य वीर सिंह प्रेस फॉर कितने समय में करेंगे दस्तावेज फाइल? 2 days. We'll keep it in the next week. अगर दस्तावेज फाइल नहीं होंगे तो पिटीशन खारिज कर दूंगा। Don't take unrealistic time limits. You are Next week. That is why next week we'll file. praise for and is granted 10 days time to do the needful list after 10 days. My lord, annexure P15 at P? page P15 at page 54 is under challenge. क्या है? The case is like that, my lord. Petitioner 5/8/2020 को on the basis of some complaint has been transferred from Khandwa to Bhopal. He was working as DPM, my lord. So the higher authority, my lord, said that she cannot be transferred from one district to another and said the collector to take decision. When I went to before collector did not allow me to join again. So I came to this High Court and High Court granted stay to me, my lord. And I continued with that stay, my lord. Finally, that petition was allowed, my lord. जी. But Now they have refused to renew your contract. my lord, थोड़ा समय और बता। हाँ. उसके बाद क्या हुआ? रिप्लाई बुलाते हैं ना इसमें इशू नोटिस, रिप्लाई बुलाते हैं स्टेट का, इशू नोटिस टू द रिस्पोंडेंट्स।
on payment of PF per registered AD post within 7 days, returnable 4 weeks. If possible, order may be stayed. नहीं नहीं Oh, bless. इसको शाम In this matter, एक सेकंड प्लीज सर इसको शाम को ये हटाकर इसको सामने रख के देखना, देखते हैं कि गर्दन के लिए ज्यादा अच्छा है क्या ये, क्योंकि ये इतना ऊंचे में झुकना पड़ रहा है। इसको हटाइएगा, इसको सिस्टम को यहाँ लगाइएगा, उसके बाद एक बार देखते हैं कि यहाँ भी गर्दन में बहुत हाँ प्रॉब्लम आ रही, तो क्या प्लेसमेंट सही रहेगा। ठीक है चलिए, हाँ सॉरी प्लीज प्रोसीड। My lord, in this, the respondent number 7 जी is the principal of higher secondary school, my lord. जी Having no authority, my lord, he has given appointment to respondent number 6 जी as government laboratory assistant, my lord. अच्छा। So this petition is to the respondents on payment of PF per registered AD post on a plea taken by learned counsel for the petitioner that respondent number 7 without any authority has given appointment to respondent number 6 as government laboratory assistant. as government laboratory assistant, and therefore respondent number 6 is holding the post without authority. Copy of appointment order is My lord, annexure P2. 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 86 का Let reply be, notice is waived by Shri Rohit Jain for respondent number 1, 2, 3, 4, 5 and 7. 7 Notices be issued to respondent number 6 on payment of PF per registered AD post within 7 days, returnable 4 weeks. Sell. Lordship, I can make a lordship. Huh? I can make a lordship copy now. लीजिए श्री ईश्वर दास वैश्य Lordship, for the petitioner. Lordship, also most humbly submits, my lords, may direct the petitioner to submit a legible copy of the annexures, my lords. The copy which has been supplied is to the Advocate General Office. The copy which has been supplied किस केस में अभी जो इसी केस इसी केस श्री Lordship, हाँ बताइए कॉपी सप्लाई कर देंगे लॉर्डशिप। इसमें इंटरिम रिलीफ जरूरी है क्या लॉर्डशिप। है बताइए, मैटर तो बताइए। लॉर्डशिप, इंचार्ज ऑफ प्रिंसिपल का है लॉर्डशिप केस। लॉर्डशिप, हम हेडमास्टर मिडिल स्कूल हैं लॉर्डशिप, और प्राइवेट रिस्पोंडेंट नंबर 5 जो है उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं लॉर्डशिप। तो इसमें एनेक्जर P4 देखेंगे लॉर्डशिप, पेज नंबर 19। तो ये प्राइवेट रिस्पोंडेंट नंबर 5 के द्वारा आवेदन दिया जाता है कि हम स्कूल में वरिष्ठ हैं, इसके आधार पे हमें प्रिंसिपल का प्रभार दिया जाए लॉर्डशिप। उनके आवेदन के आधार पे ये प्रिंसिपल का प्रभार दिया है लॉर्डशिप इनको। तो लॉर्डशिप, इसमें एनेक्जर P2 देखेंगे लॉर्डशिप, पेज नंबर 17। इसके पहले आदेश हुआ था इन्हीं को, फिर वो आदेश पेज नंबर 18 के माध्यम से। पेज नंबर 18 में क्या कर दिया? पेज नंबर 18 में लॉर्डशिप इसको निरस्त कर दिया, उनका प्रभार, रिस्पोंडेंट नंबर 5 को जो प्रभार दिया था, ऑर्डर नंबर। आपसे सीनियर है कि नहीं है? नहीं है लॉर्डशिप। इसमें लॉर्डशिप, इसमें हाँ एक मिनट रुक जाइए, आप बताइएगा कैसे मालूम पड़ेगा वो आपसे जूनियर है? लॉर्डशिप, ये गवर्नमेंट का 2018 का वो है रूल लॉर्डशिप। लॉर्डशिप, इसको फाइल नहीं किया हूँ। फाइल तो करेंगे ना, तब लिखिएगा। लॉर्डशिप, इसमें काउंसिल फॉर द पिटीशनर। लॉर्डशिप एक रीजन और बता दें लॉर्डशिप, इसमें अभी क्या है, फरवरी में फर्स्ट वीक में एग्जाम है लॉर्डशिप, बोर्ड परीक्षाओं का। क्या फर्क पड़ता है? तो लॉर्डशिप, अगर प्रभार का ये होगा दायित्व लॉर्डशिप, तो इसमें आप पढ़ाई करिएगा, आप इन्विजिलेशन करिएगा, पहले सुपरविजन करते हैं। एक एनेक्जर और देख लें लॉर्डशिप, इसके बाद ऑर्डर करें। एनेक्जर P6 ऑर्डर ही नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ इतना बोल रहे हैं, आप इनको एडवांस कॉपी दीजिए, सुन के 2 दिन बाद डिसाइड करेंगे। लिखिएगा P6 21 नंबर देख लें लॉर्डशिप,
P6 है, हाँ, पेज नंबर 21 क्या लॉर्डशिप। लिखा है? ये लॉर्डशिप प्राइवेट रिस्पोंडेंट नंबर के खिलाफ लॉर्डशिप इंक्वायरी हुई थी और इसमें इन्होंने दोषी पाए गए हैं लॉर्डशिप। ये आरोप में देखेंगे लॉर्डशिप पैरा नंबर 1 में। शराब पीकर स्कूल आते हैं। जी लॉर्डशिप, तो लॉर्डशिप ऐसे व्यक्ति को प्रभार देंगे लॉर्डशिप तो रिजल्ट प्रभावित होगा। इंक्वायरी में क्या हुआ? इंक्वायरी में गिल्टी, ये पेज नंबर 3 देखेंगे लॉर्डशिप, पेज नंबर 22 पैरा नंबर 3। 2 वार्षिक वेतन वृद्धियां। चलिए, इसमें ये दोष सिद्ध पाए गए हैं, जांच की पुष्टि हुई है। अपील कर दी आपने? उसमें वो डिस्पोज हो गया लॉर्डशिप, वहाँ खत्म हो चुका है। हाँ, देख लिया, तब मुझे दूसरे स्कूल में मिला लॉर्डशिप। अभी वेट करिएगा। ईश्वर दास वैश्य लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर। Petitioner's contention is that on the basis of an application moved by the private respondent, he has been given charge of the post of principal high school, headmaster, प्रिंसिपल हाई स्कूल लॉर्डशिप। principal high school, जी लॉर्डशिप। in place of the petitioner, despite the fact that wide order annexure P6, Commissioner Riva Division Riva found certain charges of misconduct proved against the private respondent, which included his attendance in the school under the influence of the alcohol and mistreatment and inappropriate treatment with the students. Full stop. It is submitted that Commissioner Riva Division Riva imposed penalty of stoppage of 2 annual increments without cumulative effect on 12/7/2023. Therefore, during the effect of this penalty, which will be effective for a period of 2 years, no higher responsibility could have been given to the private respondent. Next para, let copy of the petition be supplied to SHRI. आपका शुभ नाम बताइए। ईश्वर दास जी, अरे आपका आरपी सिंह आरपी सिंह, रविंद्र प्रताप सिंह, लॉर्डशिप। for the caveator. Eligible copies of the documents be also supplied to the AG office. In the meanwhile, operation of the impugned order annexure P4 लॉर्डशिप, P4 पेज नंबर 19 लॉर्डशिप। passed by the district education officer Singrauli is shall remain state list in the week commencing 29 जनवरी 2024। मतलब जो इन्होंने कमिश्नर का आदेश बताया लॉर्डशिप, ऑलरेडी वहां से वो होने के बाद फिर मुझे दूसरे स्कूल में ज्वाइन हाँ ठीक है, बहुत अच्छा किया। तो पनिशमेंट का जो अफेक्ट रहता है वो 2 साल रहेगा। 2 इंक्रीमेंट रोके गए हैं। सरकार बताएगी ना कि आप इतने लाडले क्यों हैं। आजकल तो लाडली स्कीम चल रही है, तो आप क्यों इतने लाडले हैं, सरकार बताएगी। Lord, this petition is directed not against an order annexure P7 at page 18 below, by which not some of the post-retirement dues have been withheld on account of pendency of some criminal cases. ये तो 2016 का है ये तो। जी, हाँ, so petition filed with pleadings are complete not. Now what has happened, my lord, this issue has already been decided by the Indore bench whether the post-retirement dues can be withheld on account of pendency of सब criminal cases. ये जो 3 cases का हवाला है सर पेज 18 में, ये तीनों में क्लोजर रिपोर्ट फाइल हो चुकी है। ठीक है, एक्सेप्ट हो गई क्लोजर रिपोर्ट। नहीं, एक्सेप्टेंस तो पड़ी है सर, वो तो बहुत पहले से ही 7-8 साल 10 साल से पड़ी है। फाइनली Then my lord, if your lordship would see, complete petition is Lord- submitted for final hearing। my lord, I am prepared to argue the matter. सर post-retirement dues का मैटर है सर। आज नहीं, अच्छा, तो कोई डेट देते हाँ हाँ बिल्कुल इसको सुनेंगे। लिस्ट फॉर फाइनल हियरिंग इन पार्ट बी ऑफ द कॉज लिस्ट इन द वीक कमेंसिंग 19 फरवरी 2024। चलिए, Praying for 2 weeks time to file rejoinder in this case. Sri Madhur Shukla prays for and is granted 2 weeks time to file rejoinder. List after 2 weeks. number 26.
Your Lordship, this is a review petition. My apology may kindly be considered, my lord, for the non-appearance in the matter when the matter has come for the final hearing, my lord. Because the staff has been changed in the applicant's institute, so my lord, they were not aware. And my senior Not aware of what? aware about the pendency of the matter, my lord, and because this respected. Is it a ground for? No, my lord. I'm just giving the explanation. Your Lordship. Because respected senior Jaswal sir was appearing in this matter, so there was some misunderstanding in between the that office as well as the respondent, my lord. So, my lord, my That is also not a ground for review. my lord, in ground, your lordship. My relief to the extent of only that extent, your lordship. The averments which is mentioned in my return may kindly be taken on order, your lord. नहीं ये सब नहीं होता. My lord, there is two grounds, your lordship. My lord, there are two Please grounds. show me the error apparent on face of record. If a party chooses not to appear before the High Court, then it has to face the consequences. This order is appealable. You may file appeal against this order. But as far as the review is concerned, you'll have to show that what is the error apparent on face of record. My lord, my respectful submission, your lordship, because we will not appear before your lordship, so our averments could not have come before your lordship, my lord. There is 2 points only. कितनी cost के साथ खारिज करनी है आपकी review petition? My lord, my officer is already present before your lordship. तो क्या कर सकते हैं officer? What I'll do with the officer? What I'll do with the officer? Cost is to be imposed on the company, not on the officer. अगर खुद आप इतने लापरवाह हैं, अपने प्रकरण को 2009 की पिटीशन थी और ये आपका लेवल ऑफ कमिटमेंट है, क्या है, कौन सा प्रेसिडेंट बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूनिट सतना सीमेंट. There's 2 units, your lordship. हाँ, तो आपके कमिटमेंट के लिखिएगा. These review petitions have been filed. My humble submission, my cost may kindly be not imposed. ठीक है, तो इसको dismiss कर दे रहे हैं एक लाइन में. These review petitions have been filed being aggrieved of order dated 6th November 2023, passed in WP 9098 of 2009 and WP 9099 of 2009 only on the ground that due to absence of the counsel for the review petitioner, certain facts could not be brought on record. Full stop. Next para. It is submitted that there was miscommunication between the senior counsel SHRI ML Jaiswal and the company executive. Therefore, parties were not represented before the court. But looking to the fact that none of these grounds are the grounds to show error apparent on face of record to make out a case for review petitions deserves to be dismissed and are hereby dismissed. It will not be inappropriate to observe that Messrs. Birla Corporation Limited has invoked the review jurisdiction without understanding the provisions contained in Order 47 Rule 1 CPC and has wasted precious time of the court. चलिए, ये ऑब्जर्वेशन आपके साथ रहेगा कॉस्ट की जगह. जी. I highly appreciate. उसमें एक लाइन और डाल लीजिएगा. This submission that Shri ML Jaiswal could not be instructed is also inappropriate in as much as there is no permanent engagement of a senior counsel and he is to be instructed on case to case and date to date basis. चलिए. Well, I'm making a prayer for withdrawal of this petition with liberty to revive necessity arise. Praise for withdrawal of this petition with liberty to file afresh if necessity arises, Maharaj. To file a fresh petition as and when fresh cause of action arises. Petition is dismissed as withdrawn. The respondent department malad on the publish the post of sub-inspector or departmental malad department malad on the age of limit malad 53 years malad और 1/1/2024 malad. किस प्रावधान में हम इसको इंटरफेयर कर सकते हैं, थोड़ा बताइएगा.
On the similar writ petition, P7 page 40 of the interim on the interim order passed by the Gwalior bench, this case similar nature, my lord. Page 13. क्या है interim order पढ़िएगा? Yes, sir. Parrot. Present petition prepared by the petition who are the constable in the excise department taking exception to the action of the inaction of the respondent, whereby they have conduct limited departmental examination and have been denied the petitioner to participate become a participant on the age limit. It is submitted of the learned counsel for the petitioner that the petitioner are excise constable and they are around 57 years of the age of present. A limit of department examination is likely to be condoned in January 2024. The relevant Condoned or conducted? आपने कंडोन्ड पढ़ा, कंडोन्ड है कि कंडक्टेड है? पढ़ा, दोबारा पढ़िएगा उसको। कंडक्टेड है हमारा, सॉरी। फिर कंडोन्ड क्यों पढ़ रहे हैं? नहीं सॉरी, वो चश्मा था तो चश्मा बदलवा लीजिए, उसके बाद सुन लेंगे इस केस को। नहीं कब चश्मा बदल जाएगा बताइए? शाम को ढाई बदल जाएगा। तो शाम को तो नहीं सुन पाएंगे फिर? शुगर के कारण प्रॉब्लम थोड़ा हो गई। अच्छा जी, पढ़िए, आगे बढ़िए। Class 3 Executive Recruitment Rules 1982 prescribe appearance in the examination till the candidate attains the age of 45 years. Here, a petitioner crosses the age limit of the 45 years, and meanwhile, since 2008 to 2013, no limit departmental examination was held. Therefore, they did not have a chance to participate and to emulate for better extending in professional because of the impugned action. Respondent intend to extend the age limit of 8 years for 8 years, meaning thereby the person who are up to 53 years of age, 45 year, 8 years can participate in the fairly. Appearance in the arbitrary learned counsel for the petitioner prepare the order dated 7/11/2023 passed in read petition number 27/279 of 2023 by learned division bench of this court. I have my serious difference of opinion with this order. I'll refer this matter to, I'll issue notice, call for the reply. I have my serious difference of opinion with this matter. My exam में भी कंडक्ट मतलब नहीं पार्टी पे मतलब इंट्रीम ऑर्डर का एग्जाम में भी इंट्रीम ऑर्डर नहीं फॉर्म में भी सबमिट ऑफ द रिस्पोंडेंट कुछ नहीं 5 साल इम्तिहान नहीं हुए। 2008 से 2013 उन्होंने 8 साल का एज रिलैक्सेशन ऑलरेडी दे दिया। इसका मतलब ये हुआ कि 13 के बाद तो इम्तिहान हुए, 13 के बाद आप अगर एलिजिबल थे तो बैठे भी होंगे। नहीं उसका एग्जाम नहीं हुआ, मतलब एग्जाम तो इसमें ऑर्डर में लिखा है 2008 से 13 नहीं हुए, 8 से 13 नहीं हुए। इसका भी ये उसके बाद कब हुए एग्जाम? अभी नहीं हुए, मतलब अभी 13 के बाद आज तक नहीं हुआ एग्जाम। ऐसा कहाँ लिखा आपने पिटीशन में, बताइएगा। और इस ऑर्डर में तो नहीं लिखा है अभी तक कोई एग्जाम नहीं हुआ। नहीं भाई, ऐसा नहीं हो, हम ऑर्डर नहीं कर पाएंगे ऐसा। दिस कोर्ट ऐसा मत लिखिए। इशू नोटिस टू द रिस्पोंडेंट्स ऑन पेमेंट ऑफ पीएफ बाय रजिस्टर्ड एडी पोस्ट, issue notice to the respondent. Notice is waived by Shri Saurabh Soni to seek instructions as to whether the order passed by a coordinate bench at Gwalior dated 19/12/2023 has been put to test before the division bench or not. This case on, आप instructions ले लीजिए। श्री सोनी में seek instructions. List this case on 9 जनवरी 2024। इस तरीके से थोड़ा होता है, कोर्ट थोड़ा चलाती है। आपको कहीं प्लीडिंग नहीं आपकी कि 13 के बाद कभी एग्जाम नहीं हुए। इस ऑर्डर में भी नहीं लिखा है 13 के बाद इम्तिहान नहीं हुए। Shri Saurabh Soni will also bring on record as to when exams were conducted after 2013 for the purpose of promotion of excise constables to the higher post. Chali. My lord, this is the petition for release of retirement dues, my lord. This petitioner was retired on 30th September 2007, against whom a PC Act criminal case was lodged in the year 2002, and he was retired in the year 2002. And during the
एक्ट के केस में क्या हुआ आपका? एक्यूटल हो गया क्या? 21/10/2022 को ही हैज बीन कन्विक्टेड माय लॉर्ड एंड कन्विक्ट हो गए ना? हाँ, अपील इज बताइएगा पेंशन का क्या प्रावधान है पेंशन रूल्स में? पेंशन इज सब्जेक्ट टू द गुड कंडक्ट। जी माय लॉर्ड जवाब अगर आ गया इसमें? जी यस सर। देयर रिप्लाई may kindly be seen para 2. In February 16 they have stated that 90% pension and gratuity has पेंशन been मिलती है रूल 64 में। सर उन्हें रिप्लाई जो फाइल किया था आई वांट टू शो दैट। और बताइए किस तारीख का रिप्लाई है? ये है सर 16/2/2000। आइए नंबर बताइएगा वकील साहब। सर ये 2633/16 2633/16 ये हमारे इसमें नहीं है भैया रिप्लाई। 23/2/2016 लिखिएगा श्री Vijay Kumar Shukla for the petitioner, Shri Saurabh Soni for the respondent. The petitioner is placing reliance on reply filed by the state on 16 फरवरी 2016 पर 16 फरवरी 2016 by the IA number but IA my lord 2633/2016 2633/2016. Scanned copy of the same is not reflected in the index. In that reply they registrar to take action against the delinquent for not scanning the copy and uploading the same. आप देख लीजिए एक बार, नहीं तो फिर आप बाद में बोलते हैं। आइए नंबर स्कैन हुआ है कि नहीं हुआ है? इसमें इनका रिप्लाई था सर कि 90% ग्रेच्युटी और पेंशन हमने दे दिया है, लेकिन आज तक दैट अमाउंट हैज नॉट बीन पेड। यहाँ देख लेना on the physical file, though seal of scan is available, but same is not available on the computer. देखिए आके देख लीजिए फिर। कहाँ है ये आईए नंबर 16? हम तो 16 की आईए की बात कर रहे हैं, है क्या? नहीं है ना? Thus, there is an attempt to mislead the court. Seal of scan is available on the physical file, but scanned document is not available. Let disciplinary action be taken against the delinquents and intimation be given to the court for wasting time of the court and for making a false and putting a false seal of a scanned document, despite the fact that no scanning has taken place, as is evident from the system. List next week with the report of the concerned registrar. Meantime, my lord, they be also directed to take their response regarding this amendment. They have said that 90%. पहले इतना दस्तावेज देख लें फिर सुनेंगे। My lord, this is second time litigation. For appointment of the petitioner on the post of Pune, my lord. On the post of Pune, my lord. जी। So, my lord, in what year 2006, my lord. जी। At page P2, my lord. The advertisement was published. Annexure P2, my lord. जी। Page 14, my lord. इसमें स्पेशल ड्राइव के अंतर्गत my lord सीरियल नंबर 2 विभाग का नाम जो है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रीवा, वृत्ति की पोस्ट के लिए 6 SC, 6 ST और 6 OBC पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुआ था मिलॉर्ड। इसके बाद इसमें इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया मिलॉर्ड जी। पिटिशनर के अलावा इसमें टोटल 50 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था जी। इसमें से अल्टीमेटली 5 लोगों का इन्होंने सिलेक्शन किया मिलॉर्ड जी, जो पेज 20 पे है मिलॉर्ड। पेज 20 नहीं, कंप्यूटर से एनेक्चर बताइए, पेज नंबर सही बताइए वकील साहब। मैं आई एम रिपीटिंग इट, नेक्स्ट वीक से जो कंप्यूटर से डॉक्यूमेंट्स नहीं रिफर करेगा मैं उसका केस नहीं सुनूंगा, उसका बढ़ा दूंगा मैं केस। आप लोग जाकर चीफ साहब को शिकायत कर दीजिएगा, मैं नहीं सुनूंगा केस। आप लोग सीख लीजिए, अभी भी है। अगले मंडे से आई विल नॉट हियर एनी केस वेयर आई एम नॉट गेटिंग असिस्टेंस थ्रू द सिस्टम, बिकॉज इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। हमसे एक्सपेक्टेशन तो है कि हम जो है 150 केस करें, आपकी असिस्टेंस 0 रहेगी। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू मी।
I'll simply adjourn those cases for 6 weeks, 8 weeks. कंप्यूटर से बताइए पेज नंबर और एनेक्शर नंबर. आज समझाइश दे रहा हूं, मंडे से समझाइश नहीं दूंगा, मंडे से सिंपली एडजॉर्न कर दिया करूंगा केस को. ये लिख के दैट काउंसिल इज नॉट टेक्निकली अपडेटेड टू सपोर्ट टू असेस द कोर्ट, केस इज एडजॉर्न. इतना ऑर्डर करके केस बढ़ा दिया करूंगा. आप कुछ पेज नंबर बताएं, यहाँ कुछ और पेज नंबर मैं ढूंढते रहूं, ये मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है. आई एम सॉरी मिलॉर्ड. कौन सा एनेक्शर नंबर बता रहे हैं आप? एनेक्शन नंबर है P4 मिलॉर्ड. हाँ P4 बताइए क्या है उसमें. ये P4 जो है मिलॉर्ड, वो उसमें टोटल कहाँ है आपका नाम इसमें? इसमें मेरा नाम है लॉर्डशिप, पेज नंबर 19 पे टॉप में लिखा हुआ है 28/1 राजेंद्र कुमार विश्वकर्मा मिलॉर्ड. टोटल 50 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था मिलॉर्ड. जी जी. अल्टीमेटली मिलॉर्ड पेज 20 पे इन्होंने 5 लोगों को सिलेक्ट किया मिलॉर्ड. जी. मेरा नाम इन्होंने वेटिंग लिस्ट सूची में रखा, सीरियल नंबर 1 पर. जी जी. क्योंकि एडवर्टीजमेंट 6 पोस्ट के लिए पब्लिश हुआ था मिलॉर्ड. जी. तो हमने लॉ क्या है इस बारे में मिलॉर्ड? लॉ क्या है? नहीं लॉ तो है मिलॉर्ड, इसमें कि वो दे कैन फिल द पोस्ट एज पर देयर रिक्वायरमेंट. यस मिलॉर्ड. किस पोस्ट के लिए, किस विभाग का बता रहे हैं आप? ये स्वास्थ्य डिपार्टमेंट का मिलॉर्ड. चिकित्सा एवं किस नंबर पे है? चिकित्सा एवं कौन सा अधिकारी? ये है 2 नंबर पे मिलॉर्ड. 2 नंबर पे ही है ना? हाँ. P2 में. P2 में मिलॉर्ड. हाँ. इसमें क्या है? माली लैब टेक्नीशियन. लैब टेक्नीशियन नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे है भृत्य. क्यों? एक सेकंड रुक जाइएगा प्लीज. भृत्य. जी. तो भृत्य की श्रेणी 4. इसमें कहाँ है 6 पोस्टें? इसमें ऊपर से अज्जा नंबर कॉलम नंबर 6 में देखे मिलॉर्ड. जो हाँ खाली है वो तो कॉलम नंबर 6 भृत्य में. कॉलम नंबर 7 खाली है. कॉलम नंबर 8 अन्य पिछड़ा वर्ग का 1 दृष्टि बाधित विकलांग, कुल योग 1, कक्षा 5वीं उत्तीर्ण. नहीं भृत्य के लिए जो है मिलॉर्ड, भृत्य का ही तो पढ़ रहा है. 18 है टोटल पोस्ट मिलॉर्ड. इसमें कहाँ पढ़ रहे हैं, हम गलत देख रहे होंगे. एनेक्जर अच्छा भृत्य में चलिए 6. यस मिलॉर्ड. हाँ 18. टोटल 18. उसमें से 3 महिला. 3 महिला मिलॉर्ड. हाँ. एक पोस्ट सभी के लिए. हाँ. अब इन्होंने 5 लोगों का सिलेक्शन किया मिलॉर्ड. जी. हमें वेटिंग लिस्ट में रखा. हाँ ठीक है. हमने एप्लीकेशन मूव किया. जी. उसमें कोई एक्शन नहीं हुआ मिलॉर्ड. जी. तो हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल किया. जी. एनेक्जर P9 में ऑर्डर हुआ मिलॉर्ड. जी. कि इनका रिप्रेजेंटेशन जो कलेक्टर का ऑर्डर है उसके साथ जो है डिसाइड करें. जी. एनेक्जर P1 में इन्होंने सूचित किया मिलॉर्ड हमें जी. कि केवल 5 पोस्ट थी और 5 पोस्ट में भर्ती कर लिया गया है. सबको अपॉइंटमेंट ऑर्डर इशू हो गया है, वो अपने अपने पद पे ज्वाइन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं मिलॉर्ड. एनेक्शर P1 मिलॉर्ड. P1 से जी. फिर उसके बाद क्या बचा? उसके बाद मिलॉर्ड हमने फिर से रिपिटीशन फाइल किया. इसी बीच हमने एक कंप्लेन फाइल किया था कमिश्नर के यहाँ मिलॉर्ड. उसमें एक 3 मेंबर की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई. आप पिछड़ा वर्ग को बिलोंग करते हैं? यस मिलॉर्ड. जी. और उस कमेटी ने ये अपनी रिपोर्ट पेश किया मिलॉर्ड. इसमें कहा गया है कि हमारा अपॉइंटमेंट होना चाहिए था. कहाँ है वो रिपोर्ट? वो रिपोर्ट हमने आईए के साथ भी फाइल किया हुआ है मिलॉर्ड. आईए नंबर है हमारी 15/543/2023 और रिप्लाई में भी स्टेट ने फाइल किया हुआ है मिलॉर्ड. ठीक है. क्या लिखा उस रिपोर्ट में बताइएगा. उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है मिलॉर्ड, पूरी रिपोर्ट जो हमने फाइल किया वो D2 है मिलॉर्ड. इसका ऑपरेटिव पार्ट पेज 8 पे है. जी पढ़ते हैं पेज 8 पर. निष्कर्षता उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि आलोच प्रकरण में मेरिट सूची के क्रमांक 5 पर चयनित अभ्यर्थी सविता पटेल पूर्व प्राप्तांक इतने के स्थान पर परीक्षा सूची के क्रमांक 1 पर वर्णित अभ्यर्थी राजेंद्र कुमार विश्वकर्मा से लिख रहे हैं ये. जी मिलॉर्ड. किस कारण से लिख रहे हैं? ये इन्होंने पूरा स्क्रूटनी किया था मिलॉर्ड. हाँ क्या लिखा? कमेटी ने कितने मार्क्स थे इनके सविता पटेल के? इनके 78.50 मिलॉर्ड. जी. और हमारे 81.65 थे. जी. तो एक पद तो महिला से भरना था ना? नहीं और उसका डिटेल इन्होंने दिया हुआ वो ऑलरेडी भरा जा चुका है मिलॉर्ड. अच्छा. इसकी रिपोर्ट में देखें मिलॉर्ड जो पेज 7 है मिलॉर्ड. हाँ हाँ ठीक है. अन्नू पटेल ऑलरेडी भरा जा चुका है. यस मिलॉर्ड. यस. इसी में बताइएगा. ये समझ गए आपकी बात. ठीक है. How can a less meritorious person be given appointment? Yes, Lord. We have issued the show cause notice to the selected candidate also, and we have
constituted the committee and sent the report to the my lord. So you remove her and issue appointment order in his favor from that date. Yes, my lord. The inquiry is pending, my lord. When will you conclude the inquiry? My lords, my lords. Petitioner's case is that an advertisement was issued for appointment on the post of peon as contained in Annexure P2 on 30/12/2006 by the Office of Collector Rewa. In the Office of Chief Medical and Health Officer Rewa, 6 posts of peon were shown vacant in the advertisement for OBC category. Out of these 6 posts, 1 was to be filled from amongst the women. Full stop. Person who was less meritorious than the petitioner, namely Srimati Savita, was given appointment and petitioner was kept in the waiting list. Full stop. Petitioner thereafter filed an application under Order 7 Rule 14 CPC, which was registered as IA number 15543/23. Full stop. Along with this application, he has produced a copy of inquiry report, which was conducted by a team of 3 persons, namely Shri A.K. Jha, Joint Collector, Shri R.D. Chaurasia, Treasury Officer, and Shri Anil Kumar Dubey, Deputy Director, Employment, wherein it is mentioned that since Savita Patel secured only 78.50 marks against 81.65 secured by the petitioner, and therefore petitioner being more meritorious than Savita Patel, he should have been given appointment in as much as reservation for women is horizontal and not vertical. Next para. It is petitioner's case that despite this report annexure D2 dated, इसकी date क्या है? 4/4/2023. 4/4/2023. No action has been taken by the respondents. My lords, we have taken now. My lords, में kindly see annexure. अपॉइंटमेंट ऑर्डर दे दिया आपने? अपॉइंटमेंट ऑर्डर नहीं दिया, लेकिन हमने ये जो रिपोर्ट है ये सीएमओ एचओ को भेजी, उनका इंस्ट्रक्शंस आना बाकी है कि उसमें उनके इंस्ट्रक्शंस क्या आने हैं? सीएमएचओ को कल बुलवा लीजिए यहाँ पर. देखिएगा श्री Saurabh Soni submits that this report was forwarded to CMHO, but no action has been taken by CMHO. His instructions are awaited. It is surprising that the report, which was filed by a committee of 3 members constituted by the additional collector, Rewa, as per the orders of the collector, is being kept pending by the CMHO and no action has been taken by him. Full stop. In view of such facts, let CMHO Rewa remain personally present to answer queries of this court. List this case on 5 January 2024, top of the list. वो तो CMHO ने तो गलत किया ही है. He will keep the matter hanging. And you are so incompetent that you are not taking any action against him. Let affidavit of the collector be also filed, Collector Rewa be also filed, that once report was received from the inquiry committee, then why he has failed to take action and why action be not taken against him for his deliberate support to the CMHO. File कर दीजिएगा ये affidavit कल तक. Let this affidavit be filed by tomorrow. Okay. Serial number 31, Your Lordship. The state level D record of the petitioner is available. So I'm ready for that. But this case will go before some other bench. As Your Lordships. List this case before bench in which मेरा नाम डाल दीजिए. He was my client at one point of time. ये veterinary department वाले हैं ना? Yes. जी. List next week कर दीजिए.
In these matters, Your Lordship, we have to adopt return and serial number 32.4 and 32.5. ठीक है, वो अडॉप्ट कर लीजिए। बताइए, मेरिट्स पर बताइए क्या मैटर है। Lord, I am appearing in item number 32.1. हाँ, Lord, this is a case, my lord, in which we have challenged the order dated 18/4/2017, that is annexure, my lord, P8. सब सिमिलर मैटर्स हैं। सब similar. All are similar matters. जी। Actually, these matters, my lord, relates to the reduction of the salary of the panchayat secretary. Reduction of salary of Panchayat secretary. In fact, my lord, by order impugned, the state government has directed जी that the counting of the panchayat secretary, service of the panchayat secretary has to be done from 2008, whereas the petitioners were appointed much before, my lord, in 99, 97, 96, 2000, or, and they have been confirmed, my lord, all the benefits by the state government. But here the question, my lord, which would be involved in this case is ki the difference between, my lord, the panchayat karmi and panchayat secretary. जी This is the in the core of the my lord petition. This issue would be there, my lord, because we say that when we appointed at panchayat karmi and we were given appointed as the panchayat secretary. जी So my services has to be counted from my initial appointment when we were appointed as panchayat secretary. Whereas the state says that initially you were appointed the panchayat karmi and you were only conferred the power of the panchayat secretary. So we will not consider you as panchayat. In fact, if this analogy would be there, my lord, we were never appointed as panchayat secretary then. So this is the. Where is the impugned order? To argue in this case. Where is the impugned order? 63, 64. Annexure बताएंगे? Yes, my lord. Annexure P9, my lord, 65, page number 65. कंप्यूटर से बहस चालू करिए। My lord, I will start learning. I'm sorry, Your Lordship, I am not prepared on merits today. लिखिएगा श्री Bhupesh Tiwari, my lord, in item number 32.1. सबके नाम लिख पर्ची पे लिख के दे दीजिएगा, सबके नाम डाल दीजिएगा फॉर द पिटीशन। अपना ही नाम लिख के दीजिएगा यादव जी। सर पिछली बार आपने अपने सीनियर का नाम लिख के दे दिया था। ठीक है। श्री अमित शर्मा, learned government advocate, submits that he is not ready with the matter. On his request, list this case on 10 जनवरी 2024. My lord, I had to continue. I had to continue. Obliged. On last date of hearing, the private respondent took time a lot to file reply. That respond number 3, sorry, respond number 3 took time to file reply. That is the mission. Your Lordship, नहीं आया है। नहीं है, बाकी स्टेट का आ गया है, इनका नहीं है। sir, we are adopting the reply filed by the state. अच्छा ठीक। The matter Shri but Praveen Dubey for the petitioner. Shri Amitabh Sharma, learned counsel for the state. आपका शुभ नाम बताइए। Amrit Kaur. हैं? Amrit Kaur. Miss Amrit Kaur for the respondent number 3. हैं? 3. 3. Amrit said she is adopting reply of the state. In view of such facts, pleadings are already. आपको कोई rejoinder वगैरह तो नहीं? नहीं sir, file. Pleadings are already complete. List for hearing in the week commencing 29 जनवरी 2024. File your Lordship.
My lord, in this case, I have got an instruction in the morning that ad hoc services of petitioner for the purpose of pensionary benefits. Respondents are positively considering to add those services, my lord. There are some orders also in passed in the month of November that I have to brought on record because there are dispute of 5 years which were not added. इनका लिख देते हैं that they are considering it, let consideration be bestowed within. And if any claim remains that my lord, then you will be free to approach the court. Yes, lord. Shri Swapnil Sogara, learned counsel for the petitioner. Shri Amit Sharma, learned government advocate for state. Petitioner's contention is that his claim for counting of ad hoc services for the purpose of computation of qualifying service is under active consideration of the state government. He is hopeful of a positive outcome. Full stop. He prays for withdrawal of this petition with the direction to the state to take a call and decide petitioner's claim within a prescribed period. Full stop. 2 months. सुन तो लीजिए. Accordingly, this petition is disposed of with the direction to the state to consider and decide petitioner's claims within a period of 60 days from the date of receipt of certified copy, and thereafter, if any claims remains unattended, then petitioner will be at liberty to file a fresh petition. Obliged. Period number 35. In this case, notices were issued. We have to file reply, your lordship. देखिएगा, श्री अतुल चौधरी for the petitioner. 18 से जवाब फाइल नहीं किया आपने? Your lordship, जी. नोटिस कब इशू हुए थे? notices issued on 10/8/18. State council prays for time to file reply. उसके बाद एक्चुअली लगा ही नहीं 21/3/2018 के बाद 4/11/22 को भी तो लगा था. जी. Full stop. Looking to the fact that a state has failed to file reply, though notices were issued more than 5 years back, subject to payment of cost of rupees 5,000 to be recovered from the erring official. If OIC was not appointed, then from the respondent number 2, and if OIC was appointed, then from the OIC. 4 weeks' time is granted to file reply. Obliged. Cost will not be debited to the public exchequer and will be deposited in High Court Legal Services Committee. Your lordship. My lord, last opportunity was granted to the Council of State of Chhattisgarh to file reply, my lord. जी, आ गया reply आपका? ये 5/9/23 को. इसमें हमारा जवाब तो अभी नहीं आया सर. सर ठीक है, 10,000 की कॉस्ट दीजिएगा. आप तो रिच स्टेट हैं. देखिएगा, श्री नित्यानंद मिश्रा, लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर. Despite last opportunity granted to learned counsel for these respond number 3 and 4, no reply is filed till date. Full stop. Petition is pending since 2018. Subject to payment of cost of rupees 10,000 to be deposited in the High Court Legal Services Committee. Because 4 weeks time is granted to file reply. Failing file my return on time, but this is due to failing which respondent number state ने कर दिया. 3 shall remain personally present before this court. List this case on 20 February 2024. If the return is not filed, Definitely written. Failing which ही तो लिखा है. मैं सुना नहीं. कॉस्ट के साथ जवाब फाइल होगा, और जवाब फाइल नहीं होगा तो रिस्पॉन्ड नंबर 3 उपस्थित रहेंगे. ठीक. The matter is related to compassionate appointment, my lord. So the state claimed that they have filed the reply in the year 2018, my lord. जी. But I was not able to find it in the system, my lord. देखिए कहाँ है आपका रिप्लाई? देखिएगा. We filed in the way back in year 2018. इसमें तो स्कैन कॉपी नहीं पड़ी है. In fact, last time पे कोर्ट की फाइल में भी नहीं था. 14/1/2022 का ऑर्डर. जवाब है. The IAS number is 12828. ऊपर फर्स्ट पेज देखिए इसका. लिखिए. No return as claimed by learned panel lawyer for state. What is the reply? आज सुनिए तो आप. श्री तिवारी,
is available on the system, though in the physical file, seal of scanned is affixed. Full stop. It prima facie appears that seal has been affixed without verifying the scanning of the documents. Registry is directed to take disciplinary action against the delinquent. As admittedly, देख लीजिए, आप भी देख लीजिए, है जवाब कोई loaded. As no reply is loaded on the system. Let reply be loaded. Action taken, report against the delinquent be produced before the court. After giving an opportunity of hearing, list this case in the week commencing 29 January 2024. आपको कॉपी मिली है नहीं मिली है उसमें जवाब की? आपकी कॉपी हमारे पास फिजिकल में अवेलेबल है। उसमें मतलब हमको 13 लोगों को कॉपी में मेरा नाम आ गया स्टैंडिंग काउंसिल होने की वजह से। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए। Because I appeared, मतलब because मैंने हाँ ठीक है, तो लास्ट अपॉर्चुनिटी दी थी ना कोऑर्डिनेट बेंच ने आपको। My lord, return is awaited, man. For the petitioner, Shri Tiwari, learned panel lawyer for the state. Reply of the state is awaited. Notices were issued on 14/9/2018. Though more than 5 years' time has elapsed, no reply is filed. Subject to payment of cost of ₹5,000 to be recovered from the erring official. List after 4 weeks. The recovery का मैटर लॉर्डशिप, the recovery has been ordered. Reply आ गया? हाँ, आ गया। उसमें सिर्फ यही ऑब्जेक्शन है कि there was the undertaking by the petitioner. अच्छा, where is that undertaking? Let us see that undertaking. Return के साथ फाइल की रिटर्न के साथ पेश किया। Copy of indemnity bond. देखिए आइडेंटिकल ऑर्डर है। कहाँ है वो indemnity bond? That is on page 7 of the reply, my lord, R1. क्या लिखा है इसमें? किस तारीख का भरा हुआ है? My lord, that is year of 2019, my lord. 2019. खाली blank indemnity bond. The name has been written Vishram Singh Mark. हाँ, और कब से कब तक के पे के एरियर्स बनाए हैं आपने? As per the from the year 96. 96 to? My lord, 2018, my lord. अच्छा, तो उसके लिए सब्सिक्वेंट इंडेमनिटी बॉन्ड कैसे काम करेगा? That was taken on the retirement. नहीं, तो आप कुछ भी ले लेंगे, लिखिएगा। This petition is filed being aggrieved of order of recovery passed by the respondent, Superintendent of Police Mandla, as contained in Annexure P2, seeking to recover a sum of rupees 3,26,704.55 towards the principal amount, along with interest of rupees 35,937.50, totaling rupees 3,62,642.05. By order dated 31/3/2018, in the light of the law laid down by Supreme Court in Thomas Daniel versus State of Kerala and others, 2022 live law within bracket SC 4 bracket close 438. Next para. Shri Tiwari, learned panel lawyer, in his turn submits they have filed a return, and along with the return they have filed copy of indemnity bond annexure R1
which is dated 2/11/2019. This indemnity bond was taken at the time of retirement. Full stop. Next para. It is thus submitted that since petitioner had given indemnity bond, recovery is permissible. Next para. It has come on record that petitioner attained age of superannuation from a class 3 post, that is ASI. Full stop. It is not the case of the respondents that excess amount was paid on account of any misrepresentation or fraud of the petitioner. Full stop. Subsequent indemnity after passing of the recovery order as contained in Annexure P2 is of no avail. Full stop. The ratio of law is a law laid down by Supreme Court in Thomas Daniel Supra is that even if excess payment was made by the employer by applying a wrong principle for calculating the pay/allowance or on the basis of a particular interpretation of rule/order, which is subsequently found to be erroneous, such excess payment of emoluments or allowances are not recoverable. Full stop. In view of such facts, subsequent indemnity will be of no assistance to the state. Full stop. Applying ratio of the law laid down by Supreme Court in Thomas Daniel, impugned order of recovery is hereby quashed. Next, it is directed that if any amount is already recovered from the petitioner, then same be refunded to the petitioner along with 8% interest thereon from the date of the recovery till the date of payment. In above terms, petition is allowed and disposed of. Serial number 40, Sanjay Kumar Agarwal, State. This matter, my lord, private respondent has filed its reply, but state's reply is awaited. State को reply नहीं file करना है. जी. There is a stay also. वो तो ठीक है. आप reply file नहीं किया, इसलिए stay है. By way of last indulgence, 4 weeks time is granted to file reply list after 4 weeks. My lord, IR may be continued. In the week commencing 5 February 2024, IR to continue. It is made clear that if reply is not filed on before the next date, then respondent number 2 and 3 shall remain personally present before the court to answer queries of this court. I am appearing, we have the respondent number 6. ठीक है, लिख के दे दीजिएगा, नाम डाल दीजिए. Serial number 41, They have not filed the reply to an application for vacating of stay is there, my lord. Reply नहीं फाइल करना है आपको. Not, this is an order of tribunal. अच्छा ठीक है, तुम बताइए, मेरिट्स पे बताइए क्या है. मतलब what had happened, my lord? That the respondent, the late respondent, my lord, employee was retired with effect from 31st of January 2005, my lord. Before that, my lord, an audit report, an audit objection was there in the year 2003-2004 that he has defalcated certain amount of money to the tune of 1,77,000. So at the time of retirement, my lord, the retired dues were paid minus 1,77,000. 3,63,000 because there were recoveries under two accounts, my lord. 1,77,000 and 1,74,000. 1,74,000 किसकी थी? My lord, 1,74,000 was, my lord, that was challenged by him, my lord. अरे वकील साहब, आपसे ये पूछ रहे हैं किस अकाउंट पर थी वो? जैसे 177 डिफॉल्केशन की थी, ये क्या था? What had happened, my lord? What had happened नहीं पढ़ के आए कि नहीं आए? पढ़ के तो आए हैं. हाँ. लेकिन ये जो दूसरा 1,74,000 है, अनेक्शर P1 में पेज 28. फिर
an inquiry was initiated, my lord, and a charge sheet was issued to him. Thereafter, he challenged that punishment order of recovery to the tune of 1,74,000 before the joint registrar, my lord. That was set aside. जी, on what ground? My lord, we did not challenge that order, my lord. अच्छा, That फिर? was affirmed. जी, But at the time of retirement, that recovery was also taken into account, my lord. फिर क्या बचा क्या इसमें? आप खुद ही समझ रहे हैं. 1,77,000 का तो बच्चा, that audit report which was there तो आपने against him. आपने And इंक्वायरी he did not challenge that audit report. अच्छा, तो आपने टोटल 3,00,000 कुछ हजार की रिकवरी 3,63,000 63,000 की, 1,74,000 की तो सेटिस्फाइड ऑडिट हो गई. रिपोर्ट था. 177 था ऑडिट रिपोर्ट, डिफाल्केशन का अमाउंट. 177 था हमको. हाँ. 177 था. केस आपका है, समझना हमें पड़ रहा है. 177 था जी. और 174 था चार्जशीट वाला. हाँ, चार्जशीट वाला क्वेश हो गया. चार्जशीट वाला उसको आपने चैलेंज नहीं किया. उसको हमने अब 177 के बारे में क्या कहना है? इन्होंने क्या कह दिया? इन्होंने ये कह दिया कि इनको ऑडिट रिपोर्ट नहीं सप्लाई हुई थी. नहीं हुई थी. इनका ऐसा कहना है. हाँ. आपने कहा क्या क्या एविडेंस दिया कि ऑडिट? हमारा तो यही है कि सिंस द ऑडिट रिपोर्ट कोई प्रूफ होगा ना ऑडिट ऑब्जेक्शन देने का इनको, क्योंकि जब ऑडिट ऑब्जेक्शन होता है तो उसके बाद में ऑडिट ऑब्जेक्शन. अरे भाई, ही वाज नॉट कन्फ्रंटेड. समझ रहे हैं आप? कर दें हम. देखिएगा, श्री रजनीश गुप्ता, लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर, श्री अनिल लाला फॉर रिस्पॉन्ड नंबर 1. Petitioner's contention is that petitioner stood superannuated on 31/1/2005. Prior to that, there was an audit objection showing defalcation to the tune of rupees 1,77,000. 534.41. 1,77,534.41 rupees. Full stop. Thereafter, another sum of rupees 1,74,000 was found to be due against the petitioner, for which charge sheet was issued. Thus, a total sum of rupees 3,63,284.4. 3,66,000. 63,000. हाँ. 284. 284.41. 284.41 were found to be due against the petitioner. Next step. It submitted that petitioner had challenged the charge sheet that was set aside by the cooperative court. Admittedly, petitioner had not challenged that order of the cooperative court. Therefore, it attained finality. However, it is submitted that since the amount of defalcation, as was pointed out in the audit objection, was standing against the petitioner, recovery of that amount of rupees 1,77,000, जो भी ऊपर फिगर आई है, इतना was recoverable from the petitioner, but arbitrarily, by impugned orders, those recoveries have been set aside. Next para. Shri Anil Lala, learned counsel for respondent number 1, submits that respondent was never given copy of the audit objection. Full stop. The procedure in a cooperative society is that the delinquent employee is given copy of the audit objections and are asked to meet the objections by filing relevant documents. Full stop. Since that opportunity was not given to the petitioner to meet out the audit objections, to point out that the recovery proposed against him was artificial and not the actual amount, such recovery has been rightly set aside by the courts below. Next para. Shri Rajneesh Gupta is when requested to point out from record that as to when copy of the audit objection was supplied to the deceased employee, he fairly admits that no such material is available on record. Full stop. In view of such facts and applying the principles of natural justice, when copy of audit objection was not given to the respondent employee, and he was not given an opportunity to meet out the objections in terms of the requirement of law, no recovery could have been made in a hypothetical manner. Therefore, when impugned orders are tested in this light, they do not suffer from any vice. Full stop. Petition fails and is dismissed.
One more thing, my lord, that the learned court below is directed for payment of interest, my lord, at the market rate, my lord. हाँ ठीक है, आप भी तो मार्केट रेट से ही लेते हो। से ज्यादा जब हम आपसे लोन लेंगे तो आप क्या करोगे, मार्केट रेट से लोगे कि 6% पे लोगे? That would be too. ठीक है, They are in losses, my lord. They are ठीक है, running in losses. अरे इतने बड़े वकील को एंगेज कर सकते हैं, लॉस कहाँ है? तो उसको 6% या 8%? नहीं। उमा अग्रवाल का केस है, 18% ब्याज के साथ दिलाया है सुप्रीम कोर्ट ने पैसा। ठीक है, चलिए। Please, Your Lordship. Your Lordship, this is a case of appointment, Your Lordship. It's, the petitioner claimed appointment to the post of constable, Your Lordship, and it's in the character verification form, he submitted the details of the pending criminal or decided criminal cases against him. जी, It was submitted that 3 cases were pending, decided. लॉ बहुत क्लियर है। Yes, Your Lord. पुलिस, for a police job, they are entitled to verify the antecedents. लाएं, judgment लाएं। Yes, Your Lord. There is one judgment. I'm only relying on That is against you. It's, this one, I'll only rely on the ratio of that judgment. It's not specifically with respect to police, but the judicial services aspect was considered in that. Para 6 to 9 is the relevant judgment. I'll straight away read from para 8, Your Lordship. The appellant, by dint of hard academic labor, was successful at the competitive examination held on 16/8/2009, and after Viva OC was selected and recommended for appointment by the Ministry of Public Service Commission on 14/10/2009. In his attestation form, he had duly disclosed this prosecution and acquittal. Mere disclosure is an appropriate case. In an appropriate case, may not be sufficient to hold for suitability in employment. Nonetheless, the nature of allegation and the conduct in the facts of the case would certainly be a relevant factor. While others so recommended came to be appointed, the selection of the appellant was annulled on 4/6/2010 in view of the character verification report of the police. Your Lordship, even in my case, my Lords, the character verification report was called, and it was admitted in the character verification report by the respondent that I have duly disclosed all the cases against me and that I have also been acquitted in those cases. What is the nature of those cases? Yes, Your Lordship. That is important. Yes, Your Lordship. Because your criminal antecedents can still be considered. ये judgment नहीं है, एक और judgment है अपने हाई कोर्ट का, शायद 2014 का या 16 का है। Yes, Your Lordship, it has been discussed. I will fairly disclose, Your Lordship, there were 3 cases. In one case, my Lords, I was charged with section 294, 323, 506 and 34. And my Lords, that one which they have very strenuously objected to is that I have a case registered against me under section 25 of the Arms Act. Yes. In that case also I was acquitted. ये अवतार सिंह तो इन्होंने कंसीडर ही नहीं किया ना। Yes, my Lord. अवतार सिंह जो है, ये आप जो सुप्रीम कोर्ट जिस अवतार सिंह Yeah, Your Lord. किया है। Yes, Your Lord. If empanelment creates no right to appointment, yes, that has been considered. There can be no arbitrary denial of appointment after empanelment. Para 10 में किया है, Lord. हाँ, देखा उसको मैंने। Para 11 में फिर उसको distinguish भी किया है, Lord, इस case के regarding में। बोला, in the entirety of the facts and circumstances of the case, we are of the considered opinion that the consideration of the candidature of the appellant and its rejection are afflicted by a myopic vision, blurred by the spectacle of what has been described as moral turpitude, reflecting inadequate appreciation and application of fact also, as justice may demand. So, Your Lordship, I would only submit that the prerequisite of declaring the crimes that were registered against me and that I was acquitted in all those crimes have also been, it would be a relevant factor and a driving factor in a case like this. Acquittal का orders बताइएगा। Yes, Your Lordship. That would be page number I'll straight away point it from the next only. Annexure P3, Your Lordship.
P3 is the affidavit lot. P3 and the relevant page is page 17. The judgment starts from page 17. And in that paragraph number 11 is relevant, 11 and 16. पैरा 11 से पढ़ रहा हूँ जी। फलतः उक्त विवेचना के आधार पर अभियोजन यतियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी गण के द्वारा फरियादी के साथ मारपीट कर स्वेच्छा उपहति कारित की गई है। अतः विचारणीय बिंदु क्रमांक 2 अभियोजन प्रमाणित करने में असफल रहा है। This was with respect to question number 2 and with respect to question number 1 and 3 wherein it was alleged that petitioner has hurled abuses, that has been answered in paragraph number 16. अतः अभियुक्तगण किशोर कुमार जित्तू उर्फ जितेंद्र राजकुमार बहन को आरोपित अपराध से दोष मुक्त किया जाता है और अभियुक्तगण को स्वतंत्र किया जाता है। ठीक I'll pass out. इसको रख लीजिए। आपको कुछ कहना है? Lordship, their acquittal is not clean or honorable acquittal. कैसे मालूम पड़ेगा? Clean acquittal क्या होता है? My lord, this is the findings of the committee report. This is filed as. बताइए ना, थोड़ा डिफाइन तो करिए व्हाट इज क्लीन एक्यूटल। संदेह का लाभ देके छोड़ा गया है क्या इनको? ऐसा लिखा है क्या इसमें? फाइल दीजिएगा 1 मिनट के लिए, बताइएगा क्लीन एक्यूटल क्या चीज होती है? Release submitting lordship, this acquittal is there, but so far as the screening committee report is concerned. नहीं, स्क्रीनिंग कमेटी नहीं, इसको समझा है ना। स्क्रीनिंग कमेटी में none of the police personals will come out clean। अगर क्लीन एक्यूटल क्या चीज होती है तो समझाइएगा। एक ऑर्डर P3 हो गया, दूसरे केस का in the other case also that will be page number in P3 only, your lordship. The page number would be 22 to 26 and relevant para is 13. Para 13 पढ़ देता हूँ, पेज 25 पे है। जी पढ़िएगा प्लीज। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि स्वयं प्रार्थी जयदीप गुप्ता ने घटना का समर्थन नहीं किया गया है, बल्कि अभियोजन कथानक के विपरीत कथन किए हैं। चक्षुदर्शी साक्षी हरजीत सिंह ने भी घटना की जानकारी होने से इनकार किया है। साक्षी अश्विनी कुमार प्रजापति प्रार्थी की मोबाइल दुकान की Serial number 43. Grateful. Serial number 43. Your lordship, I'm seeking pass over. पास ओवर मैडम होता नहीं, कितनी बार एक ही चीज को बताएंगे? फाइनल हियरिंग वाले दिन पास ओवर नहीं होता है, ठीक है? Your lordship, my senior is engaged before another bench. My senior is on his leg before court number 1. तो क्या कर सकते हैं? सभी लोगों को कोर्ट रूम नंबर 1 में बैठने को बोलिए, फिर हम कोर्ट बंद कर देते हैं। आप कब तैयारी करेंगी? बताइए क्या मैटर है? First opportunity may be granted. नहीं मैम सॉरी, 2019 की पिटीशन है, वो सरकार है ना पार्टी। Sir, we are for respondent number 2 and 5. हाँ, क्या है 2 and 5? देखें जरा, क्या लोकप्लस है, क्या स्टेटस है आपका? 2 जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, 5 इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सस्पेंशन ऑर्डर किसने जारी किया है? P3। Respondent number 5. देखिएगा, श्री आदित्य वीर सिंह, लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर। मिस बस ऑर्डर पास करना। क्या नाम है आपका? Sir, Amrit Kaur. Amrit Kaur submits that arguing counsel is busy in some other court, in court number 1, and therefore pays for adjournment. Reluctantly, case is adjourned. List tomorrow, top of the list. A clear stipulation that no passover will be admissible.
on the request of the respondent counsel. जिस भी कोर्ट में हो ले आइएगा उनको. Yes, Your Lordship. Highly obliged. Number 44. Lord, this is the case. My appointment has been cancelled as Anganwadi worker. Yes. And on the appeal of respondent number 4, Bhagwati Pal, that appeal was allowed. And respondent number 5, Raju Raja, was asked to give Record है appointment. सिलेक्शन का रिकॉर्ड है नहीं है. सर इसमें दो इशू हैं. एक तो रिकॉर्ड तो आना पड़ेगा ना. रिकॉर्ड तो देखने शुक्ला. नहीं सर, उस केवल एक ही बात से क्लियर हो जाएगा. हार्ड होने के बाद मैटर इनने 2 मार्कशीट पेश करी. 28/9/17 को केस हार्ड हो गया, रिजर्व फॉर ऑर्डर. 21/11/17 को मैं डॉक्यूमेंट मैंने लगाया है. 2 मार्कशीट इनने रिस्पोंडेंट नंबर 4 ने लगाई और उस मार्कशीट के बेस पे मुझे बिना सुने ऑर्डर कर दिया गया कि मेरी रिकॉर्ड बुलाकर देखेंगे. लिखिएगा श्री विजय कुमार शुक्ला फॉर द पिटिशनर, श्री लोकेश जैन लर्नेड काउंसिल फॉर स्टेट, श्री राम नारायण शाह फॉर रिस्पोंडेंट नंबर 4. Let record of the selection process be called for within 2 weeks. List immediately thereafter. Date may kindly be given, my lord. It is the List case. in the week commencing 26 फरवरी 2024. My lord, it is the case of 2016, my lord. क्या कर सकते हैं? 20 में लगा है ये केस यहाँ पर. सर और पहले कर दें सर, चलिए क्योंकि कोई बात नहीं. कमिश्नर के यहाँ भी हुआ है, वहाँ भी रिकॉर्ड नहीं आएगा जब तक कोई मतलब नहीं सुनने का. मैंने फाइल किया है सर कंप्लीट. ठीक है, रिकॉर्ड आने दीजिए. नेक्स्ट केस. 45. Annexure P30 is under challenge. सर ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी के खिलाफ कैसे मेंटेनेबल होगी पिटीशन? This is a statutory body constituted under the act. Which act? Madhya Pradesh निजी विश्वविद्यालय अधिनियम. हाँ. We have made the specific government in that regard. अच्छा. And kindly see annexure P13 for a moment. P13. The authority presumed that I want to resign and therefore they acted on their presumption. P13 में क्या लिखा है? पढ़िएगा. The academic activity for the year 2010 पढ़ने में नहीं आ रहा. कहाँ पढ़ रहे हैं आप? Typed copies there. Kindly see page 61. Activities for the year 2019. Academic activities for the year 2019 have come to an end by this month. During several discussions with Registrar and Vice Chancellor, you had indicated your interest to resign from the services of this university. Considering your interest, it has been decided to relieve you from the services with effect from 31st March 2020, effect from 31st March 2020. Further, on the reopening of university, you are required to submit the no due certificate from all concerned departments to complete your relieving formalities as goodwill. From the part of the university, this entire month's salary is released to you while keeping a nominal amount against any pending dues, which will be released at the time of the issuing service certificate. And then, my lord, immediately she preferred to respond via annexure P15. Denying that she never expressed any such intention, nor anything has been given. And then, my lord, may kindly see, we sought as to under what provision of law this action has been taken. So they informed me, my lord, that under the regulation 5.8.1. Who is appearing for the respondent? Mr. Patwardhani used to appear, my lord. And if my lord may just kindly have a look at annexure regulation 5.8.1, my lord, which I have reproduced. There is mandatory requirement of the submission of a resignation letter in writing. Lord, may kindly. ठीक है, I have understood. उनको आने दीजिए, एक बार सुनते हैं, अगले हफ्ते लगाते हैं. श्री अजय मिश्रा, learned senior advocate for the petitioner, assisted by Shri Yash Agrawal. Yash Agrawal. None for the respondents. Pleadings are complete by way of indulgence. An opportunity is given to the respondents to appear and place their case before the court. List in this case in the week commencing 15 January 2024. Serial number
Lordship, the replies are written. Shri Arunodaya Singh, learned counsel for the petitioner. Shri Lokesh Jain, learned counsel for the state. Shri Lokesh Jain prays for and by way of last indulgence granted 4 weeks time to file reply. List after 4 weeks. Obliged. Leader number 47. And this is also seeking 2 weeks time to file the reply. This is 2021 petition. 2 weeks time to file reply. नाम डाल दीजिएगा. Malot as a last indulgence because As a Malot last- Malot class 4th As a last indulgence 4 weeks time कर दीजिए. चलिए. Leader number 40. Pleadings are complete, my lord. Pleadings are complete, my lord. Purushottam Das Jaiswal submits that pleadings are complete. He be given time to argue the matter. Petition is admitted for final hearing. List for final hearing in Part B of the cause list in the week commencing 26 February 2024. Leader number 49. Leader number 49. Bill pass. Lord, in this case, I am paying 2 weeks time to file reply. जी 2 week time to file reply. 2 weeks time to file reply. Okay. Two line. Leader number 50. Pramod Kumar Khare. Lord, I am paying 4 weeks time to file reply in this matter. इनको दे दीजिएगा 4 weeks time to file reply. यशोवर्धन जैन और इनका नाम डाल दीजिएगा गौरव माहेश्वरी. By way of last indulgence 4 weeks time is granted to file reply. Leader number 50. Also, in this matter, pleading is completed, so it has to be heard finally. So, तैयार हैं हम. it may kindly be taken in the next week, Lordship. Today, we are not. Any fixed date be granted. Our rejoinder is Shri Matand Pandey, Matand Paliwal for the petitioner. Shri Vikram Singh submits that pleadings are complete. Some time be granted to him to prepare and argue the matter. On his request, petition is admitted. List for final hearing in the week commencing 19 February 2024. Highly obliged, Lordship. Good. Leader number 32. Vinod Kumar Rajak. Lord, may kindly see, my Lord. Last one. My lord, I appear for the university. They filed an application for production of the report of internal committee, my lord. On the previous dates, my lord, liberty was granted to file reply to this report, my lord. I have no objection for production of the report of internal committee, my lord. And Have you they can complied with the also- order? my lord, देखिएगा श्री Pawar submits that he has no objection to IA 9690/23, an application for production of the report of the internal committee constituted by the respondent university. Full stop. Accordingly, IA is allowed that report be filed within 7 days. A list thereafter. leader number 53. Leader number 53. कर दिया ना उन्होंने कंसेंट दे दी उनको कर दिया 53 में बोल रहे हैं क्या? No, in 52 only. 52 हो गया चलिए. My lord, I was entitled for a time pay scale, and this amount wasn't given to me. And I superannuated in 2013, and I became entitled in 2009. After that, I've been giving representation. And when I filed this writ petition, they said that certain amount was deposited in account, which you have to return. And after that, we will give you money. ऐसा क्यों? अब बैलेंस पैसा दे दीजिए. ऐसा कौन सा होता है? And the amount is कौन सी अकाउंटिंग पढ़ी है आपने? थोड़ा बताइएगा. कौन सा प्रिंसिपल है अकाउंटिंग का? When you admit that there are certain dues to be paid,
some amount was paid earlier, then after deducting that amount, you are required to pay the remaining amount. किसको बुलाना पड़ेगा? Not actually, ये they किसका filed. किसका दिमाग है ये? इतना ज्ञान किसने? ये एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है ये. Who is to be called? Director is to be called, or you will make payment within 15 days. But I'll do when then payment. Because Petitioner's there's an amount. contention is that petitioner is entitled to payment of arrears of salary from April 2009 till his retirement in December 2013 on account of pay fixation. Full stop. Respondents have admitted payment of such dues but are arbitrarily causing hurdles in the process of payment by creating artificial barriers. Full stop. It is submitted that respondents have admitted that payment is due, but at the same time they have said that petitioner is required to refund certain amounts and then only benefit of second Karmonatti will be payable to the petitioner. Next para. In para 4 of the reply, it is mentioned that revised PPO and release gratuity amount in favor of the petitioner. That respondent authority issued the revised PPO and release gratuity amount in favor of the petitioner, but respondents did not pay the salary arrears because a sum of rupees 43,432 was wrongly deposited in the petitioner's account by mistake, which were actually to be paid to Dr. Srimati Shubhra Byohar. Full stop. It is mentioned that as soon as this amount is returned, which was erroneously paid to the petitioner, they will pay the arrears of pay fixation. Next paragraph. This reply on face of it appears to be cryptic and arbitrary. Full stop. Respondents would have paid the difference of the amount which was already paid erroneously or otherwise in the account of the petitioner in place of Dr. Srimati Shubhra Byohar to save themselves from the payment of interest. Full stop. Now they are directed to pay the remaining amount of rupees 73,980 in favor of the petitioner along with 8% interest thereon from the date when it becomes due. Amount will be different. They will be deducting the amount. 73 is total arrears. नहीं 73 total area कि 1,26,000 है. नहीं मिनट 73 our calculation says it is 1,76,000. The difference of areas कर दीजिए amount बोल लीजिए. Let difference of areas be paid along with 8% interest thereon from the date of it becoming due and till the date of actual payment. Respondents will be entitled to recover the interest from the erring official who delayed the matter. With the aforesaid direction, let this exercise be completed within 30 days from the date of receipt of certified copy. With the aforesaid direction. ऊपर एक line लिख लेना. Since there is an admission of payment of arrears, though the quantum is different, comma, वो उसके बाद 8% interest के साथ payment होगा. कर दीजिएगा. Petition is disposed of. Petition number 54. Item number 54.1. Respondent number 3 today supplied me copy of reply. 54.1 में लिखिएगा श्री आलोक तिवारी submits that today he has received a copy of reply and prays for time to file rejoinder. क्या matter क्या है? One more, state has also filed reply and they did not supply me copy also. That copy of the reply filed by the state be also supplied to Shri Alok Tiwari during the course of the day. Item number 54 they filed a reply yesterday. हाँ, इनका भी नाम डाल लीजिएगा 54 में और दोनों को 2 वीक का टाइम दे दीजिएगा रिजॉइंडर के लिए लिस्ट देयर आफ्टर और 2 further weeks for additional return list देयर आफ्टर. चलिए. Serial number 55 Ashok Kumar Gupta. बताइए गुप्ता जी.
petitioner on the Manchitka Sahak Manchit Kitka Malad on the document the P1 page of 16 Malad on the conduct the exam Malad on the permission Malad and the Sahak UPN3 Malad. On the pass out of 2014 15 Malad. 14-15 में हमने एग्जाम पास कर लिया उसका हमारा वरिष्ठता सूची मैंने नाम दर्ज नहीं किया आज तक मैडम और 2019 में दर्ज किया जो 15 में एग्जाम हुए उस 15 के एग्जाम से हम प्रोटेक्टेड हो गए मैडम नहीं आपके किस जूनियर का नाम पहले दर्ज कर लिया गया दो चीजें बतानी पड़ेगी कि एक सेकंड यहाँ से शुरू करिए इस एग्जाम की स्कीम क्या थी पहले एग्जाम बताइए एग्जाम किस पर्पस के लिए कंडक्ट किया गया एक P8 मतलब P8 पढ़िएगा पैरावन वाले अनुरेखक सहायक मानचित्र पद पर कार्यरत डिप्लोमा डिग्रीधारी कर्मचारी को उपयंत्री पद पर नियुक्त लिखित परीक्षा विसंगत लेखा की विकास आयुक्त कार्यालय के अंतर्गत ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मुख्यालय डिप्लोमा द्वितीय तल विंध्याचल भवन भोपाल में सहायक मानचित्र के पद पर कार्यरत डिप्लोमा डिग्रीधारी कर्मचारी को उपयंत्री के पद पर नियुक्ति देने हेतु विभागीय परीक्षा दिनांक 24/8/15 को 12 बजे से 2 बजे तक आयोजित की गई है तो सर कृपया परीक्षा व्यवस्था इन पढ़ने में नहीं आप हैंड स्कीम क्या है पहले स्कीम तो बताइए ये तो परीक्षा कंडक्ट करने का नोटिस है वेयर इज द स्कीम हमने 2013-14 में एग्जाम हमने अरे यस नहीं हम आपसे पूछ रहे हैं स्कीम क्या है स्कीम ये थी नियम होंगे ना कुछ वो नियम कौन से है जिसके अंतर्गत ये परीक्षा देकर आप उपयंत्री के पद पर नियुक्ति पा सकते हैं डिपार्टमेंटल पोस्ट पब्लिश कहाँ है वो वही तो पूछ रहे हैं आपसे वकील साहब लेटर P5 लेटर नहीं देखेंगे स्कीम बताइए पहले रिक्रूटमेंट रूल्स बताइए उसमें क्या प्रावधान है इसको नेक्स्ट श्री अशोक कुमार Gupta when asked to show from the record scheme in regard to undertaking competitive examination for promotion to the post of sub-engineer from the post of assistant draftsman praised for time to bring to prepare and argue this matter on his request cases adjourned list after 2 weeks. Matters pertains to recovery matter on account of improper fixation of salary matter. ग्रेचुटी से रिकवरी हुई है जी मैडम किस बात के लिए आप किस पद पर थे क्लास 3 असिस्टेंट वेटरनरी फील्ड क्लास 3 पोस्ट पे जी मैडम बताइएगा कहाँ है इनकी आपकी इनकी अंडरटेकिंग वगैरह क्या है रिकवरी कैसे हो गई है हम लोग दैट वी हैव फाइल्ड एज एन एक्सर R3 पेज 22 से 24 यस मैम देखें क्या लिखा है उसमें 1996 की है मैडम हर पे स्केल की है मैडम 96 की भी है 2006 की भी है and also my lord presently the WA 815 of 17 is heard and reserved by the honorable larger bench. लिखिएगा WA 815 of 17 815 of 17 is pending decision before the larger bench awaiting decision list this case after 2 weeks चलिए They filed a return lot very short time for a joint bench. Shri Narendra Pal Singh Gupra praised for and is granted 2 weeks time to file. 2 weeks काफी है कि और ज्यादा चाहिए? बहुत ज्यादा. जी. To rejoin the list after 2 weeks. Additional return, if any, be filed within further period of 2 weeks. List thereafter. चलिए. Serial number P8. Petitioner is not receiving the salary since 2020, my lords. He is working in an Ansuchi Janjati school, my lords, in Itarsi. Further, my lords, P13 is the impugn order, my lords. P13. Yes, my lords. P13 बता रहे हैं. Yes, my lords. इसमें तो 3 के बाद एनेक्सर ही नहीं लगे हैं. P13, my lords. P3, sorry.
P3 my lord. क्या लिखा है P3 में? My lord, he is not receiving the salary since 2020. क्या जवाब दिया इन्होंने? क्यों नहीं रिसीव हो रही सैलरी? My lord, in the reply they have mentioned that the adhyaksh of the institution, my lord, is failing to submit the अनुदान प्रस्ताव as per the rule 12A of the अशासकीय अनुदान अधिनियम my lord. तो आपने इसको पार्टी बनाया है क्या? हरिजन, इनका जवाब आ गया क्या युगांतर हरिजन का? My lord, he is नोटिस कब इशू हुए वकील साहब? देखिएगा रिस्पोंडेंट Notices were issued on 8th February. यस, देखिएगा सर्विस हुई क्या प्राइवेट रिस्पोंडेंट्स को 6 और 7 को? हाँ? Report of service is not available. Report of service on respondent number 6 and 7 is not available. Office to list this case along with clear service report. और पनिशमेंट का है मैटर मतलब। हाँ, क्या पनिशमेंट है बताइए? इसमें मतलब हमारा ये था मतलब हमको पहले संचयी प्रभाव से हमारी वेतन वृद्धि रोकी गई थी मतलब। उसके बाद मतलब हमारा जो डिपार्टमेंट है एसएफ है मतलब, इसमें टोटल 6-7 लोग जो है ताश के पत्ते खेलते हुए पाए गए थे मतलब, जिसमें 4 एसएफ के थे और 3 जो है मतलब डिस्ट्रिक्ट पुलिस के थे मतलब। दोनों के अलग विभागीय जांच हुई मतलब। हमको जो है असंचयी प्रभाव से जो है हमारी एक वेतन वृद्धि रोकने के लिए दंड दिया गया मतलब, उसको हमने स्वीकार कर लिया मतलब। एक सेकंड, नमेश ठकरेले का है आपका दंड का आदेश? मतलब एनके नंबर मतलब P9 जी मतलब का पेज नंबर मतलब 42 मतलब असंचयी प्रभाव से 1 वर्ष के लिए रोके जाने का दंड से दंडित किया जाता है। जी ठीक है। उसके बाद मैंने स्वीकार कर लिया, मैंने अपील नहीं करी, कुछ भी नहीं किया जी। उसके बाद मैं जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस वाले थे मतलब, उनका जो है उनको जो दंड दिया गया मतलब, उसके आधार पर जो है P10 महिला 43 महिला हमको जो है परीक्षण करने के लिए जो है तो मोटो में लेकर के मतलब नोटिस जारी होती है। लॉ क्या है इस बारे में? मतलब लॉ क्या है कि मतलब इसमें ये है लॉ क्या है? पुलिस मैनुअल लेकर आए हैं क्या? 270 ये कहता है कि जो सो मोटो होगा मतलब वो 6 महीने का है मतलब। हाँ, फिर इसमें कितने दिन बाद किया? 1 साल बाद में दिखाइएगा, पुलिस रेगुलेशन दिखाइएगा। इन्होंने ऑलरेडी मतलब जो रिप्लाई में दिया स्टेट ने मतलब, उसमें सिर्फ उन्होंने इतना ही कहा है कि चूंकि उनका दंड अलग था, हमारा दंड अलग था, इसलिए जो है उसको मोटो में लेकर के। नहीं, टाइम लिमिट अगर प्रिस्क्राइब्ड है तो हाउ कैन यू एक्सटेंड दैट टाइम लिमिट? पुलिस रेगुलेशन ये नहीं है भाई, ये पुलिस एक्ट होगा ये। इसमें मेरा निवेदन था 1861 का है ये। हाँ, लेकर आइए। We have stated in the reply that we have given a show cause notice also. अरे ठीक है, he is talking about the time limit. But same Police 7 Regulation people. 270 says that time limit is 6 months. Can you extend that time limit? And if you can, then under which provision of law? That is the only issue to be decided here. कहाँ लिखा है आपने अपने रिप्लाई में? पढ़िएगा। Not this question they have not raised specifically in the petition. Why you have not answered this question? Because they have not raised that. They have not raised it in the petition. क्या? That's why we couldn't answer it. आपको मौका दे देते हैं। Petitioner's contention at this stage of hearing is that as per Police Regulation 270, every order of punishment or exoneration, whether original or appellate, shall be liable to revision suo motu
by any authority superior to the authority making the order. Full stop. You know, with it, the show cause notice is within 6 months. No. No. शो का नोटिस है P10 दीजिए ना 4-3-22 6 महीने कहाँ लिखा है? पढ़िए तो पुलिस रेगुलेशन में। मेरा निवेदन था मेरा रिजॉइंडर के लिए टाइम दे दें एक बार। नहीं रिजॉइंडर के लिए आप टाइम नहीं वकील साहब, अभी तो दिखा दीजिए 6 महीने कहाँ लिखा है। आपने बहस करी है वो दिखा दीजिए 6 महीने कहाँ लिखा है टाइम लिमिट। अंदाज से बहस करना बंद कर दीजिए। जी मालूम। हाँ बताइए ऑर्डर ऑफ पनिशमेंट की डेट क्या P9 की? मालूम P9 है जो मालूम वो है ये है मालूम 3/3/2021 मालूम 3/3/2021 मालूम। नोटिस कब दिया? शोकॉज नोटिस कब दिया आपको? शोकॉज नोटिस है मालूम वो है 4/3/2022 मालूम 4/3/22 एनेक्सस एनेक्सस P10 मालूम। लिखिएगा क्या लिखा? Reliance is placed on the judgment of a coordinate bench in Angad Singh Rathore versus State of MP 2010 1 MPLJ 171 निकलवाइएगा इसको जरा 2010 का एक MPLJ wherein it is held that in the absence of any provision in the police regulations prescribing limitation for taking the matter in suo motu revision, Rule 29 within bracket 1 bracket close another bracket Roman 3 bracket close of the CCA rules 1966 gets attracted. Full stop. Rule 29 within bracket 1 another bracket Roman 3 bracket close provides that the appellate authority may review the order proposed to be reviewed within 6 months. Full stop. In view thereof, the suo motu powers would not have been exercised by the Director General of Police after 6 months for initiating departmental inquiry against the petitioner, and hence order of DGP was quashed. Next para. In the present case, admittedly, petitioner was visited with penalty of stoppage of one increment without petitioners were stoppage of one increment without cumulative effect. Full stop. Petitioners accepted that penalty and did not file any appeal against the said order. Subsequently, on 4/3/2022, after lapse of more than 1 year, notices were issued as contained in Annexure P10. Therefore, I have no hesitation to hold that in terms of the judgment of this High Court in Angad Singh Rathore, where it has taken note of Rathore, impugned order of taking matter in review by the superior authority cannot be given an approval, seal of approval. Accordingly, impugned order and impugned show cause notice annexure P10 and consequential punishment order annexure P2 P2 are hereby quashed. Petition is allowed and disposed of. Just one submission. The difference only in the fact is that in that case, the suo motu revision with respect to conduct of the departmental inquiry. Here, the anything suo motu revision के लिए law तो वही लागू होगी. चलिए. P1 and P2 भी कर दीजिएगा. चलिए. Next case. Lord, replies awaited. My lord, I am for respondent number 2 and 4. My lord, I pray for 2 weeks time to file reply. हाँ बोलिए जैन साहब. No objection. Shri Yashovardhan Jain, learned counsel for the petitioner.
Shri Amal Pushpa Shroti praised for and by way of and is granted 2 weeks time to file reply. List after 2 weeks. Right. I am appearing for respondent number 1, 3 and 5. विश्वकर्मा जी का नाम डाल दीजिएगा फॉर respondent number 1, 3 and 5. Yes. Right. Serial number 51. My lords, I am praying for 3 weeks of time to file additional return in this matter. श्री अजीत कुमार सिंह लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर. आपका शुभ नाम बताइए मैडम. Akashmi Trivedi. मिस आकाशमी त्रिवेदी लर्नेड काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट. आप आकाशमी त्रिवेदी हैं? Yes, my lords. अभी दूसरी भी तो खड़े हुए थे. दो आकाशमी त्रिवेदी हो गई. गैस इस कोर्ट. सर वो मेरी सीनियर थी. वो आपका शुभ नाम क्या है? आकाशमी त्रिवेदी. उनका नाम रितिका चौहान था जो खड़ी. अच्छा, मेरे ख्याल से आप लोग चेक करिए. मेरे ख्याल से somebody else also appeared in the name of आकाशमी त्रिवेदी in earlier matter. जूनियर सीनियर कर लीजिए आप लोग अपने नाम के आगे. हाँ, क्या लिखा? इतना for the and praise for and is granted 3 weeks time to file additional return. List immediately after 3 weeks. इसमें डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का रिकॉर्ड भी चाहिए होगा तो अभी. In the meanwhile, respondent counsel is directed to produce record of the departmental inquiry. चलिए. Obliged. Serial number 52. Serial number 52. Tiwari. Lordship, I am praying 2 weeks time to file reply. 2 weeks time to file reply. Will be directed to file the reply as a last possibility, Lordship, because Last opportunity दे चुके हैं इनको. no, Lordship, for this matter. For अच्छा, last opportunity कर दीजिएगा. अरे 23 का मैटर last opportunity मत what is करिए. happening, Lordship? They are continuing with the appointment process, Lordship. ठीक है, चलिए जवाब आने दीजिए फिर देखेंगे. चलिए. Serial number 63. Lord, the matter pertains to withholding of 2 increments with cumulative effect. Lord, in this case also, I included. Reply is awaited. Yes, Mr. सर इसमें नए काउंसिल आ गए हैं मिस्टर श्रुति. तो क्या करना है उनके लिए? क्या करना पड़ेगा? उनका नाम अभी डिस्प्ले पे. वकालतनामा जब तक फाइल नहीं करेंगे तो नाम कैसे आ जाएगा? आप जाके उनसे वकालतनामा फाइल करवाइए. मैं सूचना देता. श्री राकेश कुमार तिवारी pleads no instructions for the respondents. Let reply, if any, be filed. He submits that new counsel has been appointed. Next para, it is incumbent upon the new counsel to file wakalatnama. He cannot seek privilege of reflection of his name without filing wakalatnama. Shri Tiwari may advise the officer in charge accordingly. Let reply be filed within 4 weeks, list thereafter. In this matter also we have to file reply, Lordship. 4 weeks time to file reply. Kindly. IR to continue. Serial number 65. In this matter also we have to file reply. Notices issued on 16/10/2023. क्या मैटर क्या है? ट्रांसफर का मैटर है या देख लेते हैं 2 मिनट. ये लॉर्डशिप. किस ग्राउंड पे ट्रांसफर ऑर्डर चैलेंज कर रहे हैं वकील साहब? My lords, in my agreement, they have specifically mentioned, my lord, ki we are working till 2024, my lord. That's why the IR has been given. कहाँ है आपका नाम ट्रांसफर ऑर्डर में? सर ये P3 annexure P3 सीरियल नंबर? सीरियल नंबर 13 में हैं? सीरियल नंबर 13 लॉर्डशिप श्री रंगीलाल सोनी. रंगीलाल सोनी. और ये पिटीशन जो है श्रीरंग सोनी की है. श्रीरंग सोनी में लॉर्ड. रंगीलाल उसमें लिखा हुआ है गलती से सर. गलती से सर उसमें टाइपोग्राफिकल एरर है लॉर्ड.
The page number 13 is 13 on the English and page number 15 of my petition, my lord, there is the agreement annexure P2. P2 सर उसमें लिखा हुआ है सर, क्या लिखा है? सर अनुबंध पत्र पढ़ रहा हूँ सर मैं। हाँ, नंबर 1 यह कि संविधा कहाँ पढ़ रहे हैं आप? ये तो अंग्रेजी में है। P2 सर, फिर उसके P2 ही तो पढ़ रहे हैं हम भी। उसके आगे सर वो हिंदी में लिखा हुआ है अनुबंध अच्छा, पत्र में। हाँ, सर इसका क्लॉज नंबर 1, सर ये संविधा नियुक्ति निश्चित समय सीमा की दिनांक 31/3/2024 तक के लिए होगी। संविधा पर नियुक्ति अभ्यर्थी को पदनाम उपयंत्री जनपद पंचायत गुन्नौर पर कार्यभार ग्रहण करने समय चिकित्सा प्रमाण पत्र तथा आवश्यक शैक्षणिक योग्यता। बताइएगा थोड़ा सा, इसको क्या रिप्लाई फाइल करेंगे? ये लॉर्डशिप 3 महीने बचे हैं इनके, स्टे ऑलरेडी चल रहा है, यू कंटिन्यू हिम। ये लॉर्डशिप लिखिएगा श्री नाम बोल हैं? अक्षांश श्रीवास्तव। Akshansh Shrivastava for the petitioner. This petition is filed being aggrieved of order of transfer dated 17/8/2023 in which name of the petitioner appears at serial number 13, whereby petitioner who was given appointment on contract basis on the post of sub-engineer has been transferred from Panna to Rewa. Next para. Shri Shrivastava, reading the contract document Annexure P2, submits that petitioner's appointment is for a fixed tenure of up to 31st March 2024. In Janpad Panchayat Gunnor, and therefore without there being any stipulation for transfer of a contractual employee, petitioner could not have been transferred in a arbitrary and illegal manner. Full stop. There is already stay granted by a coordinate bench wide order dated 16/10/2023. Petitioner's tenure is going to come to an end in March 2024. Therefore, looking to these facts, interim order is made absolute as far as impugned order is concerned. In relation to petitioner, it is hereby quashed. Petition is allowed and disposed of. Number 56. Serial number 66. Lordship, my office has resigned as the council of Poor Kshetra. तो क्या करना है? Lordship, the उनको बुलाने जाएंगे क्या? order has They should arrange for a council. no, Lordship, I kindly kept this matter after 2 तो weeks. आप जब रिजाइन कर दिया तो क्यों आए क्यों यहाँ पर? Lordship, because इस्तीफा देने के बाद क्या लोकस है आपका, थोड़ा बताइए तो, हमको भी थोड़ा समझाइए तो. हाउ कैन यू अपीयर आफ्टर हैंडिंग ओवर द ब्रीफ? Lordship, because the file was not taken by the Poor Kshetra from me. Huh? Lordship, because the file is still with me and they have did not taken the फाइल आपके साथ है तो फिर बहस करिए. जी, ये ऐसी कैसी एम्बिग्विटी है? ब्रीफ छोड़ भी दिया लेकिन पकड़े हुए हैं. In that case, Lordship, I kindly kept this matter in a passover round. पासओवर तो फाइनल हियरिंग में होता नहीं है. श्री केसी गिल्डियाल, लर्नेड सीनियर एडवोकेट, असिस्टेड बाय श्री आदित्य वीर सिंह. श्री Takmil Nasir for the respondent submits that they have returned briefs of the respondent company, but company has yet not lifted their files, and therefore he prays for time. On his request, list this case next week, when company will be obliged to make alternate arrangements, failing which hearing may proceed in absence of the respondent company. Good. Highly obliged. Serial number 30. Sanjay Sanyal. It is informed that Shri Sanjay Sanyal is not keeping good health. On request of Shri Aditya Veer Singh, case is adjourned list after 4 weeks. Serial number 58.
Well, I've received the rejoinder. And in 2 weeks' time, I kindly grant my lord, I will have to call and decline. Shri Abhinav Shrivastava. Shivam Mishra. Shivam Mishra for the petitioner. Shri D.K. Dixit. Shri Anshul Dixit का नाम डालिए, इनका नाम मत डालिए. Shri Anshul Dixit for the respondent. 2, 3, 4. Shri Dixit prays for and is granted 2 weeks time to file rejoinder list after 2 weeks. Lordship, I have Rejoinders in the Sorry, additional return. Additional return. If required, as a good. 2 हफ्ते में आपको जो करना है कर दीजिए. Number 59. Oblige. Your lordship's permission, Mr. Singh wants to join through video conferencing, my lord. फाइनल हियरिंग मोशन इसमें कैसे होगी? ये तो वो सुनी जाएगी, इसको पार्ट बी में सुनेंगे. लिखिएगा. He's already joined. हाँ ठीक है, उनका नाम डाल के लिखा देते हैं. श्री अंशुमन सिंह थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग असिस्टेड बाय श्री विराज शंकर झा प्रेजेंट इन पर्सन. श्री Rupesh Singh Thakur. रूपेश सिंह ठाकुर number 3. रिस्पोंडेंट. Respondent number 3. Respondent number 1. 3, sir. 3. Shri Amit Sharma for respondent number 1 and 2. 1 and 2. Pleadings are complete. Case is to be heard finally. List for final hearing in part B of the cause list in the week commencing 19 फरवरी 2024. Could it be a bit earlier, my lord, if my lords would permit? This was a matter which your lordships were pleased to hear finally earlier. My lords, if I may make a request, Mr. Singh wants to address. बताइए ना. Possibly the audio is not. वॉल्यूम क्यों नहीं आ रहा इसमें? अपनी गलती है कि उनकी गलती है? My lords, my audio seems to be there, my lord. वहीं से बंद है. चलिए वहीं से बंद है. हमने बंद नहीं किया. Possibly, my lords, the submission is that if my lords may keep it in the motion hearing list and hear it. फाइनल में सुनेंगे ना, हम सब सुनते हैं. वेडनेसडे थर्सडे दोनों दिन सुनते हैं फाइनल. चलिए. Could it be a bit early, my lords? This is for final hearing. कब करेंगे फाइनल हियरिंग? Pleadings are complete. श्री प्रशांत के बडरिया for the petitioner. Neerja Agrawal, your lordship. Ms. Neerja Agarwal for the respondent. Shri Badaria prays for time. Petition is admitted for final hearing. List for final hearing in part B of the cause list in the week commencing 5 फरवरी 2024. Serial number 71. My lord, this is second miscellaneous petition. First one was dismissed, withdrawn on my lord 31/10/2023. क्या मैटर क्या है? ये मैटर ये है कि डेट ऑफ ऑर्डर है ये 5/9/2022 my lord. Annexure P6 at page 77. My lord, respondent have filed a divorce petition before learned family judge at Bhopal. My lord, entire proceeding is as end, my lord, but no mediation proceeding is going on, my lord. नहीं, 5/9/2022 का ऑर्डर शीट देखा. आप लोग साथ में रहने को तैयार हैं क्या? लॉर्ड, आई एम तो स्टिल रेडी माय लॉर्ड, बट माय लॉर्ड वो तैयार ही नहीं है. मतलब यहाँ पे माय लॉर्ड 5/9/2022 उनकी मर्जी के बगैर मीडिएशन हो जाएगा क्या? माय लॉर्ड, उनकी मर्जी के बगैर मीडिएशन हो जाएगा क्या? नहीं, मीडिएशन प्रोसेस आप 5/9/22 का देखे माय लॉर्ड ऑर्डर शीट. हाँ, किस तारीख? एनेक्चर P6 माय लॉर्ड. एक सेकंड. Page 77 में. डाइवोर्स पिटीशन किसने लगाई है? 1.5 महीने थी माय लॉर्ड. उसके बाद इनके मेंटेनेंस लगाए. मेंटेनेंस के बाद डाइवोर्स पिटीशन लगा दिया 20/6/2019 को माय लॉर्ड. तो ये कौन वकील साहब हैं? इनके खिलाफ कार्रवाई करी है जिन्होंने 1,05,000 रुपए जमा नहीं कराया मेंटेनेंस का? उनके खिलाफ बार काउंसिल में कार्रवाई करी है? बार काउंसिल में लगा दिया है ना? ठीक है.
वहाँ वो गवाही के लिए वो हो रही है, लेकिन क्या ये इनको नॉन पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस अनाउंस वुड हैव सेंट टू जेल माय लॉर्ड। करते क्या है आपके पक्षकार? माय लॉर्ड वो डिफेंस में सर्विस कर रहे हैं। हाँ, तो दे दें, अभी तो दे दें जेल जाने से बचने के लिए। माय लॉर्ड 17/8 से कंटिन्यू इन जेल माय लॉर्ड, भोपाल सेंट्रल जेल। अच्छा, तो इस पिटीशन में क्या चाहा आपने? माय लॉर्ड मेडिएशन पर के लिए हमने चाहा, ये 5/9/2022 में अरे भाई, इनने mediation डायरेक्ट कैसे हो जाएगा? आपकी पत्नी प्रकरण में मेडिएशन संबंधी कार्रवाई नहीं। नोटिस टू द रिस्पोंडेंट्स ऑन पेमेंट ऑफ पीएफ फॉर रजिस्टर्ड एडी पोस्ट विदिन 7 days, रिटर्नेबल 4 weeks। चलिए माय लॉर्ड एसपी के थ्रू करवाया जाए माय लॉर्ड, क्योंकि जो एड्रेस हम दे रहे हैं जी, ये ऐसा पहली बार में तो नहीं होगा वकील साहब। इन एडिशन, पिटिशनर इज परमिटेड टू सर्व द रिस्पोंडेंट थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेकंड एडिशनल प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट भोपाल। चलिए मतलब तब तक के लिए स्टे नंबर 72 ये बताइए क्या मैटर है? भाई लोग रिटायरल बेनिफिट्स का है, वीआरएस लिया था लॉर्डशिप, पूरा पेमेंट नहीं हुआ इनका, लेबर कोर्ट का ऑर्डर हमने चैलेंज किया। लेबर कोर्ट का ऑर्डर चैलेंज किया है? कहाँ है लेबर कोर्ट का ऑर्डर? पेज 18 पे है लॉर्डशिप, 5/4/2021 का ऑर्डर। एनेक्सर क्या है? एनेक्सर T3 लॉर्डशिप। हाँ, तो लेबर कोर्ट के ऑर्डर को एग्जीक्यूट नहीं किया इन्होंने? एग्जीक्यूट नहीं किया है तो 33C2 की लगेगा? एग्जीक्यूट नहीं लॉर्डशिप, कम पे उसको हमारा जो 33(2)C का था उसको निरस्त कर दिया। अच्छा, पूरा पेमेंट हमको नहीं मिला है, उसके खिलाफ हम यहाँ आए। अच्छा, issue notice to the respondents on payment of fee for 7 days, returnable 6 weeks। चलिए none for the petitioner. Case is adjourned. List after 4 weeks. That's I number 15042 of 23 for amendment in the memo of petition, my lord. Heard on IA 15042/23, an application for amendment in record. आपको कोई आपत्ति है? No, Lordship, but I am seeking some time to verify the facts made in the. Sarvani prays for time to file reply to the application. By way of indulgence, 2 weeks time is granted to file reply to the IA list after 2 weeks. Grateful. number 75. Lordship, in this case, the issue is regarding payment of gratuity. The petitioner was initially an employee of MP Oilfed, but after 2001, कंसीडर करना आपका रिप्रेजेंटेशन, नाम बताइए। Lordship, in fact, representation was in the earlier round was directed to be decided, and MP Oilfed has decided and granted me gratuity up till 2001, and thereafter the MP Oilfed is saying it is the responsibility of National Judicial Academy, wherein he was sent on deputation. They have to pay the gratuity. Now, my lord, but NJ has also filed its reply, and they are denying, and they are shifting the liability on MP Oilfed. So it's a interstate dispute. Terms and conditions of deputation क्या है बताइए? Yes, my lord. As per the terms and conditions of deputation, which was found on page number 30, annexure P10, my lord. P10 क्या terms and conditions है पढ़िएगा? Yes, my lord. As per this policy, point number 16, which can be seen on page number 32, my lords. प्रतिनियुक्ति अवधि की प्रच्युति राशि का भुगतान वाहन नियोक्ता द्वारा किया जाएगा। कहाँ लिखा है पढ़िए? On page number 32, your lordships. देखो ये फिर हेल्डअप हो गया, क्या बात है? देखो तो पढ़ने में नहीं आ रहा वकील साहब। My type copy is also there, my lords. क्या लिखा है? प्रतिनियुक्ति विभाग द्वारा
प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ कर्मियों के विरुद्ध ना प्रतिनियुक्ति अवधि की ग्रेचुटी राशि कौन सी क्लॉज पढ़ रहे हैं आप? क्लॉज नंबर 16 योर लॉर्डशिप्स। प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ कर्मियों को की तिलन संघ से प्राप्त अंतिम वेतन प्रमाण पत्र में दर्शित समस्त प्रकार की व्यक्तिगत कटौतियों का संबंधित कर्मचारी के वेतन में कटौती कर प्रति माह तिलन संघ को डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भेजा जा सकेगा। Lordship, not this clause. Your lordships can turn to page number 32 if your lordships तो can. इसमें लिखा तो है प्रतिनियुक्ति अवधि की ग्रेचुटी राशि का भुगतान बाहर या नियोक्ता द्वारा किया जाए। बाहर नियोक्ता इज जुडिशियल अकेडमी। That they are denying it, my lords. लिखिएगा श्री आयुर जैन फॉर द पिटिशनर। Petitioner's contention is that petitioner is originally an employee of Madhya Pradesh State Cooperative Oil Seed Growers Federation Limited. Full stop. He was sent on deputation to the respondent number 3. Two. Full stop. As per the terms and conditions of the deputation as contained in Annexure P10 for the period of deputation, period of amount of gratuity is to be paid by the borrowing department, that is the National Judicial Academy. Full stop. Yet respondents are denying payment of gratuity. Full stop. Next paragraph. Once National Judicial Academy had accepted the terms and conditions of the deputation as contained in Annexure P10 and had taken the services of the petitioner, they are bound to pay the amount of gratuity for the period of their deputation, for the period of deputation of the petitioner. Accordingly, this petition is disposed of with the direction to the respondent number 2 to pay the amount of gratuity for the period of deputation of the petitioner within 60 days from today, along with 8% interest thereon. Lordship, just one point I have just wanted to mention. Till 2009, he was on deputation, and from 2009, he was on contract, and lien was retained by the original. वो सब उससे नहीं पता। For the period of deputation लिख दिया हमने। For period deputation कर दिया है, उतना ही आएगा, उतना ही मिलेगा आपको। Actually, Lordship, the only issue was that after 2009, he was working in NJ but on contract, but lien was retained by Oilfed. That's. सबसे I'll not go into that. चलिए। None for the petitioner. क्या है ये? इसको जॉइंट कॉपी भी अभी नहीं दिलाई है क्या? ये सस्पेंशन के अगेंस्ट पिटीशन है। सस्पेंशन के अगेंस्ट पिटीशन है। कौन से P4? ये कैसे पिटीशन मेंटेनेबल है? ये सिंधु नवयुवक समाज जी के खिलाफ कैसे पिटीशन मेंटेनेबल है? जी सर, P15 इज नहीं। हाँ, नन फॉर द पिटीशनर श्री MP respondent number 1, 2, 3 and 6. 1, 2, 3 and 6 श्री। ये क्या गवर्नमेंट एडेड स्कूल है क्या? ये गवर्नमेंट एडेड स्कूल है क्या? नहीं जी, गवर्नमेंट एडेड नहीं है। Rajab submits that this petition is not maintainable as the respondent number 6 school is not a government aided school. It does not receive any grant from the state. Full stop. Shri Vijay Kumar Shukla supports that that if an institution is not getting any grant from the state, then writ will not be maintainable. Petitioner's remedy lies somewhere else. Accordingly, this petition is disposed of with a direction to the petitioner to avail his remedy before the competent court of civil jurisdiction, as writ petition is not maintainable. Accordingly, WP is disposed of. बंद करके करिएगा। नंबर 71 Lordship, P10, Lordship. Lordship, P10, page number 172, Lordship. Lordship, my services has been, Lordship, terminated, Lordship. Let's say I am forced staff, Lordship, Home Guard, my Lord. Home Guard, Lordship, Arakshak, my Lord. सब Lordship, ट्रेडिंग P10, my Lord. लिखिएगा। जी। श्री, आपको शुभ नाम बताइए। प्रवीण सिंह। हैं? प्रवीण सिंह। Pramein acting for the petitioner.
Pleadings are complete. Petition is admitted for final hearing. सर नंबर नहीं आया सर सब आएगा, आप सर, सुन ले इसको सर आप सुनिए तो आप आइए तो फाइनल हियरिंग में आइए तो लिस्ट इन दी वीक कमेंसिंग 19 फरवरी 2024 सर इसका नंबर नहीं है सर सब आएगा। सर ये इंटरमीडिएट सर्विस मार लो हाँ ठीक है, मैं सभी फाइनल हियरिंग सुनता हूँ, आप तो आइएगा। चलिए सर आई एम रेडी सर सुनने के लिए सर हेलो सर प्रेजेंस फॉर रिस्पोंड हाँ, नंबर इनका गौरव सर सर सुन ले इसको सर इसका नंबर नहीं आया सर आपको दे दिया वीक कमेंसिंग में टॉप ऑफ द लिस्ट कर दीजिएगा। चलिए इन द लिस्ट ऑफ फाइनल हियरिंग। चलिए I think we asked 1 week time. हाँ 1 week time. काय के लिए क्या मैटर क्या बताइए तो थोड़ा। 1 वीक टाइम किस चीज के लिए चाहिए आपको? प्रिपरेशन के लिए हैं? प्रिपरेशन के लिए काय की प्रिपरेशन? इसमें इंक्लूड ऑर्डर आप तो टाइम ही लेते जा रहे हैं इसमें केस में 7/4/22 से। इंटरिम ऑर्डर कुछ है नहीं आपके पक्ष में? कुछ नहीं है सर हाँ मैरिट्स पर अभी तक सूट डिसाइड हो गया होगा आपका? नहीं अब कुछ नहीं हुआ चलिए तो अभी यहाँ डिसाइड कर देते हैं। सब पास ओवर कर नहीं पास ओवर नहीं होता वकील साहब। P6 पढ़िएगा। चलिए वादी द्वारा हनीफ खान अधिवक्ता, प्रतिवादी द्वारा इतना पेज नंबर 34 36। तो इसमें सीमांकन करवाने का आदेश दिया गया था जबकि विवादित स्थल घनी बस्ती का होने के कारण वहाँ सीमांकन खसरा नंबर के अनुसार होना संभव नहीं है। ठीक है आप सीमांकन करा लीजिए, आपको लिबर्टी दे देते हैं टू फाइल एन अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन फॉर डिमार्केशन ऑफ योर लैंड एंड प्रोड्यूस द एविडेंस बिफोर द ट्रायल कोर्ट। इतना कर देते हैं, इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं इसमें। लिखिएगा श्री शुभ नाम कमलेश कुमार मिश्रा फॉर द पिटिशनर, श्री संदीप कोष्टा Sandeep Kosta for the respondents. Respondent number 1. 1 and 2 1 and 2. This petition is filed being aggrieved of the order dated 26/3/2022 passed by learned Civil Judge Senior Division Damo in RCS number 138A/2019, whereby an application filed by the plaintiff under Order 26 Rule 9 CPC for appointment of commissioner has been rejected on the ground that such application, when the application under Order 39 Rule 1 and 2 is pending, is not maintainable for the purpose of collection of evidence. Full stop. Next para, Shri Kamlesh Kumar Mishra raised for withdrawal of this application, this petition with liberty to file a fresh application after decision on an application under Order 39 Rule 1 and 2 and start initiation of evidence of the plaintiff if the occasion so requires. In the meanwhile, he will be also free to move an appropriate application before the revenue authorities for demarcation of his land and use that demarcation report in evidence before the trial court. With the aforesaid liberty, petition is disposed of as withdrawn. I have moved an application for deleting the respondent number 6 to 8, मतलब IE number 3444820. क्या मैटर क्या है? Matter is pending before the high power committee for caste scrutiny committee का. अच्छा. और डिपार्टमेंट ने उसी व्यक्ति जिसने कंप्लेंट की Heard on IE 3448/22 an application for deleting names of respondent number 6 to 8. Same is allowed. Let necessary correction be carried out during the course of the day.
Pleadings are complete. Petition is admitted for final hearing. List for final hearing in Part B of the cause list as per its turn and seniority. IR to continue. IR to continue. List in the week commencing 5 फरवरी 2024. हो मिला. Even number 80. My reading is complete, my lord. My lord, link case, my lord, WP 739/2020. लिख दीजिए पर्ची पे श्री नायतना अंकित अग्निहोत्री. अंकित अग्निहोत्री. Ankit Agnihotri prays for listing of this case along with WP Naitna. List along with it Naitna. Even number 81, Shri Rahul Chaubey. Please, Your Lordship. My lord, I am making a request, my lord, if this case could be taken up day after tomorrow, my lord. क्या मैटर क्या है? My lord, matter is pertaining to transfer, my lord. This is a कहाँ ट्रांसफर हो गया आपका? my lord, from Sehore to Riva, my lord. जी जी. If my lord, since I am not prepared with the today, day after tomorrow, my lord. तो इंट्रीम ऑर्डर को फाइनल कर देते हैं, इनको लिबर्टी दे देते हैं. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्सीजेंसी still requires they may pass a fresh order. My lord, what has happened? This is the second round of litigation. In the first round of litigation, this court was pleased to dispose of the petition that while taking into consideration my seniority position vis-a-vis junior, the authorities were directed to decide my representation. The authorities have rejected. डिसाइड नहीं करने को कह रहे भाई, अब तो हम आपका ये ट्रांसफर ऑर्डर ही क्वेश्चन कर दे रहे हैं. With the consent of the parties, impugned transfer order dated 11/2/2022 and यही है ना ट्रांसफर ऑर्डर 11/2/2022. Yes, my lord. Annexure P9. P9 was stayed by a coordinate bench wide order dated 4/3/2022. Stay has continued for almost 2 years. Stay is made absolute. There is no application for vacation of stay on behalf of the respondents. Full stop. Impugned transfer order is hereby quashed with liberty in favor of the respondents to pass fresh orders as per the exigency of administration. Chali. Number 82, Timur Kumar Rajab. प्लीडिंग्स पूरी हो गई क्या? यस है जी. बड़े सारे रिप्लाईज को तो फिर फाइनली सुनेंगे सर. इशू बहुत छोटा सा है. ठीक है, सुनेंगे सर. Pleadings are complete. MAT petition is admitted for final hearing. List for final hearing in the week commencing 26 फरवरी 2024. With Malos' permission, may I crave indulgence? Malos, annexure P12 would also be required interference, Malos, because that is affirming the order of transfer after the direction of this honorable. P12 भी क्वेश्चन कर दीजिएगा. P9 and P12 वर स्टेट, ठीक है ना? आप ही ने लिखा था ना? हाँ, चलिए. Serial number 83. Sudha Gautam. Lordship, 4 weeks may be granted to file the rejoinder, Lordship. क्या रिजॉइंडर? आपका रिप्रेजेंटेशन डिसाइड कराना है रिस्पॉन्ड नंबर 3 के पास में. ठीक है, रिस्पॉन्ड नंबर 3 को बोलते हैं, डिसाइड करेगा आपका कंपल्सनेट अपॉइंटमेंट का. लिखिएगा. मिस सोनाली विश्वास लर्नेड, यही नाम है ना आपका? हाँ. फॉर द पिटिशनर प्रेज फॉर disposal of this petition with a direction to respondent number 3 to decide petitioner's pending application for grant of compassionate appointment. This innocuous prayer is not opposed. 15 दिन, 60 दिन. This court has not expressed any opinion on the merits of the case. Serial number 34. None for the petitioner. Pleadings are complete. Petition is admitted for final hearing. List for final hearing in Part B of the cause list as per its turn and seniority in the week commencing 11 March 2024.
Serial number 85. Gangaram Saket. None for the petitioner. With your lordship's permission, this case is identical to a bunch matter decided by this honorable court. I may have the liberty to pass the order. Central issue involved is whether part-time substaff appointed by the branch manager could seek a relief of regularization from this honorable court. Identical petitions were decided to the contrary and they were dismissed. None for the petitioner, श्री. ये क्या बैंक ऑफ ये कौन सा बैंक है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र. श्री V.S. Jha submits that identical issue was pending. Identical issue has been decided by a coordinate bench by the order dated 25th September 2023 in WP number 3133 of 2022 within bracket Amar Chauthel versus Bank of Maharashtra and others, wherein coordinate bench dismissed the petition, holding that court should not interfere with the policy decisions of the government in a routine manner unless policy is contrary to provisions of statutory rules or of the constitution. Full stop. It has also, full stop. Coordinate bench has also observed that since petitioner was holding the post of daily wager, which does not have any service conditions, therefore, court cannot interfere with the policy decision of respondents to outsource the manpower and accordingly dismiss the petition. Full stop. Since, according to Shri Jha, facts of the present case are identical, judgment rendered by coordinate bench on 25th September 23 in WP 3133/2022 shall apply mutatis mutandis to the facts of the present case. Petition is disposed of. May I make a prayer? Item number 84. I am just appealing for 1:30 बजे बताइएगा, अभी बैठ जाइए. I'm sorry. Most obliged. वो जजमेंट लेके रख लीजिए, उनको वापस मत करिए, फाइल में रखिएगा. My lord, I have filed some document, my lord. जी. Some documents has been filed for adjudication. क्या करना है आपको? डॉक्यूमेंट फाइल करना है. This may kindly be taken on record, my lord. Document number, my lord, IA number 5660/23 and Card on IA number may kindly be taken on 5660/23 and 18140/23 as not opposed by Shri Atul Dwivedi appearing for the state. IAs are allowed, documents are taken on record. Reply आ गया, नहीं आया अभी? Pleadings are complete, my lord. Pleadings are complete. List for final hearing. Petition is admitted for final hearing. List for final hearing in the week commencing 5 फरवरी 2024. Top of the list. चलिए. Number 87. My lord, by way of this petition, petitioner is challenging the impugned order that is an Annexure P1 and P3, lordship. By which the recovery proceedings have been. जवाब आ गया, नहीं आया? Lordship, जवाब आ गए. हैं? आ गए हैं सर, जवाब आ गए. अच्छा. Pleadings are complete. वही admit कर लीजिए, लगा दीजिए इसको. Any fixed date में? हाँ, दे रहे ना. 19 फरवरी 2024. चलिए. Serial number My lord, in this case, the petitioner challenging the Annexure P1 by which the appeal authority dismissed the appeal filed by the petitioner. This is Annexure P1, my lord, on the ground of delay. अच्छा. Who has dismissed the appeal? Managing Director. कहाँ है वो annexure? P1, page number 14. कितने दिन की डिले थी? इनफैक्ट मतलब 2 वर्ष 2 माह का. यस. कहाँ प्रावधान है डिले कंडोन करने का? मंडी एक्ट में बताइएगा. इनफैक्ट मेरठ की. अरे इनफैक्ट नहीं, आप तो मंडी एक्ट में प्रावधान बताइए डिले कंडोन करने का. कहाँ प्रावधान है? लाए मंडी एक्ट नहीं लाए.
Shri Ajit Kumar Singh is not prepared with the case when he is asked to show from the Mandi Act that there is a provision for condonation of delay while hearing appeal by the managing director commissioner. He prays for time to prepare and argue this case. On his request, case is adjourned list after 3 weeks. May I make a prayer? हाँ जी बताइए. With humble request. In item number 84. इनका नाम डाल Just दीजिए. praying for presence of. डाल दीजिए. For respondent 7 to 13. Private. Please mark my previous order. 84 में 7 to 13. 14 में इनका नाम डाल दीजिएगा अनूप कुमार जी का. My lord, I am praying for item number 76. हाँ. My lord, wherein I am not attend this case. क्या कर रहे? My lord, I have filed rejoinder through online, which is PID number 636. आपको टाइम से आना चाहिए था वकील साहब. अब आप So, my humble apologize, my lord. इनका नाम डाल दीजिए, बस नाम डाल देते हैं. My lord, वो आपका शुभ नाम बताइएगा. चंद्रकांत मगरदेव. लेटर ऑन करके चंद्रकांत मगरदेव का नाम डाल दीजिए. My lord, इसमें रिजॉइंडर पेश किया है ऑनलाइन, मगर उसकी PID जनरेट हो गई थी हमारे. क्या होगा आपने? वो जाके वहाँ रजिस्ट्रार जनरल को बताइए. सर वो आपने डिस्पोज ऑफ कर. हाँ ठीक है, क्या करेंगे? मेंटेनेबल ही नहीं है पिटीशन. आप लोग कुछ भी पिटीशन लगाएंगे, आपको लिबर्टी दी है सिविल सूट फाइल करने की. ठीक है. Deeply obliged. One four.
तो है तुमको फाइल फाइल देखो ना 29 से तो देख रहा हूँ मैं आगे भी हो सकती है देखो ना लिस्ट देखो लिस्ट देखो SEC. क्या
अभी आईसाइट क्या है अभी? चल
मैंने एक भी फाइल नहीं पढ़ी है, टेंशन नहीं है। Your Lordship, may I make a prayer? Please बताइए. I tender my unconditional apology, Your Lordship, when my matter, item number 81 was called. I could not make it before Your Lordship. Actually, I was on the way, Your Lordship. I was coming from CAT, Your Lordship. And when I came, my Lord, to this court, I was informed that already my matter had been disposed of, Your Lordship. Kindly, my presence may be marked. हाँ कर देंगे, लिख दीजिए. Presence may be marked. श्री संजय लाल for respondent number 2. Yes. मतलब आइटम नंबर 9 9 उसमें असिस्टिंग काउंसिल नहीं है, 11 के बाद कभी ये रख दीजिए. सर ये तो मैं पहली बार ट्रेंड देख रहा हूँ कि सीनियर बता रहे हैं कि असिस्टिंग काउंसिल नहीं है, किसी जूनियर को भेज देते. अब हमें बता देते, हम आपको दिलवा देते कोई जूनियर. नहीं हमें बड़ा ऑड लग रहा है. इट इज अगेंस्ट योर डिग्निटी. इट इज, आप इतने वरिष्ठ हैं, सीनियर को आगे बोलना पड़ेगा असिस्टिंग काउंसिल नहीं है. I'll make a request. हाँ I'll make a request, maybe taken about. हाँ ठीक. आइटम नंबर 9 में लिखिएगा, श्री प्रवीण दुबे, लर्नेड काउंसिल फॉर द respondent submits that arguing counsel has prayed for time. On his request, case is adjourned list next week. Lordship, item सर अगली बार से इतना कर लीजिए, सब जो है ना कोई मना नहीं करेगा आपको. नहीं ठीक है. नहीं सर. Lordship, item number 75, respondent number 2 की तरफ से मैं प्रेजेंट मार्क later on करके डाल. सर आफ्टर 8 करते हैं. After 8, my lord. Can be after 8. अच्छा तो नेक्स्ट, अच्छा ठीक है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक कर दीजिए. वीक कवरिंग 15 जनवरी कर दीजिए. चलिए 75 में इनका नाम डाल देना. लॉर्डशिप, आइटम नंबर 84 में स्लिप हो गया लॉर्डशिप. क्या स्लिप हो गया? मैं पहुंच नहीं पाया लॉर्डशिप. कोई बात नहीं, तो कुछ किया थोड़ा ना, केस बढ़ा दिया है. जी. हाँ, लेटर ऑन योगेश सिंह बघेल नाम डाल दीजिए 84 में. चलिए You know, the petitioner, जी. there is an order already to produce the report, committee, selection committee report. जी. Order dated 17 to रिकॉर्ड है आपके पास में? नो लॉर्डशिप, एक्चुअली 17/4 को कॉल हुआ था. फिर हमने एक्सटेंशन की एप्लीकेशन लगाई थी, तो उसमें 19/6 का ऑर्डर शीट देखेंगे लॉर्डशिप. उसके बाद फिर 2 बार लगा तो पिटिशनर ने बढ़वाया केस को. लास्ट डेट में पिटिशनर के बढ़वाने से रिकॉर्ड नहीं आएगा, ऐसा नहीं. फिर 5/10 को इनका स्टे भी वैकेट हो गया. तो रिकॉर्ड हम बुलवा लेते हैं. सिलेक्शन कमेटी का रिकॉर्ड बुलवाना है. लिखिएगा, श्री अमित शर्मा prays for time to call for the record of the selection committee. Let record be positively called for on or before next date. Let matter continue within 6 days. My lord, it may be because in my absence I was not well. It was vacated. हाँ. So they are proceeding since last. तो अगले हफ्ते ही तो रख रहा हूँ मैं. जी. अगले हफ्ते ही तो रख रहा हूँ मैटर को. Obliged. क्या लिखा? Within 6 days from today. The matter will be taken up on 11th January 2024. Your Lord. It is made clear that if record is not called, then this court may be constrained to take
appropriate action against the delinquent officers. Your Lordship. But in this petition, the petitioner is challenging the two orders. That is, one is order annexure P14, dated 12/11/2010, page 31, whereby he was placed under suspension. Yes. And further, I am challenging the order annexure P16, that is at page 36. There is a charge sheet, sir. The case is like this, sir. Petitioner was initially appointed as assistant grade 3 on 6/3/1990 by order annexure P1, sir. Thereafter, on 6/12/1990, that is annexure P2 at page 15, letter was written by the director to absorb the petitioner at Jabalpur. And while order annexure P3, that is at page 16, petitioner was absorbed on the vacant post of assistant grade 3 LDC at Narsinghpur. Did you file any appeal against the order of suspension P14? Yes, I submitted the appeal, but that has not been decided. Where is the appeal? Memo of appeal? That appeal is annexure P15 at page 32. कंप्यूटर से बहस करिए, पेज कंप्यूटर के बताइए, इंडेक्स कंप्यूटर से देखिए. Where is the acknowledgement of this appeal? Page number? That is at page 32, sir. Acknowledgement. You say you have filed an appeal. उसके bottom में है, sir. Bottom में acknowledgement कहाँ है? ये आवाक लिपिक संचालय स्वास्थ्य सेवाएं सतपुरा भवन भोपाल. क्या पेज 32 पर? जी सर. अच्छा, 18/11/2010 को दिया आपने. जी सर. Now because जी. Now what my point is, my lord, because one unknown person has made a complaint against me in respect to my appointment, and that has already been inquired by the authorities. That I have filed with my rejoinder and also with annexure P5 onwards, sir. Stay है क्या यहाँ से? नहीं, stay नहीं है सर. इसमें डायरेक्शन ये था. Inquiry में क्या हुआ? They may proceed with the inquiry. They have already, in fact, submitted the inquiry report before this honorable court. They have not called me. They ex parte, they have recorded the statement of witnesses. After recording the statement of witnesses, they gave me an application to appear before the authority. Thereafter, I appeared before the authority. I submitted the representation that I was not called for the cross-examination of the witnesses. And thereafter, I was all these orders are there, but I am not challenging those orders because they are not subject matter of this writ petition. All those are subsequent events. I am challenging, my lord, on the point of what is the state of Madhya Pradesh versus Bani Singh, sir. That here in this case, the charge sheet was issued after lapse of 20 years. So what my respectful submission is that the charge sheet should be quashed. This is one ground. Another ground is that in an earlier occasion also they already investigated into this matter, and after investigation they closed the complaint. That documents I have filed. If Lordship will say, then I will refer those documents, sir. So P5, P6, P7 ये सब हमने लगाए हैं सर. पहले भी उन्होंने सब पूरी इंक्वायरी की है और उसके बाद इसको क्लोज किया है. उसके रिजॉइंडर के साथ मैंने भी डॉक्यूमेंट लगाए सर. इसमें 20 लोगों के बयान हुए हैं. एक मिनट रुक जाइए. Where is the record of the departmental inquiry? Mr. Sharma. Your Lordship. कहाँ है इंक्वायरी का रिकॉर्ड? इनका मेन एलिगेशन ये है कि आपने एक्सपर्टी इंक्वायरी कर ली. नहीं, हमारा जो एडिशनल रिटर्न है उसमें हमने नोटिसेस लगाए हैं. वी हैव सेंड एंड नोटिसेस हैव बीन रिसीव्ड बाय द पिटिशनर. अच्छा, हमारा एडिशनल रिटर्न देखेंगे सर. हाँ बताइएगा.
एडिशनल रिटर्न है आई नंबर 1250/16। जी। इसमें जो लास्ट पैरा है जी, इसका पेज नंबर 4 है, R16 है साहब, मैं पढ़ देता हूँ। R16 पेज नंबर। हाँ हाँ। R16 इनको नोटिसेस हैं जो इन्होंने ड्यूली रिसीव किए हैं, बट ही चोज टू नॉट टू अपीयर बिफोर द अथॉरिटी एंड टू प्रोड्यूस एनी डिफेंस or evidence or any document on his behalf, then we have proceeded ex parte. R16 is the, मैं पढ़ देता हूँ। जी पढ़िएगा प्लीज। The petitioner was informed in writing to appear in person or through representatives to produce evidence in his support, to produce documents to prove his case. And on 25/4/11 was date given white communication dated 23/4/2011, and same was duly received by petitioner. But petitioner, as per rules 1966, was duty bound to appear, but in spite of repeated intimation, failed to appear in inquiry authority as per rule 20 of rules 1966. Had to proceed ex parte. Copies of few notices dated 20/4/2011, 23/4/2011, 13/5/2011 sent to petitioner to attend inquiry filed collectively R16. सर R16 में देख लें सर। R16 में पढ़ देता हूँ। R16 इसके एडिशनल रिटर्न के पेज नंबर 39 से। R16 ये पहला है 20/4/2011। विभागीय जांच में बयान हेतु उपस्थित होने बाबत उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि आपके विरुद्ध विभागीय जांच संधारित की गई है। आप अपने बयान हेतु दिनांक 21/4/2011 को दोपहर 2 बजे अधो हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित हो गए। देन नेक्स्ट पेज, डेट आ रही है 23/4/2011। विषय विभागीय जांच के संबंध में दिनांक 25/4/2011 को उपस्थित होने बाबत अंतिम अवसर। इस कार्यालय संदर्भ, इस कार्यालय का पत्र क्रमांक स्वयं। उपरोक्त विषय अंतर्गत आपको संदर्भित पत्र के अनुसार आपके विरुद्ध संस्थापित विभागीय जांच में दिनांक 21/4/2011 उपस्थित होकर अपने बचाव में बयान, साक्ष्य व प्रमाण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, किंतु आप उपस्थित नहीं हुए और ना ही अपनी अनुपस्थिति के कारण इस कार्यालय को अवगत कराया गया। अतः आपको इस पत्र के माध्यम से अंतिम अवसर प्रदान करते हुए निर्देशित किया जाता है कि आप दिनांक 25/4/2011 को दोपहर 12 बजे इस कार्यालय के IPP6 प्रशिक्षण केंद्र में मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपने बयान दर्ज कराएं। साथ ही अपने बचाव में आपके पास अपनी नियुक्ति के संबंध में जो साक्ष्य एवं प्रमाण उपलब्ध हो उन्हें मूल रूप से प्रस्तुत करें। इस पत्र के माध्यम से अपने बचाव में उपस्थित बयान, साक्ष्य या प्रमाण प्रस्तुत करने हेतु आपको यह अंतिम अवसर दिया जा रहा है। निर्धारित तिथि को उपस्थित न होने की दशा में यह मान लिया जाएगा कि आपको अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है। साथ ही आपके पास मूल रूप से कोई पर्याप्त साक्ष्य या प्रमाण उपलब्ध नहीं है। तदनुसार प्रकरण में अंतिम कार्रवाई हेतु निर्णय। दिस इज इम्पोर्टेंट योर लॉर्डशिप। इन्होंने कोई साक्ष्य, कोई प्रमाण नहीं दिया, कोई ज्वाइनिंग लेटर नहीं, कुछ नहीं। अब फिर नेक्स्ट पेज आता है साहब 13/5/2011। ये फिर ये है विषय श्री RN कुशवाहा निलंबित लिपिक की विभागीय जांच के अंतर्गत लिए गए गवाहों के बयान के प्रति परीक्षण हेतु। फिर इनको ये दिया इस कार्यालय द्वारा जारी पत्र क्रमांक सो सर प्लीज लेट हिम कंप्लीट फर्स्ट। दिनांक 12/10/2010 विषय अंतर्गत प्रति परीक्षण हेतु कृपया इस कार्यालय में दिनांक 23/5/2011 को आवश्यक रूप से उपस्थित होने का कष्ट करें ताकि प्रकरण की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में और अधिक विलंब ना हो। He again called for to cross-examine the witnesses, but he again chose to not to appear. Then next, these are the notices, your lordship. So it cannot be said that no intimation has been said to the petitioner behind the back the inquiry was conducted. This is not the case. Even the petitioner not till date not produced any document in support of his claim.
Then, Your Lordship, It's 55. जी, और इनका जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर साहब फर्स्ट पाया गया है, तो वो एक सुरेश कुमार पटेल के साथ पाया गया। तो सुरेश कुमार पटेल को भी नोटिस दिया कि मैं रिलेवेंट पढ़ता हूँ, दी अदर एम्प्लॉय मिस्टर सुरेश कुमार पटेल अपॉइंटेड। ये हमारा जो एडिशनल रिटर्न है जी, उसी का पैरा 6 में आया है। पैरा 6 में जी, R12 के साथ ये R18 अगर लगा हुआ था वही। जी, R12 हमने लगाया है। पेज नंबर R12 देखना है, पेज नंबर R12 देखना है। पेज नंबर क्या है? R12 R12 पेज 24 है हमारे एडिशनल रिटर्न के साथ। जी, R1 हमने 2 ऑर्डर फाइल किए हुए हैं। एक मिनट, एक जो फर्स्ट ऑर्डर है तो सुरेश कुमार, एक्चुअल अपॉइंटमेंट सुरेश कुमार पटेल को दिया गया था। तो ये सुरेश कुमार पटेल से भी हमने वेरीफाई करने के लिए कि आप दस्तावेज उपलब्ध कराइए, उन्होंने उपलब्ध कराए जो वेरीफाई किए। R12 है, मैं पढ़ता हूँ R12 से, ये 28/2/2011। सुरेश कुमार पटेल, लैब सहायक, जिला चिकित्सा सहायक, कटनी। विषय: श्री राम नरेश कुशवाहा सहायक ग्रेड 3 के विरुद्ध विभागीय जांच में साक्ष्य हेतु उपस्थित होने के संबंध में उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा श्री राम नरेश कुशवाहा सहायक ग्रेड 3 निलंबित, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं अधिकारी, जिला नरसिंहपुर की विभागीय जांच में आपका नाम साक्ष्य सूची में होने के कारण बयान देने आप दिनांक 3/3/2011 को दोपहर 12 बजे IPP 6 जिला प्रशिक्षण केंद्र, जिला नरसिंहपुर में उपस्थित हो गए। ये उपस्थित होके इन्होंने अपने दस्तावेज प्रस्तुत किए जिनको वेरीफाई किया। जी, टोटल केस ये है सर कि फर्जी नियुक्ति पत्र, फर्जी नियुक्ति प्रमाण पटेल साहब की जो नियुक्ति है उसके आधार पर इन्होंने, अब ये कह रहे हैं हम मंडला रहे, मंडला में इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, हमने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए अथॉरिटीज के। अपॉइंटमेंट ऑर्डर दिखाइएगा। Annexure P1, sir. P1 देखते हैं। So, as far as what my learned friend has said, if Lordship may permit me, as far as the inquiry is concerned. नहीं, I will come to it. Let us see your appointment order. जी, उप सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भोपाल के पद लिखने के निर्माण साथ निम्नलिखित नियुक्ति आदेश। ये मंडला का आदेश है P1। ये मंडला का आदेश है। एक सेकंड जी, ये जो इसमें राज्य शासन के आदेश का उप सचिव लोक स्वास्थ्य
एवं परिवार कल्याण विभाग भोपाल के जो आदेश का नंबर दिया 5696, दिनांक क्या है ये 20/10/1989 एवं संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक इतना इतना। इनको देखा आपने इन पत्रों में क्या लिखा है? नहीं, आप लोग बेसिक, लेकिन ये जो बेसिक ऑर्डर है ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये तो ठीक है, आपकी बात सुन ली। ये दोनों पत्र भी तो निकाल के लाइए, जरा देखें तो समझे तो इन पत्रों में क्या लिखा है, किसकी नियुक्ति के संबंध में है ये पत्र। सर ठीक है, और तत्कालिक जो मुख्य, मैं एक चीज बोल दूं, तत्कालिक जो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी थे मंडला, जिनके ये साइंड है, उनका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया है। वो ठीक है, आपने सब ठीक किया है। हम तो ये दोनों पत्र तो दिखा दीजिए, इनमें किस किस के नाम का जिक्र है। सर ले आते हैं उसको। लेके आना ही पड़ेगा जी। अगर उसमें इनके नाम का जिक्र हुआ तो थिंग्स विल बी डिफरेंट। उसमें भी इनके नाम का जिक्र नहीं हुआ तो ये प्राइमा फेसी एस्टेब्लिश हो जाएगा कि ये P1 फॉल्ट है। सर ये रेफरेंस का करस्पॉन्डेंस है मेरे पास, अगर आप लॉर्डशिप परमिट नहीं दिखाइएगा 5696 दिखाइएगा 20/10/1989 का। बोलते नियम 20 में एक्सपार्टी किया, नियम 20 में एक्सपार्टी का कहाँ प्रावधान है? नहीं सर, इन्होंने एक्सपार्टी भी नहीं किया है। अगर मेरा एक निवेदन है, जरा आप इन्हीं के रिकॉर्ड को देख लें। पहले ये दो दस्तावेज तो देख लें, फिर उसके बाद में आगे की बात करेंगे। इन्होंने इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट किया। अरे सब भूल जाइए, बिहाइंड माय बैक। अरे पहले तो इन्होंने मैं बताना चाह रहा हूँ, इन्होंने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए बिहाइंड माय बैक। देयर आफ्टर recording of all the evidence, they called me for giving the defense witness. So I appeared. I submitted the representation that you have examined all the witnesses behind my back, and now you are saying that I should cross-examine them. कुछ बना के लाए आप, डेट्स बताइए किस किस तारीख को इन्होंने विटनेस के एग्जामिन किया। सर इन्हीं ने बना के लगाया सर, आप उसी में इनकी इसमें ही देख लीजिए। पहले तो इसका जवाब दीजिए, पहले ये P1 का जवाब दीजिए। आपके पास है तो इसको सुने आगे, नहीं तो फिर इसको बढ़ाएं। बुला लीजिए सर इनके, मेरे इसका मैंने आई हैव सीन। आप ही फाइल कर दीजिए, आपको टाइम दे देते हैं। लिखिएगा श्री इनसे बुला लीजिए, ये तो हमारे सारे दस्तावेज को फर्जी कह रहे हैं सर। नहीं, आप पेश कर दीजिएगा उस पे एक मैं प्रेस फॉर फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, नेमली लेटर नंबर 5696 dated 20/10/89 issued by Deputy Secretary Public Health and Family Welfare Bhopal. So also letter number dated 8/11, सॉरी क्या डेट क्या है इसकी, डेटेड 30/8/1989 issued by Joint Director Health Services Bhopal to point out that name of the petitioner was recommended for appointment in the pay scale of rupees 870-220-910-25-1000-1030-1220-40-1420. Let said documents be filed by the petitioner. In the meanwhile, respondents will also call for the original file in which these orders were issued. Let this be done within 2 weeks, list immediately thereafter. Chaliye Lord. The order of the industrial tribunal is under challenge, Your Lordship. आपने reinstate कर लिया था इसको? No, my lord, he had expired, my lord. He was on probation during the probation अब period. क्या होगा इसमें, बचा क्या है? होगा तो कुछ नहीं सर। देखिएगा, this petition is filed by the General Manager West Zone Sales HPCL, being aggrieved of the order dated The order of the tribunal is for 30/8/2000 passed by London's Central Government Industrial Tribunal Jabalpur
in case number CGIT/LC/R/35/91, whereby learned tribunal rejected an application for setting aside the ex parte award in Annexure P1 dated 23/7/99, full stop. Next para. Shri Nair submits that respondent workman is no more. Full stop. Brief facts of the case are that claimant Shri G. Bala Subramanian Iyer had filed a dispute to the effect that whether action of the management of Hindustan Petroleum Corporation Limited in terminating the services of the petitioner who was working as a stenographer with effect from 6/7/1989 is justified, and if not, what relief Shri G. Bala Subramanian Iyer was entitled to. Next para. Case of the management was that workmen had secured appointment by submitting false documents. Full stop. Management remained absent on 12/8/98, 22/10/98 and 22/1/99. Full stop. Workman had filed his affidavit on 12/8/98. Management was proceeded ex parte on 22/10/98. Management had not moved any application for setting aside the ex parte order. That was filed. But subsequently, Okay. Ex parte order till declare ex parte order directing to proceed ex parte against the management. Full stop. Based on these facts and accepting the evidence led by the workmen, learned tribunal directed for reinstatement of the workmen with payment of wages from the date of award. Full stop. Next para. Against this award, an application was filed for setting aside the ex parte award. Full stop. This application was filed on date क्या है इसकी? It was filed on 17/11/99, my lord. 17/11/1999. Annexure P22, my lord. Annexure P22. It's not. That is after कितने साल बाद? Yes, sir. Award is of, my lord, 23rd of July 99. So after a period of After a period of 4 months. 4 months. 4 months. P22 is on page number? My lord, it's page number 74 in the file. Probably it's not scanned, my lord. Record दिखाइएगा. Scan नहीं है, sir. ठीक है. P7 तक scan है. On the ground that management had engaged one Shri B.P. Gupta as their advocate to appear before the tribunal. On the ground that management had engaged one Shri B.P. Gupta as their advocate to appear before the tribunal. Shri Gupta was appearing from the beginning, that is from 1991 onwards. Management was under impression that Shri Gupta will be appearing and taking necessary steps to defend the case. However, Shri Gupta, being resident at Jabalpur, did not appear before the court on Bhopal camp on 8/5/98 and on subsequent dates. Since management had no information, it was unable to appear personally, and therefore a prayer was made to set aside the ex parte award after recalling the order and give an opportunity of hearing to the management. Next para. Annexure P2 is the order by which your ex parte has Yes, been. my lord, that is the order. This application was dismissed by the learned CJIT
by order annexed dated P2 is order dated 3/8/2001. 30th August 2000 on the ground that application was not filed for consideration within the prescribed time limit. Management failed to file an affidavit for condonation of delay duly supported with an affidavit. No sufficient cause was shown to condone the delay. Full stop. On perusal of these aspects and the fact that no document has been brought on record by the management along with its written statement to show that the workman had obtained appointment on the post of a stenographer on the basis of forged documents, and taking this fact into consideration that he was appointed as a stenographer after interview which was conducted on 12/5/81 and thereafter he was appointed and confirmed on the post of stenographer on 20/11/81 and then show cause notice was issued to him on 15/7/89 alleging that he had obtained a forged certificate and also taking this fact into consideration that management did not lead any evidence to prove the so-called certificate to be forged, there is no illegality in the impugned orders calling for interference at this distance of time, especially when the workman is no more and only monetary benefits are to be transferred to the workman in terms of the impugned award. Full stop. Thus, taking a humanistic approach of the matter, petition for two grounds, namely there being no material to prove that to prove to the contrary what has been mentioned in the order annexure P2 and also there being no material that workman had obtained appointment on the basis of full documents, petition fails and is dismissed. Just one submission. Documents are there and we have filed जो इनका character जो इनने कहा था experience certificate. We had done for verification and we have received he had never worked. कहाँ है वो? P11, P12 मालूम they are there. तो आपने यहाँ फाइल किए ना? नहीं ट्राइब्यूनल में. ट्राइब्यूनल में कब किए थे? बस ट्राइब्यूनल में दिखा दीजिए. ट्राइब्यूनल का ट्राइब्यूनल के रिकॉर्ड में दिखा दीजिए. अगर है तो बहुत अच्छी बात है. So I'll have to change it. If your lordship has the record of the tribunal, our WS page 7 of our WS. Just a minute. ट्राइब्यूनल का रिकॉर्ड कौन सा? वो वाला है? हैं? क्या बात कर रहे हैं? नीचे क्या है ये? उसको there being no this thing की जगह का देना no evidence being led before the tribunal to prove the documents in support of management's contention. Petition fails and is dismissed. ठीक? Serial number 4. Serial number 4. Shri Ram Prakash Patel, Shri Manish Kumar Soni. Matter pertains to dismissal from service, my lord. कुछ बचा क्या इतने साल बाद? Yes, है? बचा है तो बताइए जी. हाँ? किस ग्राउंड पे डिसमिसल है इनका? जी 5 चार्जेस इम्पोज हुए थे, my lord. हाँ. 5 में से 2 प्रूव हुए और 1 पार्शली प्रूव और 2 नॉट प्रूव, my lord. जी. एलिगेशन ये था कि ही कंज्यूम लीकर ड्यूरिंग ड्यूटी पीरियड और एक अपने कलीग पे इन्होंने राइफल तानी. जी. इसके बाद कुछ बचता है क्या? सर कंजम्पशन का तो प्रूफ नहीं हुआ था. हाँ, लेकिन राइफल तानने इनफैक्ट राइफल का भी जो इन्होंने जो ओपिनियन दी है
उस पे भी जो एविडेंस जो लीड किया है प्रोसिक्यूशन ने, वो भी सर करेक्ट इन्होंने उसका एप्रिसिएशन नहीं किया सर। इनफैक्ट यदि इम्प्यून ऑर्डर इटसेल्फ शोज माय लॉर्ड कि जो चार्ज नंबर 2 था शराब सेवन का, जी, उसको उन्होंने नहीं माना, लेकिन मेरे जो एक्स्ट्रा जो कन्फेशन था उसको उन्होंने ये बोला कि नहीं, इसने कंडीशनल उस पे चूंकि इसने एक्सेप्ट किया था इसलिए इसको प्रूफ माना जाता है। चार्ज नंबर 3 के बारे में क्या कहा? चार्ज नंबर 3 मतलब पार्शली प्रूव है। पार्शली प्रूव्ड है ना? जी सर। इसकी एविडेंस हुई है सागरमल की? सागरमल की हुई है सर। है? जी सर। पढ़िएगा सागरमल की एविडेंस पढ़िएगा। आई डोंट हैव हिज स्टेटमेंट मतलब, बिकॉज उन्होंने मुझे कॉपी भी सप्लाई नहीं की थी। मैंने अपील में भी ये ग्राउंड लिए थे सर। अब अपियर हुए थे इंक्वायरी में सर? हुए थे नहीं हुए थे? जी सर, हुआ था मैम। यस मैडम, आपके पास है इंक्वायरी रिपोर्ट? My lord, I have filing application for exemption from filing departmental inquiry report that is missing, my lord. It was in 2002. It was given to the then senior standing counsel, my lord. जी? It was given to my predecessor, my lord, in the year of 2002, the departmental inquiry report. जी. And thereafter, my lord, it was never returned back. We made many communication, my lord. And he says, I have given to Dharmen Sarmaji. Dharmen Sarmaji says that I have given to RL. What does he say? Yes, my lord. कहाँ पढ़ रही हैं? क्या है वो? मैं सर मैंने जो एप्लीकेशन फाइल किया है, हाँ, उस एप्लीकेशन देख लिया, उसमें क्या लिखा है? पेज 23 अगर देखें सर। पेज 23 of the application. Yes, my lord. This is the letter which was paragraph 2, my lord. Just a minute. Page 23. Yes, paragraph 2, brief history of the case, paragraph comments on WP along with relevant documents as well as D नहीं file in कहाँ पढ़ रही हैं आप? पेज नंबर 23, my lord, of the application. हाँ, पेज नंबर 23 of the application. Paragraph 3, my lord. हाँ. Brief history of the case, paragraph comments. मैडम आपने यहाँ तो पेज 23 पर brief history. Subject case is fixed for hearing on 19/3/2002. ये कोई सीपी शर्मा डिप्टी रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर जबलपुर को लिखा हुआ लेटर है ये? यस सर, उस समय ऐसे ही लिखा जाता था। लिखा जाता होगा। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द केस, Yes. पैरावाइज कमेंट्स ऑन डब्ल्यूपी along with relevant documents as well as DPR file in the original and photocopy of WP are enclosed herewith for preparation of DCA from the concerned advocate. फिर क्या हुआ? Thereafter, it was never returned back, my lord. Who was that counsel? Yes, my lord. Who was that counsel? When we wrote letter to him, my lord, he said कि he supplied all the documents, all the files to just Mr. Dharmen Sharma ji. And then we contacted Dharmen Sharma ji. He said कि I have given all the files to RL Gupta ji. The inquiry report has been filed by the petitioner, my lord. My lord, may permit me, I'll read the finding of the inquiry officer, my lord. फाइंडिंग तो ठीक है, उसका स्टेटमेंट कहाँ है सागरमल का? वो थोड़ा ना दिया था आपने। My lord, अगर मुझे आप परमिशन दे इंक्वायरी रिपोर्ट पढ़ने की, my lord, the inquiry officer has mentioned the इंक्वायरी रिपोर्ट इज एनेक्चर Is page P5, my lord. P5. P5. Yes, ma'am. At page 20. It start from page 28. 28, yes. मुझे पढ़िएगा। नंबर 1 से पढ़ रही हूँ। माह मई 1996 में विजय सिंह को इस समूह केंद्र के अन्य कार्मिकों के साथ जम्मू कश्मीर चुनाव संबंधी ड्यूटी के लिए जम्मू भेजा गया था। चुनाव ड्यूटी के उपरांत दिनांक 17/5/98 को आरोपी इस समूह केंद्र के अन्य कार्मिकों के साथ नीमच वापसी के लिए जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर एकत्रित हुआ था। तमाम प्रोसिक्यूशन गवाहों के बयान, आरोपी ने जांच की प्राथमिकता प्रक्रिया के दौरान पूछे जाने पर उसके द्वारा किए गए तमाम अपराधों को आरोप पत्र के अनुसार सही माना है
और उसके द्वारा शराब के नशे में किए गए तमाम अपराधों को कबूल भी किया है। आरोपी से की गई प्रारंभिक पूछताछ दिनांक 13/9/96। आरोपी ने 17/5/98 को जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर अवधिकृत रूप से शराब का सेवन किया। सेवन की वजह से उसे काफी नशा हो गया था। तमाम के बयान में डॉक्टरी जांच रिपोर्ट, शराब के नशे में आरोपी ने अपने मुंह से अनर्गल शब्द निकाले, अपने से सीनियर अधिकारियों के प्रति अपशब्द का प्रयोग किया। यह भी कहा कि किसी को जान से मारूंगा। गवाह 2, 3 एवं 8 के बयान। आरोपी 17/5/98 को रात्रि 10 बजे के आसपास अन्य कार्मिक सागरमल से कहा सुनी हुई। उसके उपरांत आरोपी अपनी यस कुछ चाहता है क्या, या सिर्फ इसको इतना खत्म करना है कि दिस रिट्रेंचमेंट और टर्मिनेशन विल नॉट कम इन वे ऑफ हिज फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट। आज यस 24 साल तो हो गए। यस सर 24 साल बाद तो वैसे ओवर एज हो गया पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए। राइट नाउ ही अटेनिंग 56। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो यस यस सर, मैं उससे पूछ लेता हूँ। पूछ के कब बताएंगे? कल ही बताऊँ। हाँ कल बताइए, क्योंकि रीइंस्टेटमेंट तो मुश्किल लग रहा है। जी हाँ, इसका एक्ट भी थोड़ा सा। हाँ इसीलिए जी मैं कल बता। हाँ कल बताइए। कल के हाँ What had happened, my lord, this petition WP 6572 of 2001 was disposed of on 16/1/23. On the statement so made by the petitioner counsel that the settlement has been arrived at between the parties. My lord, and my petition was also rendered infructuous, my lord, because we had also challenged the award of the arbitrator, my lord. That petition on the basis of the statement, my lord, I said, my lord, that since the settlement has been arrived at, therefore this petition is rendered infructuous. Now, my lord, on 22/6/2023, my lord, that order was recalled, my lord. So far as it relates to petitioner number 4, Ramdayal Sharma, my lord. Okay. Now, my lord, my petition, I was not aware, my lord. We have also challenged the award of the arbitrator, my lord, in writ petition 2999 of 2002, my lord. So that some time may be given to me, my lord, to file a appropriate application, my lord, in writ petition number 2999 of 2002, my lord. 2999 तो लगी नहीं है आज। वो तो रेंडर्ड इनफ्रक्चुअस हो गई ना सर। आज जो एप्लीकेशन लगी है तो उसमें लगाइएगा, उसको रिस्टोर कराइएगा। हाँ तो सर वो अगर तो ये दोनों एक क्लब हो जाएंगे तो विड्रॉल की एप्लीकेशन लगी हुई है ना भाई। ये रामदयाल शर्मा की जो पिटीशन है, एप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑफ पिटीशन नंबर 2 and 5 नेमली बालेश्वर सिंह एंड राम नारायण, ये इन्होंने तो ये विड्रॉ वो सेटलमेंट हो गया उनका। हाँ, सबका हो गया। हाँ इसमें कितने पिटीशनर एक्सेप्ट नंबर 4 देयर आर 5 petitioners, my lord. इसमें 5 petitioner 5 petitioners है, 4 have settled the matter. हाँ एक्सेप्ट नंबर 4। आप भी क्यों नहीं कर लेते? ये इनको बोल, हम तो रेडी हैं। लॉर्डशिप एक और पिटीशन है, ये 5 पिटीशंस थी लिंक पिटीशन लॉर्डशिप। एक और पिटीशन जिसमें अरविंद श्रीवास्तव साहब ने भी रिव्यू फाइल किया हुआ है। अच्छा, उसका नंबर बता दीजिए, उसके साथ लगा देते हैं। जी लॉर्डशिप, this case along with WP 5460 of 2001 इसमें रिव्यू अलाउ है कि नहीं सर, क्लियर नहीं हो रहा। देख लीजिए, इसमें क्या नाम अलग अलग आ गए थे वो। ठीक है चलिए लिख के लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट केस। हम अपनी पिटीशन में भी रिव्यू लगा देते हैं।
क्या मैटर है? It's a matter pertaining to departmental inquiry wherein a major penalty where reduction by 3 stages. Who is appearing for the bank? बैंक के लिए पिछली बार भी सर एक थोड़ा आर्ग्यू हुआ था, इसमें एक इशू मैंने रेज किया था नेचुरल जस्टिस का, बहुत क्लियरली प्लीडिंग्स में नहीं था, बट इट वाज इट अपील नहीं, क्योंकि इसमें रिकॉर्ड बुलाना पड़ेगा ना डिपार्टमेंट इंक्वायरी। रिकॉर्ड तो ठीक है सर, उसमें एक बात और हमने रेज की थी वो रेगुलेशंस के बेसिस पे ही कि वो जब इंक्वायरी दोनों पक्ष में खत्म हो गई तो उस रेगुलेशन ने सीसीए को कॉपी करके बनाया, तो उसमें व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस कमिंग अगेंस्ट वो क्वेश्चन देना था, वो नहीं दिया गया। ओके, तो खाली उसी पॉइंट पे वी नीड नॉट गो इनटू ऑल दिस, अदरवाइज तो रिकॉर्ड तो बहुत ही बड़ी रिकॉर्ड तो बुलाना पड़ेगा। आपके पास है तो आप पेश कर दीजिए। तो हमारे पास वो पिछली 2 बार डेटों में आप देखेंगे, ऑर्डर शीट आप ही की नोटिंग है, हमारे पास बहुत क्लियर नहीं सर, हमारी पढ़ाई में नहीं आ रहा। अच्छा, उनके पास था रिकॉर्ड सर, वो अपीयर नहीं हो रहे हैं पिछले कुछ बारों से। कौन सी कंपनी है ये? ये सब सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक? हरीश कोहली साहब अपीयर होते थे शायद मिस्टर आशीष रोती भी अपीयर होते हैं क्या सेंट्रल बैंक के लिए? सेंट्रल बैंक के लिए कौन? आप अपीयर होते हैं सेंट्रल बैंक? ये अपीयर होते हैं ना मिस्टर खेडेकर भी? हाँ, खेडेकर, उनको बताइए, अभिनव को बुलवाइए। मैं एक बार फोन करके बुला लीजिए प्लीज। श्री मनोज शर्मा, learned senior advocate, assisted by Miss Verma for the petitioner, none for the respondents. Shri Abhinav Kherdikar, who usually appears for Central Bank of India, is requested to call for the instructions and the original record of the departmental inquiry list along with the records after 3 weeks. This comes after 3 weeks? 3 weeks. Oh. Serial number 7. Serial number 7. R.K. Srivastava, Rajesh Tiwari, Sukhdeep Jain. My lord, ये एडिशनल डॉक्यूमेंट टेकन ऑन रिकॉर्ड अब पिटीशन कहाँ है इसमें? आईए नंबर 40। पिटीशन स्कैन क्यों नहीं हुई? रुक जाइए एक मिनट, पिटीशन स्कैन क्यों नहीं हुई है? पूछिए ना उनसे, कहाँ है इकबाल, कहाँ है? पिटीशन क्यों नहीं है इनमें? किसी भी केस में पिटीशन दिखाई नहीं दे रही। It is seen that writ petition is not scanned. From the index, it appears that summary of the case, final written argument, then application for taking document on record, application for filing standing orders in compliance of the order dated 2/3/2023, additional return on behalf of the petitioner. ये कहाँ से petition क्यों नहीं स्कैन हुई? देखिएगा जरा। And then application for taking documents on record is available, but neither the writ petition nor the return is available. हाँ, कहाँ है petition? देखिए, इसके पहले वाली में भी नहीं थी। Office has listed cases without preparation. When petition is not scanned, then it is not possible to hear the arguments. Office registry to furnish explanation in writing as to who is responsible for the said lapse and take action against the delinquent under intimation to the court. List next week along with the explanation and updated file. चलिए। Serial number 8. These are two cross petitions, my lord. They are related to wage revision. Award they are against the award passed by Labour Court, my lord, in the matter of wage revision, my lord. Unfortunately, my lord, my files are missing. So I'm just making prayer if it can be. को कहाँ चैलेंज करेंगे? बिरला मंदिर में, बिरला जी हैं सर। अच्छा, बिरला जी हैं। पुजारियों के साथ। अच्छा, आप पुजारियों के साथ हैं? हाँ जी। अच्छा अच्छा। नायर साहब क्यों? पुजारी तो घुस भी नहीं सकते सर। सीनियर आ सकते हैं सर, सीनियर आ सकते हैं। सीनियर खुद बहुत बड़े पुजारी हैं। इसलिए तो कह रहा हूँ सर, सीनियर आ सकते हैं। इसमें भी शायद प्रॉब्लम अलॉट रिकॉर्ड्स आर नॉट स्कैन्ड।
देखो इसमें क्या स्कैनिंग है, देखो कोई रिकॉर्डिंग नहीं, तो क्यों नहीं है? We have a record. नहीं, इसमें scan नहीं। Records have not been scanned. Shri Ajay Mishra, learned senior advocate, assisted by Shri Kapil Tiwari, admits that his file is missing. He prays for some time to reconstruct his file with the help of Shri Anup Nair. I'll supply him, my lord. जूनियर होने का कुछ तो फायदा उठाओ इनसे. Sir, he has been very kind to us, like his father. Let records, complete records be scanned, updated, list thereafter. I'm obliged, grateful. नाइन को मैं छोड़ दिया है। सेंट्रल बैंक हाँ, इसमें सुनिएगा, आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। ये मैटर है, नोट कर लीजिएगा। सीरियल नंबर 6 में वीके फुस्कुले वर्सेस डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, सेंट्रल बैंक का मैटर है। I'll seek instruction in this matter. इसमें इंस्ट्रक्शंस ले लीजिए, रिकॉर्ड बुलवा लीजिए। ठीक है, प्लीज, थैंक यू। I'm obliged. 9 में क्या हो गया सुबह? अच्छा, हाँ, ठीक है। Your Lordship, I am praying that it may be kept tomorrow. Your Lordship, senior is. कल के लिए कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चलिए। एडजस्टमेंट लगा है। कब तक का एडजस्टमेंट है? आज तक का है सर। ठीक है, कल लेंगे इसको, कल रख दीजिए। ठीक, हाँ, चलिए। नंबर 12 Grant of revolver license has been cancelled, my lord. Other than service matters. None for the petitioner. Nobody had appeared for the petitioner. On 7/8/2023 also, it appears that petitioner has lost interest in the petition, in the matter. Petition is dismissed for want of prosecution. Chali. Serial number 30. In this case, my lord, petitioner has challenged the resolution of the Gram Panchayat Annexure P8, my lord, whereby he has been removed from the post as a Panchayat secretary. On the ground of irregularities committed by the petitioner. For the petitioner, nobody had appeared on 20/12/2023 also. Shri Vijay Kumar Shukla for the state. None for Board of Secondary Education, as nobody is appearing for the contesting parties, and nobody appeared for the contesting parties on the last date 20/12/23. Petition is dismissed for want of prosecution. Serial number 40. Lords, may I believe this matter will be taken up next week? Kal Tomorrow, my lord. Not tomorrow. Kal ai. Lords, actually, the issue in this petition is we are not getting hold of the petitioners, my lords. The one No instructions करिए, खत्म करिए कहानी को. No, my lord, we tried to establish connection with one of the clients, my lord. We've been informed that they have passed away. तो उसके बाद बचा क्या? नो इंस्ट्रक्शंस ही तो हो जाएगा. अब हमारे क्लाइंट से संपर्क साधने आप ऊपर तो जाएंगे नहीं. ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है टाइम मशीन में. My lord, कि है टाइम मशीन. पढ़ी आपने? नहीं पढ़ी? एचजी वेल्स की टाइम मशीन.
No, Milord, unfortunately I haven't. Because the issue is recovery amount in some of the petitioners, the recovery amount is greater than the retiral dues. So Milord, वो उनके आइडिया के जो मर गया उससे कैसे वसूलेंगे, वो विभाग का जिम्मेदारी है. आपके पास इंस्ट्रक्शंस हैं तो आइए बहस करिए कल, और इंस्ट्रक्शंस नहीं है तो फिर विश्राम करिए. tomorrow, Milord. जी. I am obliged. अरे एक मिनट रुक जाइए. हाँ तिवारी साहब बताइए, ये लालाराम श्रीवास्तव में बहस करेंगे आप क्या? यस मिलर. हाँ करिएगा. 13 नंबर रिपोर्ट करिए. This is a case of supersession, Milord. जी जी बताइएगा. The petitioner was working as assistant. The next promotion was for the post of section of. पक्षकार हैं आपके? 20 साल बाद इसलिए पूछ लिया, आप इतनी जोर शोर से बहस कर रहे हैं. ये अभी चलिएगा. हाँ. I have no information about. I did not have a talk with him for the maybe whatever time, Milord, but I do not have the information. I know the case, Milord. नहीं ठीक है, तो मेरिट पे चाहते हैं मेरिट पे कर देंगे. आपको क्या सेक्शन ऑफिसर नहीं बनाया? Milord. And junior to the petitioner, Milord, Neelam Raj Sharma, he is made respondent number 3. He was promoted, Milord. क्या क्राइटेरिया था प्रमोशन का? Milord, criteria was. This is P3 at page 15, Milord. जी, just a minute. Seniority cum sakshamta merit. P3. P3 at page 15, Milord. Just a minute. Triti Shreni. Serial number 7. Sahayak है assistant. Assistant से the promotion is on the post of Kaksha. Section अधिकारी, section officer. Milord. Varishta sakshamta, Milord. I submitted the representation also, but nothing happened, Milord. Respondents have. क्या हुआ? क्या ग्राउंड पे आपको सुपरसीड किया है? रिटर्न देखते हैं. Milord, return आ गई है. हाँ. In the return they say, Milord, they have filed the DPC details of all the persons and their classification, which is R1 at page 11 in the return, Milord. Yes, yes. लालाराम श्रीवास्तव जी कहाँ गए? Milord, the seniority list I have filed, Milord. Just a minute, just a minute. Milord. Page 12, Milord. Just a minute, just a minute. Page 12 of the return, Milord. हाँ देख लिया वो, वही देख रहा. इसमें लालाराम श्रीवास्तव, Milord, 2 गा are there, Milord. Yes, उनको एक ही गा है. हाँ, और उनके नीचे नीलम राज शर्मा. उनको एक गा है. Milord. बाकी सब खा हैं. Milord. बस इसी गा ने फर्क कर दिया आपका. Milord, but this was never communicated to me. हाँ कहाँ है वो आपकी प्लीडिंग? Milord, that they have said, I have said and they have said in the return, Milord. बताइएगा, रिटर्न में पढ़िएगा. Milord. कहाँ लिखा? They have admitted that the adverse remarks were never communicated to you. पढ़िएगा. At page 6 of the return, Milord, para 3.4, 3.4, Milord. Para 6 of the return. Para 6 of the return, the last paragraph, Milord, 3.4. 1 second. 3.4, yes. That in reply to para 5.3 of the petition, it is submitted that an employee is communicated ACR classification only when he is awarded the GHA category. The petitioner was awarded the higher category than GHA, that is GHA, and therefore there was no occasion for the answering respondent to communicate the judgment लाए हैं. Milord. दीजिएगा. This petition is filed by the petitioner being aggrieved of the order of supersession dated 27/5/2003 passed by the Secretary of Board of Secondary Education Bhopal, whereby petitioner was superseded in the matter of promotion to the post of section officer, and his junior respondent number 3 Neelam Raj Sharma was given promotion with effect from 1/1/2004. Next paragraph. The ground which has been raised by SHRI
Ujjain Tiwari is that uncommunicated adverse remark could not have acted upon to deny promotion, and this fact has been admitted by the respondents in their return in reply to para 3.4 Roman 4, wherein they have admitted that there is provision to communicate only gha within bracket D remarks, and there is no provision to communicate G within bracket C remarks, full stop. Shri Tiwari, in support, places reliance on the judgment of Supreme Court in UP Jal Nigam and others versus Prabhat Chandra Jain and others within bracket 1996 bracket close 2 SCC 363, wherein it is held that downgrading of entry is to be communicated. It is noted in para 3 that where there is an extreme variation in gradation, such as outstanding gradation in 1 year followed by satisfactory in the succeeding year, held may reflect an adverse element compulsorily communicable. Full stop. Thus, reading this judgment, it is submitted that adverse of any kind should have been communicated to the petitioner. Next para. Nobody is appearing for the respondent, but taking clue from the judgment, comma, and perusing the return filed by the respondents, it is evident that respondent or that the petitioner was given G category in the previous year, and that was followed by G in the succeeding year. Full stop. Petitioner had secured 2 Kha, that is B categories, 3 Kha and 2 G. Therefore, as far as law in regard to communication of law laid down in case of Prabhat Chandra Jain is concerned, that will be of no assistance to the petitioner. However, law laid down by Supreme Court in Devdutt versus Union of India and others 2008 ka 8 SCC to 725, which provides that all gradings, whether very good, good, average or poor, required to be communicated to employees working in government offices, statutory bodies, public sector undertakings or other state instrumentalities where constitutional obligations and principles of natural justice and fairness apply, non-communication of an entry and then acting upon it cannot be given a seal of approval. Therefore, impugned action of the respondents to supersede the petitioner is hereby set aside. However, at this distance of time, promotion of the private respondent is not disturbed, but it is directed that after communication of the remarks and calling for the representation of the petitioners, review DPC may be convened to consider the case of the petitioner within a period of 90 days from date of communication of the order, and if petitioner is found fit for promotion, then he be given promotion either against a supernumerary post or may be given financial benefit of such promotion. So only request that was maybe your lordship has maybe given, maybe अलग. Maybe कैसे अलग होगा? नहीं वो इसलिए Supreme Court ये कहता है that High Court cannot substitute itself for the DPC. तो maybe तो होगा. No. As far as monetary benefit is concerned, ठीक है. For that I'm saying. ठीक है. चलिए. वो देवदत्त दे देना, मैं एक कॉपी और दे देता हूँ. अरे देवदत्त अभी ले लीजिएगा, आप इसको हो जाएगा उसके बाद ले लीजिएगा. चलिए. My lord, in this case, my lord, the petitioner has challenged the impugned order, Annexure P8,
which is the proposal of the Gram Panchayat, whereby the service of the petitioner has been terminated, my lord. जी. Against that, the petitioner has preferred appeal before the SDO, and there are SDO has affirmed the order of the. Yes, madam. आप आ रहे हैं इसमें? सर मैं भी रेस्पोंडेंट नंबर 4 के लिए None for the petitioner. Financial irregularities has been committed by the petitioner. Therefore, matter be kept in the list. It will be taken up tomorrow. चला दीजिएगा नंबर. क्या मैटर है? My lord, sir, the promotions has been recalled, my lord. हैं? इसमें तो कुछ वही नहीं हुआ. None for the petitioner. There is no scanned document available in the file. Office to take action and list only those cases where scanned copy is available. Tell me next case. Figure number 17. Figure number 17. And Patelia. लॉर्डशिप आई एम प्रेइंग फॉर नेक्स्ट वीक. फाइल नहीं मिले लॉर्डशिप, इसको नेक्स्ट वीक. शुभ नाम बताइए. अभिषेक पांडे. Abhishek Pandey prays for taking up of this case next week. As his file is not available, on his request, list this case next week. Right. Figure number 18. Figure number 18. My lord, this is the matter of departmental inquiry. Yes. Wherein the final penalty of compulsory retirement is imposed on the petitioner. The impugned order is annexure A11, my lord. देख खुल जाए एक मिनट कंप्यूटर. Pardon? कंप्यूटर खुल जाए. जी. इसमें रिकॉर्ड भी बुलवाया गया था. रिकॉर्ड आ गया? Yes, sir. P? A11, my lord. A11. On page number 38 and 39. In fact, the initial order of penalty was for removal of from service, my lord. And in the mercy appeal by annexure A11, it was altered to compulsory retirement. पेंशन मिल जाएगी आपको. उससे ज्यादा क्या होगा? आप नशे की हालत में पाए गए. But my lord, in fact, he was not in the state of influence of intoxication, my lord. Achha. That has not come on record. The doctor has not opined, and in fact, the doctor has opined that there was a smell of alcohol, but he was not under the influence of alcohol. So what is the difference? My lord, in fact, Consumption of alcohol during the duty hours is permissible. चलिए आप ही के आर्गुमेंट को आगे बढ़ाते हैं. Yes. My lord, in चार्ज fact, क्या है? पहले चार्ज क्या है बताइएगा. charge is, my lord. Charge sheet is क्वार्टर on. गार्ड ड्यूटी पर. जी हाँ, पेज नंबर 82. 2/12/1995 को क्वार्टर गार्ड ड्यूटी पर नशे की हालत में आकर अनुशासनहीनता करना. तो डॉक्टर ने यह तो पाया कि आप शराब से स्मेल कर रहे थे. ठीक है. तो अब आपको यह प्रमाणित करना पड़ेगा कि आप ड्यूटी पे नहीं थे, घर में थे. दूसरा चार्ज है. दूसरा चार्ज, my lord, is मोहर्रे में इतने पर मना करने पर उच्च श्रृंखला राइफल लोड कर प्रधान आरक्षक 53 मेहताब सिंह के सीने पर तान कर धौंस दी और अनुशासनहीनता एवं कदाचरण करना. this is partly proved. हाँ. इसमें जो लोडिंग उसके बाद बचता क्या है? वो प्रूव नहीं हुई है. But जो second part of the charge is proved. But that is, my lord, that is connected with the first part. The first part was not proved at all. ठीक है, चलिए. आज बचता क्या है? थोड़ा सा समझा दो दीजिए. Pardon, man. कोई जजमेंट लाए हैं कंपल्सरी रिटायरमेंट किन आधारों My lord, in fact, there is a judgment of this honorable court, 2016 4 MPLJ. दीजिए क्या in which, my lord,
क्या लिखा है इसमें? That part of influence of alcohol, my lord, that has been discussed. जी, ठीक. और where is the order of punishment? Order of punishment, my lord. That is annexure A8 on page number 29. In fact, this was passed in the second round, my lord. Previous to this, one more order was passed in which the petitioner was removed. He preferred an appeal, but since the inquiry report was not supplied to him, hence the order was quashed and it was remanded back. And he was taken back in service, and later on again this order was passed. And in appeal, this order is altered to the extent that he is compulsory retired. ये जजमेंट कैसे लागू होगा? आपके खिलाफ तो दोनों चार्ज प्रमाणित पाए गए. In fact, for the second charge, what I'm submitting, चार्ज उन्होंने छाती पर राइफल तानने को that is connected with two aspects of that charge is, my lord. First is that he was. We are not sitting here as an appellate authority. That is You true. have to only point out two things: what was the material irregularity in conduct of the inquiry, and whether the principles of natural justice were followed or not. That is the scope of. वो तो हो गया क्योंकि first round में it was not followed, and that's why it was remanded back. बात क्या बचता है बताइएगा? My lord, for the first judgment लाएं और कोई judgment नहीं, और कोई तो नहीं है. ये first charge के लिए what I had already supplied to your lordship, that he was not under the influence because the doctor has not appointed such. जिसको लिखा देंगे चैम्बर में. Annexure P8 is the order of punishment. Yes. A8 is the appeal में कौन सा order है? अपील में भी कंफर्म हुआ है. अपील में कंफर्म हुआ है. That was the mercy appeal, annexure A11. A11 mercy appeal. Yes. From where the order of removal has been converted into that of compulsory retirement. ठीक है ना? Places reliance on the judgment of coordinate bench in Virendra Kumar Sharma versus State of MP and others. ठीक? चलिए. See page 29, annexure P8, where two charges have been proved in the 19. Lord, I may request that order dated 22/11 may be seen. Huh? Number 19. Well, I am praying short adjournment because one of the family member has been died in senior Vadwa sir. Okay. So, Shri, आपका शुभ नाम बोलिए. Gaurav Kesharwani. Gaurav Kesharwani submits that there is bereavement in family of arguing counsel Shri K.S. Vadwa. Taking this fact into consideration, case is adjourned list next week. My lord. Number 50. AGARWAL. Lordship, in this case, I'm praying for short adjournment, my lord. As yesterday, file couldn't be traced in the office, as it has. कल आएगा, कल रखिए. Lordship, will it be taken up in the next week? कल. Lordship, file has been missed. फाइल पढ़िएगा, देखिएगा, ढूंढिएगा. अंकित अग्रवाल जी से ले लीजिएगा. PDF भी देख. Serial number 21. AGARWAL. Lord, this was dismissed on want of prosecution on 13/9, my lord. 13/9 को dismiss हो चुका है ये. इसमें नहीं है. ठीक है ना, क्यों का नहीं रहा. ये बताइएगा. Lord, this case has not been in our cause list. हाँ ठीक है, चलिए आपकी कॉजेस में नहीं तो हम देख लेते हैं. कल देख लीजिए इसको, कल ले आइएगा इसको. कल देख लीजिए, आप ही का नाम आ रहा है, नोट कर लीजिए, कल आ जाइएगा. नेक्स्ट केस. Yes, my lord. Serial number
2. 20 फाइल नॉट रिसीव्ड, लिख दीजिएगा 22 में फाइल नॉट रिसीव्ड। Division number 23. Number 23. बताइए। मतलब जी It's a case मतलब where कहाँ है इनका ग्रांटी एड का जी सेटअप? सर जो स्कूल टेक ओवर किया गया, उसका ग्रांट इन एड का सेटअप कहाँ है? क्योंकि आपकी प्ली ये है कि जो ग्रांट इन एड की 4 सैंक्शन प्यून की पोस्टें थी, उनको सब्सिक्वेंट टू टेकिंग ओवर बाय द गवर्नमेंट they have not been accounted for and therefore you have not been paid the salary. Yes. So you will have to start from where is the setup of the earlier school sanctioning grant in aid. सर इसमें ये आप काइंडली देखेंगे अनेक्शर A2 देखेंगे सर। A2 81 जी जी ये दिस इज लेटर डेटेड 10 जुलाई 1981। yes इट रीड्स ऊपर सर इसका विषय अगर आप देखेंगे ये इशू हुआ है कार्यालय संभागीय शिक्षा अधीक्षक रीवा संभाग रीवा एंड इट इज एड्रेस टू द इंस्टीट्यूशन प्रबंधक और विषय है अजान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गगरी जिला रीवा के मान्य कर्मचारियों की सूची जी कोषालय भुगतान के लिए जी अनजान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गगरा जिला रीवा के लिए निम्न अनुसार स्टाफ मान्य किया जाता है जी नाउ द नेम्स आर देयर जी एंड द नेम्स ऑफ दीज 10 जी ये सर इसमें ये 4 लोग जो हैं 10 11 12 12 और 13 और 4 17 जी 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 ये अगले पेज में भी हैं A3 में ये गीता प्रसाद और ये जगदीश प्रसाद ये अगले पेज में है जी जी सीरियल नंबर 2 and 3 जी they were all in the government aided institution। एक सेकंड जी क्या जवाब दिया इन्होंने? सर इनका कहना यह है कि जो स्टाफिंग पैटर्न सैंक्शन हुआ था इंस्टीट्यूट के लिए जी उसमें प्यून की पोस्ट नहीं थी एक भी पोस्ट नहीं थी जी बट सब्सिक्वेंटली इन्होंने ये जो पिटिशनर नंबर 1 और 2 हैं इसमें जी उनको इन्होंने एब्जॉर्व कर लिया हाँ उनको एब्जॉर्व कर लिया और ये 3 और 4 इसमें छोड़ दिए जी नाउ द ओनली इशू A3 देखते हैं A3 में जी क्योंकि जी क्या कहना है इनके बारे में? ये अगर सर ये 6/4/23 का ऑर्डर है जो रिकॉर्ड पर नहीं है जिसमें ये बाकी 2 जो आउट ऑफ दीज 4 पिटिशन तो आपने बता दिया जी इन 2 के लिए क्या कहना है? 3 और 4 इन 2 के लिए इनका कहना यह है कि ये वही स्टैंड इनका है कि हमारे पास सैंक्शन पोस्ट नहीं है जी नाउ द ओनली इशू बिफोर लॉर्डशिप इज दैट जी whether the persons who were already working in the grant in aid जी and 95 की policy जी which my lord which governs this taking over of the institution जी it does not say that it is as per the staffing pattern जी it says that the existing staff कहाँ है वो 95 ये की सर policy? 95 की policy Annexure? my lords में kindly have a look on the rejoinder अच्छा रिजॉइंडर RJ1 जी जी इसका सर टाइप कॉपी भी लगा है इसमें अगर आप देखेंगे सर एब्जॉर्प्शन ये क्लॉज 3 जी
The upper division teachers, lecturers, and other staff will be absorbed on the post held by them. At the upper division teacher, lecturers and other staff will be absorbed in the on the posts held by them at the time of taking over of the institution under the government control provided. He is qualified for the post held by him. हाँ, ये qualification में कोई dispute नहीं है. And he is receiving the prescribed salary of the pay of the grade. A person who does not fulfill the conditions laid down in subsection 1 and itna above may be absorbed in lower grade post for which he is entitled on the strength of his qualification and pay. Person should fulfill all formalities, terms and conditions that need to be complied with, and in case of the first entry into government service, this verification and test. ये क्या क्वालिफिकेशन है आपके पक्षकारों की तीनों चार की? नहीं क्वालिफिकेशन सर, क्वालिफिकेशन इसमें जस्ट नृत्य इनफैक्ट मानो क्वालिफिकेशन का कोई डिस्प्यूट नहीं था. इन्होंने जो रिप्लाई फाइल किया है उसमें भी ये कहते हैं कि ये हमारे पास पीयून की सैंक्शन पोस्ट नहीं. एंड मानो इन एनी केस दे वर रिसीविंग सैलरी इन द ग्रांट इन एड. मानो उसका क्या प्रूफ है? ग्रांट इन एड का सर ये A2 है सर, A2 एंड A3. यस, बताइएगा अभी. जब ग्रांट इन एड में थे और एब्जॉर्प्शन की पॉलिसी कहती है कि जितने लोग काम कर रहे थे सबका एब्जॉर्प्शन होगा, तो इन दो का एब्जॉर्प्शन क्यों छोड़ दिया आपने? Lord, as per the we have specifically categorically defined in this in paragraph 10 of our reply. What is paragraph 10 of your reply? Additional reply, my lord. Additional reply. हाँ, additional reply. That is on page 6. Rejoinder के बाद जो है? Yes, my lord. Page 6. More than 4th of December, my lord. 20. It is to be no, my lord, may married. Page 6 ना? Yes, my lord. हाँ, पढ़िए Para 10, my lord. जी. It is to be noted that while considering the aspects of absorption of the petitioner-wide order dated 22 of Feb 2008 as annexure R1, the name of the petition number 1 and 2 was considered for the absorption in the light of the seniority and the availability of the post. However, though the order came into the knowledge of the petition number 3 and 4, that the same was filed in the year 2010, my lord. उससे होता है टेक्निकल प्ली से क्या होगा? इस टेक्निकल प्ली से क्या होगा? इशू ये है, पहले आपको बताना पड़ेगा. The post was not sanctioned. फिर आपने ये जो आपके इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल है ये कैसे कर रहे? क्या आप एफजी में कर रहे थे क्या? ये केस फाइल आपको अलॉटेड नहीं है क्या? कौन है आप? किसके एफजीदार हैं? सुप्रीम कोर्ट से आ रहे हैं दौड़ते हुए? कहाँ से आ रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से. तो वहीं क्यों नहीं वकालत करते हो? तो बहुत बढ़िया कोर्ट है. सॉरी मैम. पूरी सरकार एफजी पे चल रही है आपकी. बताइएगा, स्पेसिफिक रिप्लाई दीजिए आप. And policy of 1995 says that when all those who are working in an institution on the date of taking over will be absorbed subject to their qualification, and there were 4 sanctioned posts of the peon as is mentioned in the order, then how can you deny absorption to these 2 people? Petition number 3 and 4. This is the precise issue. If you know the answer, give the answer. Otherwise, I'll call your district education officer. He will give the answer. बताइएगा.
The only issue which is raised in this petition is that petitioner number 3 and 4, who were working in the private school, namely Anjan Higher Secondary School, Ganghara, Riva, which was taken over by the government, have not been absorbed on the ground that posts were not sanctioned in the sanctioned setup for the school. Next para. The only issue which is raised by Shri K.C. Gildial, learned senior advocate, is that as per the communication सर इसमें मैं थोड़ा सा इतना और बता दूं dated 26/95, एक मिनट में सुनते हैं आपको, अभी कोई फाइनल नहीं लिखा रहा हूँ जी, which is an order for absorption of staff of non-government and local body schools taken over under government control. The only condition for absorption is that the person should be qualified for the post held by him, and the clause pertaining to absorption reads as under, within inverted commas, the upper division teachers, lecturers and other staff will be absorbed on the posts held by them at the time of taking over of the institutions under government control. Full stop. It is submitted that since the school was taken over and the petitioner number 3 and 4 were also working in the grant in aid institution and were drawing their salary as such, respondents are not justified in denying the benefit of absorption contrary to Annexure A4 and A3, which are the orders of 1981 passed by the Divisional Inspector of Schools, Riva. Shri Lokesh Jain has no answer to this query. Full stop. Let personal affidavit of the Commissioner School Education be filed within 7 days in this behalf, that how dehorse the documents contained in Annexure A3 and A4. Persons who were already working in a grant in aid school against a sanctioned post of peon can be denied benefit of absorption contrary to the policy dated वो 26/5 क्या है वो ऊपर भी आई है इतना 1995 परमिट। हाँ आप एफिडेविट फाइल कर दीजिए इसमें। मैं सर इसमें ये बताना चाह रहा हूँ, this issue was earlier dealt with by the court. This 1995 policy was dealt in extenso by this court in a N.K. Rai's case, which was affirmed by the Supreme Court. N.K. Rai referred to an earlier decision that was in the case of Rajendra Kumar Thakur, where this aspect was dealt with as to whether the employees who are working, can they be left over at the time of absorption. Court said that cannot be done. लाई दीजिए। वो सिनॉप्सिस हमने एक दिया है ये अच्छा ये सिनॉप्सिस कहाँ दिया है सर? I'm sorry sir. If my lords may kindly refer to page 5 of this synopsis. Next para. Commissioner will also file reply to the Para 7 raised by Shri K.C. Gildial, placing reliance on the judgment of a division bench of this High Court in Rajendra Singh Thakur versus the State of Madhya Pradesh and others, 1987 Legal Eagle, within bracket MP 465, equivalent citation 1988 MP LJ 229, wherein in Para 7, Honorable Division Bench placing reliance on the judgment in case of Manoj Shrivastava, 1986 MPLJ 404, has held that when a person is duly qualified to hold a post and is already serving in the college on a post, on the date when the college is taken over by the state, then he has a statutory right for consideration for absorption by the screening committee in accordance with the statutory provisions of the relevant rules aforesaid.
Full stop. That being the position, it is difficult to deny the petitioners the benefit of our consistent holding in several cases. Full stop. Next para. In view of the said decision, followed by coordinate bench of this court in case of N.K. Rai versus State of MP 2005 का 5 MPST 305, wherein SLP filed by the state government was dismissed, while order dated October 10, 2012, comma, let commissioner file his personal affidavit that why such benefit has been denied to the petitioner number 3 and 4. If affidavit be filed on or before next date, list in the week commencing 29 जनवरी 2024. वापस कर दीजिएगा सिनॉप्सिस. अगली डेट पर भी हम नहीं बोल पाएंगे कि सिनॉप्सिस दे दी, इसीलिए तो वापस कर दिया हमने आपको. डेट पर एक रिक्वेस्ट थी सर, 3 नंबर में हाजिर. 3 नंबर में क्या हो गया? डिस्पोज ऑफ हो गया, वो हम सामने दूसरी जगह बैठे थे. दूसरी जगह ही आप रहते हैं अक्सर? नहीं सर, मैं वो जूनियर ने बताया, वो दूसरी जगह लगा, वही बैठा था, अभी पता लगा. अच्छा चलिए, डाल दीजिएगा, नाम डाल दीजिएगा लेटर ऑन करके. थैंक यू सर. जी अजय जी, नंबर 3. जी. लेटर ऑन Contact number करके allowed. appears and place for marking of his progress. चलिए नेक्स्ट केस. 64 NS Lutra State. None for the petitioner. By way of indulgence, let matter remain in the list to be taken up tomorrow. चलिए. इसको एडजस्टमेंट में कल के लिए छोड़ दीजिए. Serial number 26 State. None for the petitioner. By way of indulgence, matter be taken up tomorrow. Serial number 27 Within इसमें आपका जवाब आया नहीं आया? सर जवाब नहीं देखिएगा जवाब आया कि नहीं आया, इसमें स्कैन तो नहीं.
जवाब है पिटीशन है क्या है? None for the petitioner. Nobody had appeared for the petitioner on 22/11/2023 also. And case was adjourned in the interest of justice by granting last opportunity to the petitioners to address arguments. As nobody is appearing for the petitioners, it appears that they have lost interest in pursuing the remedy. Petition is dismissed for want of prosecution. Serial number 28. इसमें भी एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट कर लीजिए. Serial number 29. Serial number 29. Timothy June Chaudhary. Serial number 29. हमारी सोनाली श्रीवास्तव. हाँ, स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट. सर रिपोर्ट फाइल में पैराग्राफ 5 में सिर्फ कंटेंशंस दिए हैं. नहीं लिखिएगा. नन फॉर रिकॉर्ड बुला लेना. report of the screening committee is must to decide the merits of the case. Let report of the screening committee be called for within 2 weeks. List immediately thereafter. None for the petitioner करके लिखिएगा. चलिए next case. Serial number 30. तीसरा श्रीवास्तव स्टेट. None for the petitioner. This petition is filed. Nobody had appeared for the petitioner on the last date. That is 22/11/2023 also. When by way of last indulgence case was adjourned. Petition is filed being aggrieved of order of minor penalty inflicted on the petitioner who was working as constable in police line Riva, whereby his one increment without cumulative effect was withheld. Appeal filed against the said order 2 was rejected, hence this petition. Next para. Petitioner's contention is that
that petitioner was given a charge sheet on 26/5/99, making 4 allegations against him. In the inquiry, one Shri Abhiram Singh Tiwari was appointed as inquiry officer. Full stop. After inquiring the matter, inquiry officer found charges number 1, 2, and 4 to be proved, but allegation number 3 could not be proved against the applicant because no evidence was laid. Thereafter, after considering the reply of the petitioner and following the principles of natural justice, impugned order of punishment has been passed, which has been affirmed in appeal. I do not find any illegality in the process adopted by the disciplinary authority and upheld by the appellate authority. Calling for interference, petition fails and is dismissed. Khalid. Petition number 31, Srivastava, A. Paragraph 6 of my reply. Madams. The Paragraph 6 of the reply. The similar matters was already dismissed by the SAT matters. We have filed the copy. I have after, a copy. It's annexure R1 matters. R1 तो मैं एक बार वो 2 पेज का तो आपका रिटर्न है. R1 कहाँ से लगा दिया आपने? अदर्स में है क्या? नहीं सर, ये मुन्ना लाल वाला है जी. R1 कहाँ है आपका? सर ये रिटर्न में एक तमीजुल हुसैन का रिटर्न अडॉप्ट किया है, सिमिलर मैटर था. उसकी कॉपी कहाँ है? अब वो R1 की तरह लगाई है सर उसी रिटर्न में. R1 तो दिखाई नहीं दे रहा, तभी तो आपसे पूछ रहे हैं वकील साहब. सर मैं आपके पास है क्या R1? हाँ मेरे पास है. इसमें भी है, कंप्यूटर पे भी है. मैं वो कुछ देख लेता. नहीं सर इसमें वो स्कैन में नहीं आया सर, वो रिटर्न के एनेक्चर स्कैन में. रिटर्न दिखाइए. हाँ मैं ठीक है, मैं निकाल देता हूँ. Petitioner's grievances that petitioner was subjected to the order of compulsory retirement in terms of the order dated 27/12/2001 passed compulsory retirement or subjected to termination in terms of the order dated 27/12/2001 passed by respondent number 2. Full stop. Petitioner who was working as a daily wage mate. टर्मिनेशन भी नहीं है. हाँ? वो ऑर्डर में लिखा है सर मध्य प्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग के संदर्भित आदेश के परिपालन में 30 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के उपरांत आपको दिनांक 31/12/2001 को सेवानिवृत्त किया जाता है। उन्होंने पिटीशन में टर्मिनेशन वर्ड गलत यूज किया, वो सेवानिवृत्त किया हमने बस। सेवानिवृत्ति लिखिएगा जी। ये A1 की तरह सर 27/12/2001 का आदेश जो इम्प्यून ऑर्डर है। उनका बोलना था 62 तक कंटिन्यू करना चाहिए बीइंग अ रेगुलर एम्प्लॉय। फुल स्टॉप। क्या लिखा? सॉरी, पूरा काट दीजिए सर। ये पिटिशनर्स कंटेंशन इज that while order dated 27/12/2001, petitioner was retired with effect from 31/12/2001 on completion of 30 years of service, whereas he was entitled to continue in service up to the age of 62 years like a regular government servant. Full stop. It has come on record that petitioner was working as a laborer and was never regular, and his services were never regularized. Full stop. Therefore, orders of the State Administrative Tribunal passed in OA 5/2002, dated 6/1/2002 in Shyamlal Kushwaha versus State of MP will be applicable to the facts and circumstances of the present case, wherein it is noted that persons who have not attained status of a permanent employee are not entitled to invoke the jurisdiction of the State Administrative Tribunal, and petition was dismissed with liberty to the applicant to approach the concerned labor forum. Next paragraph. After hearing learned counsel for the respondent and going through the record, it is evident that Annexure A3 is a Finance Department circular enhancing the age of superannuation of government servants from 58 to 60 and 60 to 62 after amending Fundamental Rule 56. Full stop. The Finance Department circular talks of the employees who were working in regular capacity in the work charge and contingency pay establishment and not to the daily wages like the petitioner who were never made part of इनको भी तो नियमित किया गया है, इनको भी तो नियमित किया गया। एक सेकंड मत लिखिए कुछ भी, इसमें इतना लिखने के इसमें लिखिए let detailed reply be filed to the petition in the light of Annexure A3 and the order of regularization Annexure A2. Shri Jain prays for and is granted 4 weeks time to file reply. वैसे पैराग्राफ 5 में हमने सब उल्टा सीधा लिखा हुआ है आपको। A3 और A2 को तो कंसीडर करिए, आपने नियमित किया उसको 97 में। मैं कर दूंगा, बाकी पे स्केल के लिए नियमित किया बस वो लिखा हुआ है पे स्केल के लिए नियमितीकरण ऐसा कहीं प्रावधान होता है? पे स्केल मिनिमम स्केल दिया वो जो रावत का आज अभी जो इंटरप्रेट रामनरेश रावत में किया। मैं ठीक है मैं फाइल हाँ लीजिए ना, रिक्वेस्ट केस लीजिए। सीरियल नंबर 90। My lord, may I speak, my lord, sentence? Yes, my lord. I had item number 22 in the final hearings list. I've been informed that it has been kept for tomorrow, my lord. Now, I had to make a request in that case. My lord. I have filed an application seeking amendment in that petition, my lord. I was waiting for my turn in another court. So कल आएगा, कल बताइएगा। I am going out today itself. कल जूनियर को भेज दीजिएगा, वो बताएगा। ठीक है, आज तो फाइल ही नहीं आई थी। चलिए नेक्स्ट केस। Serial number 90. I'm requesting 2 weeks time to file the additional return. 90. Shri K.N. Petia, learned counsel for the petitioner. Shri Saurabh Soni, learned panel lawyer for the state, prays for and is granted 2 weeks time to file additional return list after 2 weeks.
Might some date may be given. अच्छा डेट दे दीजिए लिस्ट ऑन 31 जनवरी 2024 serial number 92. Serial number 92. Amit Khatri 92.1B. Aditya Veer Singh. Here belongs to the case whereby the petitioner has been dismissed, exercising the power under Article 3112B of the Constitution of India, dispensing with the regular departmental inquiry. क्या लॉ है इस बारे में? Lord, the provision here, Lords, says that pleadings पूरी है, इसको finally सुनेंगे. return has been filed. Pleadings are complete. Case is to be heard finally. Petition is admitted for final hearing. List for final hearing in Part B of the cause list in the week commencing 26 फरवरी 2024. Connected matters. There are two connected matters. तो साथ दोनों में. Serial number 95. Adit Khandekar. My lord, Mr. Anurag Lakhotia is connected through video conferencing. I'm praying that he may be permitted. जी. I'm appearing through virtual conference. क्या मैटर है? My lord, the issue involved is that whether a medical representative is a workman or not. Yes. No, it's been already in 95.2 Vijay Singh matter. There was another matter of the same party. Notice होगा इसमें respond. My lord, notices have been issued. Interim order is there in all the cases. The difficulty is that we are paying suspension allowance to all of them. That is the urgency why we mentioned the matter. And it's सुनाइए कब सुनाएंगे इसको finally? Would this be 6th of चलिए आपका शुभ नाम बताइए. Anurag Lakhotia. Anurag Lakhotia, Lord. Anurag Lakhotia from From Delhi, for Lord. the petitioners Yes, Lord, for the petition. through video conferencing assisted by Shri Aditya Khandekar. कब एड्रेस करेंगे कोर्ट को बताइए? 6th of February, Lordship, it's suitable to Lordship. Is not audible. My lord, any date, my lord, as comfortable to your lordship. हमें तो आज भी कंफर्टेबल है. टाइम बता दीजिए. 10 मिनट में खत्म कर देंगे तभी सुन My लेते. lord, if it could be taken after a week, my lord, he'll come physically and address the court. I can argue right now, Lordship, if it's Some date be given for his physical appearance. On his request, list this case on 10 जनवरी 2024. Well, could it be top of the list, my lord? आ जाएगा, मेंशन कर दीजिएगा. highly available, Lordship. My lord, interim relief may be continued. And IR if I need to continue. Serial number 100. May it please, my lord. By way of the instant petition, my lord, we are calling in question the disciplinary proceeding which are sought to be hoisted on me. I am assistant professor in the National Institute of Design, one of the premier institutions, my lord, that is opened up in Bhopal. Now, I had put in a complaint way back in 2020 against my professor for sexual harassment. Not only me, there are other co-workers and girl students who have put up such complaints against him. Earlier on, when he was posted in NID Gandhinagar and NID Ahmedabad, at both the places there have been complaints against his sexual harassment. Somehow or the other, this man, being a senior person, evades that. And in connivance with the management is more concerned with the image of the institution rather than protecting the dignity of ladies who are working there. So from 6/8/2020 is my sexual harassment complaint. Now this is, ICC was doing something in the meanwhile. They did not supply me the report. After 4 months of their submission of report, it was only on 3/2/2021 that I get my, I was in the meanwhile requesting that my interaction with this gentleman be reduced, because he not only passes on lewd remarks, tries to brush past me, has on multiple occasions in the wee hours in the night in the campus when my house is there, has forced himself to come in my house. All those allegations are against this man. Now, surprisingly, it seems that they have got no inkling of the authority of law as to how the Sexual Harassment Act would act. Once a complaint has been put in, ICC is in fact, in terms of the CCS, CCA rules now,
has to act as an inquiring authority. Now, there have been as many as 4 different committees and 4 different reports on the same subject. And without saying anything, my lord, we just have a look at the charge sheet itself. The organization does not know how to frame even a charge sheet. That is the problem with most of the organizations. आप देखेंगे साहब उसमें list of witness नहीं, list of document नहीं, proof कैसे करेंगे? Issue notice to the respondents on payment of fee by registered AD post within 7 days, returnable 4 weeks. I'm seeking a stay of further proceedings. नहीं. Departmental inquiry में पहले आप आने दीजिए उनको, फिर सुनते हैं उनको. In the meanwhile, they may not proceed further in process. आप अपीयर होके मांगिएगा ना list of document और list of witness. हमने सर चिट्ठी लिखी थी, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे ही है हमारा. इसी कहाँ लिखा है? कहाँ चिट्ठी कहाँ बताइए, उनका जवाब बताइए. एनेक्शर रिकॉर्ड पे नहीं लगाई सर, लेकिन उनसे टाइम एक्सटेंशन मांगा था डॉक्यूमेंट. पिटीशन को विड्रॉ कर लीजिए, रिकॉर्ड पे लगा दीजिए सारे कागज. कल को दिक्कत में आएंगे आप, because without documents being available on record, I will not consider them. ठीक सर. बट आप इसमें सर यही देखें ना सर, चार्जशीट के जो इंग्रेडिएंट दिया है, in the meanwhile Shri Manoj Sharma may file all the documents as are in his possession as orally submitted by him, that he had sought copies of the documents and the list of witnesses, but they have not been supplied to him. Select copy of the letter demanding these documents and the refusal given by the respondents be brought on record on or before next date. चलिए. सर इसमें शॉर्ट डेट दे दे, फिर 2 वीक्स का दे दे. तो नोटिस तो भी जाने होने. नोटिस आप हमदस्त करा देंगे सर. In addition, petitioner is permitted to serve the respondents हमदस्त. चलिए. ठीक है. Normal discharge. सर रिटर्नेबल सर 2 वीक्स की डेट कोई दे दें. हाँ तो आ जाएगा. List in the week commencing. If हमदस्त notices are served and affidavit is filed in regard to Hamdast service on all the respondents, list this case on 30 January 2024. Okay. Number 89. VIVEK party. None for the petitioner. Case is adjourned. List next week. Kali. Number 90. Number 91. One thing. None for the petitioner. List this case next week. Number 93. Number 93, Amit Kumar Singh. None for the petitioner. Let reply वगैरह आ गया आपका? इसमें replies. Readings are complete. Case is adjourned. List after 6 weeks. Number 94. Replies there. Readings are complete. None for the petitioner. Readings are complete. List this case after 6 weeks. Number 96. Readings, replies there, my lord. In fact, vacating stay application is also. Number 96. None for the petitioner. Shri Golani, learned counsel for the state. Government advocate. No, panel. Panel lawyer. Yes. Panel lawyer for the state. Since nobody is appearing and there is an application seeking vacation of stay, list this case next week. Top of the list. Direct. Number 97, Sri Bhavendra Pandey. Replies there. Readings are complete. List this case after 6 weeks. Number 98. Replies there, my lord. Application for vacation. Readings are complete. Stay vacating application is available as nobody is appearing for the petitioner. List next week to consider and decide stay vacating application. Serial number 99. Party in English potential.
None. जवाब आ गया क्या? Petition is admitted for final hearing. List in final hearing in part B of the cause list in the week commencing 12 फरवरी 2024. Serial number 101, Rakesh Pandey. None for the petitioner. जवाब आ गया इसमें? अच्छा आप हैं नहीं इसमें? Yes. None for the respondents. Case is adjourned. Reply if any, my lord. आते ही. Serial number 102. None for the petitioner. Reply आ गया स्टेट का इसमें? 102 में reply आ गया नहीं है? Just checking, my lord. Allotted not to me, my lord. कहाँ चले गए आपके एफजीदार? My lord, we'll just call it. Pleadings are complete. Petition is admitted for final hearing. List for final hearing in part B of the cause list as per its turn and seniority. Great. Serial number 103. Reply is there. None for the petitioner. Pleadings are complete. Petition is admitted for final hearing. List for final hearing in part B of the cause list as per its turn and seniority. Serial number 104. Reply is there. Siddharth Patel. None for the petitioner. Reply. Pleadings are complete. Petition is admitted for final hearing. List for final hearing in part B of the cause list as per its turn and seniority. Serial number 105. Suman Singh. Reply is fine. 105 men, none for the petitioner. Pleadings are complete. List for final hearing. No. There is an IA pending for vacating stay. List next week. Serial number 106. Reply is fine. So that's Readings are complete. इनका नाम डाल दीजिएगा. ये क्या मैटर है ये? With regard to grant of selection of pay. जवाब आ गया? reply is there. Reply is there. आप क्या है P7 क्या है बताइए? Grade of pay that grade note that has been denied to him, stating that he has not cleared refresher course. हाँ. क्या law है इस बारे में? What is the law in this regard? क्या UGC की guidelines से थोड़ा सा बताएंगे? We have annexed that UGC guideline. That is annexure P8. P8. पढ़िएगा क्या लिखा उसमें? 32. हाँ? 32 page 32. हाँ नहीं पढ़ना कहाँ है? But that is page number 36. जी क्या लिखा उसमें? 2.05. It says, to consider extending the date of participation in orientation refresher course in respect of teachers, assistant registrar, assistant university librarian, college librarian, deputy librarian, assistant director of physical education, college director of physical education, up to 31/12/2018 for the purpose of career advance. आपने क्या हुआ? They have denied us. They are saying that I have not cleared that refresher course in time. जी आपने कब किया है उसको? UGC का रिप्लाई आ गया क्या इसमें? UGC को पार्टी बनाया आपने? नहीं बनाया? UGC is not a party. UGC तो जरूरी पार्टी है वकील साहब. देखिएगा UGC is a necessary party because interpretation of the order minutes of the 535th meeting of the University Grants Commission held on 27 September 2018, whereby White Para 2.05
time limit to complete refresher course for career advancement was extended up to 31/12/2018 is the bone of contention in the present matter. Full stop. Let UGC be impleaded as a party during the course of the day. Notices be issued to them on payment of PF per registered AD post within 7 days, returnable 6 weeks. They may be called to file their reply and just immediately thereafter. A break. बोलिए पटेल साहब. 89, my lord. I tender apology, my lord. I paid 2 week time, my lord, to file the rejoinder, my lord. I am waiting. 89 में क्या कर दिया? Adjourn. अज्जन हुआ ना, ठीक है. अज्जन में क्या करेंगे? What's my presence will be marked, my lord. हाँ, लेटर ऑर्डर पे डाल दीजिए. We agree.